रिलैक्स कर लें. Relax each and every part of your body. अपने आप को पूरी तरह शांत कर ले. Just be with your easy, simple, natural, tender, tranquil breath. अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं. हम सब भगवान हैं. Just be with your natural flowing breath. Namaste, Patri ji. नमस्कार. नमस्ते सर. Continue meditation. Just feel the normal, natural flowing breath inside you. The simple, tender, peaceful, tranquil breath inside you. Just be with your normal, natural flowing breath. हम सब भगवान हैं. कोई भी आंखें न खोलें. सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती. लगातार ध्यान. Be with your breath, my dear friends. Out 10 minutes. Keep the music on. Don't disturb the music. A little more music. कोई भी आंखें न खोले. और 10 मिनट. लगातार ध्यान. Beautiful meditation. लगातार meditation. Be with your breath.
Normal, natural breath. Okay, Baba. Kindly keep your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and open your eyes. चलिए नीलम जी आगे बढ़िए थोड़ा. हाँ सर, सबसे पहले आपको प्रणाम. प्रणाम बाबा. And today, sir, Odisha Masters, along with Awaken Youths, have organized the third digital Dhyaan Yagna, sir. सर्वप्रथम आपको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को. उसके बाद मेरे जितने भी आत्म बंधु हैं उनको मेरा प्रणाम. सर, कबीर का एक दोहा याद आया है जो जरूर बोलना चाहूंगी सर. गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दिया मिलाए. गोविंद here doesn't means Krishna consciousness. It is the Atma within us. He made us realize that God is within us. वो हमारे अंदर है. हम बाहर किसकी पूजा कर रहे हैं? ध्यान के द्वारा हम स्वयं को पहचाने, हम अपने आप को पहचाने. He is a living Buddha who is teaching the art of meditation to the whole world. He is the founder of Pyramid Spiritual Society movement. Sir was born in the year 1947 and he got enlightenment in the year 1979. His guru was Sadanand Yogi. सर, हम सबसे एक बात कहते हैं कि हम सब एक दूसरे के मित्र हैं. यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, हम सब एक हैं. ऐसे तो मुझे सर की सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत प्रिय है, दैट इज सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग. आप सरल सोचिए और सरल रहिए. सर ने 30 साल पहले ध्यान का एक बीज बोया था जो आज एक बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका है. एंड टुडे वी मिलियंस ऑफ पिरामिड मास्टर्स आर स्प्रेडिंग हिज विजन ऑफ पिरामिड जगत, ध्यान जगत एंड शाकाहार जगत. Sir, it is his pledge to convert each and every person in this world vegetarian. He is very simple. He is a friend, mentor, and guide to all the PSSM masters. And we all pyramid master follow the 18 principles, 18 guided principles of PSSM, and the 9 Dhyan Ratnas. We'll just like to brief the 9 Dhyan Ratnas. That is, आत्मा ही पर ब्रह्म है, मतलब अहम ब्रह्मस्मि. शरीर ही देवालय है. This body is the temple. जीव ही ईश्वर है. जो जीव हमारे अंदर जो आत्मा है वही भगवान है. श्वास ही गुरु है. समय ही साधना है. सहन ही प्रगति है. पेशेंस इज प्रोग्रेशन. अनुभव ही ज्ञान है. ज्ञान ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष है. सर के बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कम है, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सर को आमंत्रित करूंगी कि वो हमें कुछ बताएं. नहीं बाबा, नहीं. आप कैसे आए ध्यान में? आप कैसे आए, क्यों आए, पहले वो तो बताइए हम सब लोगों को. सर, लाइफ में सब कुछ था सर, लेकिन कुछ कमी लग रहा था सर कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ. सो सर, आई एंटर्ड एंड आई लव्ड डूइंग मेडिटेशन. सर, आपने गाइड किया एंड थ्रू योर गाइडेंस,
through other masters of Odisha's guidance, sir, I came into meditation. When was it? Sir, I came into meditation in 2012, sir, when I went to Egypt with you to meditate in that Giza pyramid, sir. That was the turning point of my life, sir. And sir, I'll tell you, you have turned my life 360 degrees. The person I was and the person who I'm sitting here is a 360-degree turn, sir. A person who could not speak in front of everyone, could not express herself, is sitting right in front of you, sir, now. So this Dhyan has changed me completely, sir. And sir, what to say, it is really a magical tool which you have handed in to me. And now I'm teaching. और अब मैं लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, सर. मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं. एक बच्चा आता है, सर. I will send you the video of that छोटा बच्चा, सर. His name is Rishi. He is only 8 years or 9 years, sir. लेकिन every day, sir, he will come to me and he is going to meditate. वो मेरे साथ ध्यान करेगा, सर. Sorry. वो मेरे साथ ध्यान करेगा, सर. पूर्णिमा ध्यान के दिन मेरे साथ में बोलेगा, आंटी चलिए अपने पिरामिड में 1 घंटा और बैठते हैं. प्यारा बच्चा है, सर. आई थिंक, मेरे को लगता है वो बच्चा जरूर कोई योगी रहा होगा, सर, क्योंकि वो डेली, सर, वो आएगा मेरे पास. कुछ हो, बारिश हो, कुछ हो, लेकिन मेरे पास जरूर आएगा, सर, वो बच्चा. कितने साल का बच्चा है? सर, वो 9 साल का है. क्लास 3 में पढ़ता है, सर, वो बच्चा. तो वो जगत गुरु बनेगा बाबा आपके हाथों में रहकर. हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है, सर, क्योंकि उसका जो डेडिकेशन है, सर, कोई आए ना आए, सर, 7:30 बजे के 10 मिनट पहले ही सर आ जाएगा, पिरामिड में बैठा रहेगा. और चाहे कभी कभी नींद भी आ जाए, सर, उस बच्चे को, लेकिन वो रहेगा, सर. वो 9 बजे तक मेरे साथ रहेगा. और पूर्णिमा ध्यान के दिन हम रात को छत्ता पे बैठ के सब ध्यान करते हैं, सर. तो कोई आए ना आए, वो ऋषि पक्का आएगा, सर. मुझे पूछ रहा था, आपने मेरे बारे में सर को बताया क्या? मैंने अभी तक नहीं बताया सर को. देखिए, आज अपने से ऐसा हुआ कि मैं आपके सामने उस बच्चे के बारे में बता रही हूँ. क्या नाम है उस बच्चा का? उसका ऋषि थटोई, सर. अच्छा. नाम है ऋषि थटोई. सर, ही इज अ सन ऑफ अ डॉक्टर, सर. हिज फादर इज अ डॉक्टर. और वो मेरे पास आकर बैठता है, सर. 18 गाइडेड प्रिंसिपल मेरे से सुनता है. वो जब आया कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो उसे लगा आंटी ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज हिज फादर हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, सर. हम बोले, बेटा ध्यान करने से तू देखना, तुझे कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसका एक वीडियो भी बनाई थी, सर, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं ध्यान करने लगा, तब से मैं पढ़ाई में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग गया और मैं खाना कम खाने लग गया, आंटी. और मैं ज्यादा मतलब एनर्जेटिक हो गया हूँ. मैं उससे पूछी, तू 2 महीना से आ रहा है मेरे पास ध्यान करने के लिए, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है मुन्ना? तो बोला, आंटी मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, कोई दवा लेने की मुझे जरूरत पड़ नहीं रही है और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और खाता भी कम हूँ अब मैं. अरे वाह. आपके घर में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, चेंजेस? घर परिवार? सर, घर परिवार में सब, everyone is listening to me now, sir. सब मेरी बात सुनते हैं, सर. Whatever I say, everyone listens to me. Even my husband, my mother-in-law, my father-in-law. My mother-in-law, she makes, वो हिंदी में, सर, वो आती है, सर, पिरामिड में ध्यान करने के लिए 1 घंटा. हालांकि उनका इतना मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो मेरे बोलने से आती है. वो 7:30 बजे आती हैं. वो आधे में, पता नहीं वो आँख खोल लेती है, नहीं मुझे पता नहीं, कभी कभी आधे में चली जाती है, लेकिन सर आती रेगुलरली है. वो डेली आती हैं, सर. मेरे दोनों बच्चे ध्यान करने लग गए, सर. राघव एंड चेरी, वो ध्यान करते हैं, सर. सर, आई थिंक माय हस्बैंड will also come into it and my father-in-law will also enter this. That is very great. That is very great, बाबा. एक आ गए घर परिवार में, पूरे लोग आ जाएंगे. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे. सर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सर, ये जो पिरामिड आपने मुझे दे दिया, सर. इट इज अ ब्लेसिंग टू मी. और
लॉकडाउन के टाइम तो it is really proved a blessing to me, sir. A real blessing which has come my way, sir. I should thank the universe for giving me such a beautiful pyramid, sir. In the morning, sir, I'm there in the pyramid. 4:30 I'm there. 2-3 लोग आते हैं सर मेरे साथ में ध्यान करने के लिए. Till 7 we are there in the pyramid meditating. Then 7:30 daily there is a class, sir. 7:30 to 8:30 regularly we do a meditation, sir. And पूर्णिमा ध्यान होता है सर, तो रात को हम 2-3 घंटा बैठते हैं सर ध्यान करने के लिए. ठीक है, थोड़ा मदर इंडिया के बारे में बात करिए, उनके परिवार, घर परिवार. Mother India is a beautiful soul, sir. She has inspired me a lot. रोहिणी जो है, she is very sweet, sir. And भैया अरुण भैया is also very sweet. उन्होंने she is a inspiration to Odisha masters, sir. क्योंकि सारे दिन she is there in the pyramid teaching people meditation. And she is also a mentor, guide, everything to me, sir. क्योंकि उन्होंने सब जगह मुझे हेल्प किया है सर. Whenever I asked for it, and she is always standing there, sir. मदर इंडिया को हम प्रणाम करते हैं बाबा. हैदराबाद से पूरा PSSM के तरफ से हम मदर इंडिया को प्रणाम करते हैं, पूरे ओडिशा मास्टर्स को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं. You please translate my English into Hindi. Okay, I would like that way. Okay, sir. Sentence by sentence I will speak, right? Okay, sir. Remember that Corona is the best thing that to happen to everybody. आप ये सोचिए कि करुणा सबसे बड़ी चीज है जो एक किसी के साथ में होगा. इतने दिन हम बाहर थे सड़कों के ऊपर, अब now we are at home happily. I am in Hyderabad, my home, and you are in your homes. Nothing can be greater than this. We are homebound now. Our home has become ashram. Our home has become our retreat, our resort. Yes. हम इतने दिन घर के बाहर थे, अभी हमें चांस मिला है घर के अंदर रहने के लिए. ये घर हमारा आश्रम है और यही हमारा रिट्रीट है. Otherwise, we used to go to other retreats, to go somewhere else, to have peace of mind, to do meditation. But now our home is our place of peace of mind. Our home is our meditation center. We are doing meditation at home, right? Happily. पहले हम दूसरी जगह जाते थे ध्यान के लिए, पीस के लिए, लेकिन अब हमारा घर ही है जहां पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं and we can be in peace. We don't have to go to any other ashram, any other place, any other Himalayas, or any other Puri Jagannath. Our house is our ashram, our body is our temple, and we are gods. And our breath is our guru. Guru is nowhere else. These are the equations. Our house is our ashram, our body is our temple, we are the gods, and our breath is the guru. When you understand these 4 equations, you are happily at home. Your home has become ashram, my dear friends. Yes. हमको हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है. हमारा घर ही हमारा आश्रम है. श्वास ही हमारे साथ है. हमको कोई कहीं और जगह जाने, कोई रिट्रीट जाने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ बैठ के ही आराम से ध्यान कर सकते हैं. कोई दाढ़ी वाले के पीछे मत पड़िए आप. Be with your breath. No other person can be your guru. Your breath is your guru. That is a fundamental theory of pyramid spiritual society movement. The breath is our guru. So, you said, Guru bina Govind nahi. So, where is the guru? So, you don't have to search for a guru. Your guru is there with you in the body as the breath. So, you close your eyes, hands into hands, and observe the breath. Go to the breath. That is going to the guru. Then you will not understand, you will understand that you are the Govind. You are the Govind, residing in the body. Everybody is Govind. Every prani is Govind. But to know that, you must go to your guru. That is the breath. Yes. आप दाढ़ी वाला को मत अपना गुरु बनाइए. आपका गुरु आपके साथ है.
आपकी आपकी सांस ही आपकी गुरु है, और गोविंदा जो है, जो आत्मा है, आप अपनी सांसों के द्वारा ही उसको पा सकते हैं। आपको किसी बाहर गुरु की जरूरत नहीं है। मैं एक बार खाली इंटरप्ट सर को करना चाहूंगी कि सर, आपने बोला कि गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन वी वांट अ मेंटर एंड अ गाइड सर टू गाइड अस, कि वो सांस हमको आत्मा, तो वो बताने वाला भी तो कोई चाहिए सर। अरे बाबा, उसको मेंटर मत कहिए, उसको और कुछ भी मत कहिए, इन्फॉर्मर बोलो, इन्फॉर्मर। हाँ, चलो वो तो आपको चाहिए ना सर। बस इन्फॉर्मर इज वेरी वेरी सिंपल बाबा। आप देखो, आप और जगह जाने का है, एयरपोर्ट जाते हैं, आपको चेन्नई जाने का है, आपको से कौन सा काउंटर में जाऊं, कौन सा गेट में जाऊं, वो बोलते B4। ओके, अब B4 में तो उधर जहाज, हवाई जहाज मिलती है, देन यू टेक द प्लेन। So that fellow who gave you information that you go to the B4 gate, is he your mentor? Is he your guide? इन्फॉर्मर। That's all. Don't use big heavy words like mentor and guide and friend. That fellow is not even your friend. You have put a question, where is the B4 gate in the airport? He said, okay, go this way, left and right. You will find the B4 gate. Thank you, he says. Informer. You are asking for moksha, enlightenment. Okay, close your eyes, observe the breathing, then you will get it in your home. So we are informing you, just like that fellow who shows B4 gate in the airport. Nothing more than that. Don't use heavy words. Guru, mentor, guide, दोस्त। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। मेरे दोस्त हैं सर, मेरे दोस्त हैं, मेरे गाइड भी है, सब है मेरे। फिर वही आप, you come to the same point again. Baba, I am not Baba. I am informer. You put a question. कहाँ जाने का है आपको? चेन्नई जाने का है तो B4 में जाइए, मुंबई जाने का है तो B5 में गेट में जाइए, बस उतना ही बात है। If you want health, you do meditation. If you don't want health, go to hell. Who cares? So use the word informer from now onwards. You please translate this into Hindi. सर बोल रहे हैं कि गुरु, मेंटर, गाइड, ये सब आप मुझे मत बोलिए। मैं जस्ट इन्फॉर्मर हूँ। मैं खाली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप अगर अपनी सांसों के साथ रहते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। यू गेट गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग। आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप अपनी सांसों के साथ रहोगे। अब अगर आप एयर फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कौन से गेट पे जाना है, तो आप कहाँ पर जाओगे? इंफॉर्मेशन डेस्क में ना, जो आपको बताएगा कि हाँ आपको इस डेस्क में जाना है। तो वो आपका ना फ्रेंड हुआ, ना मेंटर हुआ, ना गाइड हुआ। वो जस्ट ही इज एन इन्फॉर्मर। वो खाली आपको इन्फॉर्म करता है कि आप इस गेट में जाइए, तो यू विल गो, आप राइट गेट को अप्रोच करोगे। So I am in the information deck, and all pyramid masters are there along with me in the information deck. They all give information when asked. Okay, when asked, then you say, okay, this gate. That's all. You buy your ticket. You want to go there. It is your intention to go there, and we are not even helping you. We are informing you what you want. That's all. We are not healers. We are not helpers. We are not guides. We are not mentors. We are not gurus. We are simply information givers. Information givers sitting in the inquiry counter. Where do you want to go? What do you want? You want health? Okay, do meditation. You want wealth? Okay, do meditation. You want peace? Do meditation. You want moksha, enlightenment, third eye? You want to see your past lives? Okay, do meditation. You have cancer, you want to get rid of cancer? Okay, do meditation. Whatever your question is, our answer is the same. Our information is the same, because meditation gives everything to everybody. It is the one doorway to all your destinations. Please. हम इंफॉर्मेशन डेस्क में बैठे हैं। सर इज इन द इंफॉर्मेशन डेस्क। वो इंफॉर्मेशन देते हैं, और हमारे जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं वो सब इंफॉर्मेशन डेस्क में बैठे हैं। वो सब आपको इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप पूछना चाहते हो कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, मुझे फाइनेंशियली अच्छा होना है, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो आप अपने सांसों के साथ में रहिए। ये हमारे सारे पिरामिड मास्टर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं।
तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपको हेल्थ चाहिए तो ध्यान करिए, अगर आपको नहीं चाहिए आप मत करिए। इट इज आपका चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। Then many people come back. We are doing meditation, but we are not getting results. Then we inquire, are you a vegetarian? Are you a vegan? Then they say, no. So you are useless. You must become a vegetarian. You must become a vegan. Okay. And then you must do meditation. This is our answer. You can't do any himsa. You can't be any non-violence. So we add vegetarianism, ahimsa, to our information. You cannot eat meat. You cannot eat fish. You cannot eat fowl. No way. And be a good master at meditation. No way. Please. बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे ध्यान से कुछ लाभ नहीं हुआ। हम उससे पूछते हैं आपको क्यों नहीं लाभ हुआ, आप क्या वेजिटेरियन हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, हम वेजिटेरियन नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आपको ध्यान से वैसे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप नहीं मीट खा सकते हो, आप किसी जानवर की हत्या करके उसको खा नहीं सकते हो, नहीं अंडा खा सकते हो, नहीं मछली खा सकते हो। हमको उन सब के साथ में रहना है, वो भी धरती के प्राणी हैं। सो वी हैव टू कोएग्जिस्ट विथ नेचर। हम उनके साथ में, एनिमल किंगडम के साथ में हमारे को रहना है। तो हम ध्यान में तभी प्रोग्रेस कर सकेंगे जब हम अहिंसा, वी विल नॉन वायलेंस को अपनाएंगे, तभी हम ध्यान में प्रोग्रेस कर पाएंगे। 3 things are important: non-killing, non-violence, and non-interference with others' affairs. 3 चीज जरूरी है। आप किसी को मार नहीं सकते हो, नॉन वायलेंस एंड non-interference. नॉन इंटरफेरेंस। आप किसी के लाइफ में दखल नहीं दे सकते हो, आप किसी के भी लाइफ में जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। इट इज एवरीवन्स चॉइस कि उसको क्या करना है। I'll give you an example. We know Raman. Ravan was a great meditator. He even got Lord Shiva to him. Yet he was a killer. He was killing everybody. He was violating everybody, and he was interfering with everybody's life in the whole of India. So he had to be killed. If Rama will not kill Ravana, some Karuna will go and kill him. So Ravana was a great meditator. So meditation is not going to help you, but you must be with non-killing, non-violence, and non-interference. This is what we learn from Sri Ramayana ji. Please. हम रामायण से क्या सीखते हैं? रावण जो है वो एक बहुत बड़ा ध्यानी है, वो बहुत ध्यान करता है, लेकिन लास्ट में उसको भगवान राम ने मार दिया, क्योंकि वह सबके लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा था, नॉन वायलेंस, वो किलिंग कर रहा था, सब जानवरों को मारना, सब आदमियों को मारना, ये सब रावण कर रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो ध्यान उसे कुछ हेल्प नहीं किया। आपको ये 3 चीज आपके लाइफ में आने से ही आप ध्यान करोगे तो आप प्रोग्रेस करोगे, नहीं तो ध्यान कोई लाभ नहीं देगा if these 3 things are absent from your life. So along with meditation, ahimsa should be there. Non-killing, non-violence, non-interference. Even if you are a parent, you cannot interfere with your own children's lives. आप ऐसे कपड़े पहनो, you go and become a MBBS doctor, engineer. You can't say. You are interfering with their lives. If they ask you, you can give advice, but your goals should not be your children's goals. Every parent should understand that. A parent is not there to guide children. A parent is there to inform children the truth, that's all. As I am informing you, when asked. Please. आप पेरेंट हो, आप अपने बच्चों के लाइफ में भी दखल अंदाजी नहीं दे सकते हो। आप अपनी सोच उनके ऊपर नहीं थोप सकते हो कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कंप्यूटर इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, आप वो सब नहीं थोप सकते हो। और आप गाइड भी नहीं कर सकते हो। जब तक वो आपसे नहीं पूछे, तब तक आप उनको खाली इन्फॉर्म कर सकते हो, बाकी आपको उनके लाइफ में भी दखल नहीं देना है। And you cannot give fish or meat or egg to them in your house. If they want, they can go out and eat, but they cannot have in your house. So you should not supply them. That is the point of parenthood.
Yes. आप अपने बच्चों को घर पर न मीट दे सकते हो, न फिश दे सकते हो, न अंडा दे सकते हो। अगर उनको खाने की इच्छा है तो वो बाहर जाए और खा कर आए, लेकिन घर के अंदर ये तीनों चीज न आना चाहिए न बनना चाहिए। हर PSS मास्टर के घर पर अंडा, माछ, मच्छी ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। My own family, half of the people have started eating meat. So I stopped going to them. They are not my relations at all. I have stopped going to their house. And see, I won't go to their house, even though their house is by my side, because they are meat eaters. My own brothers, my own sisters, or my own brothers' children. I won't go there. I stopped my connection with them because they are meat eaters. I don't maintain any connection with them because they are not human beings at all. Although we are one family, we are not at a family now. Before I came into meditation, they were my family. But after I came into meditation, they are not my family. They are meat eaters. Nothing to do with me. So I stopped my connection with them. I'm happy, very happy. Please. So even if your children are going out and meet, you don't talk to them. Right, sir. सर की फैमिली में बहुत सारे लोग अब मीट खाने लग गए हैं। सर उनसे अपना कनेक्शन पूरी तरह से तोड़ लिए हैं। जब वो मेडिटेशन में नहीं थे, तब वो उनकी फैमिली थी। वो मीट खाते थे, लेकिन उनकी फैमिली थी। लेकिन जब से वो मेडिटेशन में आ गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि जो मीट खा रहा है, जो ये हिंसा कर रहा है, वो मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो वो ना उनके पास जाते हैं, ना वो उनके पास आते हैं। वो हालांकि उनके घर के बगल में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सर उनसे अब कोई कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। My family members are always vegetarians. Ahimsatmak hain. Ahimsa paramo dharmaha. Now, himsa parama adharmaha. So all those people who are non-violent, non-killing, non-interfering, they are my family members. That is my family. That is my wide family. My family is a very big family. And if within the next 10 years, the whole humanity will become my family, will be forced to become my family because of coronavirus, because of PSSM masters, and because of digital revolution through which we are speaking to each other. These are the three causes. Coronavirus, digital revolution, and PSSM masters are opening their mouth, giving information, right information. Because of these three, within the next 10 years, everybody will become my family member. सर बोल रहे हैं जो 10 साल के अंदर सारे लोग सर के फैमिली मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो आ रखा है और जो हमारे PSSM मास्टर है और ये जो डिजिटल ध्यान यज्ञ जो हम कर रहे हैं, जिससे हम राइट इंफॉर्मेशन राइट लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सारे लोगों को इस माध्यम से सब कुछ बता पाएंगे। डिजिटल ध्यान यज्ञ जो आज चल रहा है और डिजिटल मूव के द्वारा हम सबके साथ में मिल सकेंगे और उनको बता पाएंगे कि हम सबको अहिंसा का मार्ग अपनाना है। See, what is this digital revolution doing? I don't have to go to Odisha to talk to you. I don't have to spend a rupee. I don't have to spend any extra time for you. I am sitting in my home family, having my breakfast, and I will have my lunch here. I'm not moving out of my chair, but I am still talking to you. The information is being passed without any cost. So digital revolution, 0 inputs and 100 outputs. We are not traveling, we are not spending our time, nothing. We are not spending our comforts, stopping our comforts, nothing. But we are informing, information is happening instantly. Otherwise, I have to catch a flight to go to Odisha and go to your house and then talk to you. So this computer revolution, technological revolution, digital revolution, this is helping us so much. Helping in what? Helping in everybody becoming well-informed, instantly informed. So once the information is there, then the solution is there. Problem is there and information is lacking. The problem is not solved.
problem is there, information is available, then it is solution. For all the problems, the solution is meditation. So we are sitting at home because of the digital revolution. And you are also sitting at your home because of coronavirus. Otherwise, you would be somewhere in the streets. Yes, sir. Doing some shopping. Yes, Nilamji, I know you are a good shopper. But now you are sitting at home. Yes, So sir. because of corona, you are sitting at home. I am sitting at home. If I was not sitting at home, you couldn't get me like this. And corona is there. This revolution, computer revolution is there. Digital revolution is there. And we are all informers. We have got the knowledge of the solution for everything. Solution for everything. So we open our mouth and give the information to you. That's all. We are not mentors. We are not gurus. They are heavily loaded words. I don't like them. No. That is not PSSM. No. We are simple people. Simple informers. We are able to spread across the world because of the digital revolution, computer revolution, and now added to it, corona. Corona has made everybody silent. Yes, sir. Made everybody homebound, not road-bound. Homebound. Now, no other retreats, no other resorts, no other travels. Sit at home, close your eyes and observe your breathing. Do meditation for hours and hours. Earlier, you complained there was no time for you. Now, Corona says, okay, all the time is for you. Yes, sir. Please. कंप्यूटर रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ना मुझे ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है, ना फ्लाइट लेने की जरूरत पड़ रही है, ना कहीं जाने की जरूरत पड़ रही हो, और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. आप अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने घर पर बैठा हूँ. बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस वी ऑल आर एट, हम सब अपने अपने घर पर बैठ रहे हैं और हम सब ध्यान करें. सबका प्रॉब्लम है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है. अब हम इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं. हर प्रॉब्लम का एक ही इंफॉर्मेशन है, दैट इज ध्यान. आप ध्यान में बैठिए. अब आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, ना कोई रिट्रीट में जाना है, ना कोई पार्टी में जाना है, ना शॉपिंग करने जाना है, कहीं नहीं जाना है. आप घर पर बैठिए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए. एंड फिर आप अपने अंदर चेंजेस देखिए कि ये कोरोना वायरस कितना अच्छा चेंज ला रहा है आपके अंदर. Problems of children are there. Problems of adults are there. Problems of old people are there. Problems of householders are there. Business people are there. Farmers are there. Politicians are there. Everybody has got a problem. But the solution is meditation plus ahimsa. This is the formula. Meditation alone is not possible. Is not enough. You must have ahimsa. Ahimsa alone is not enough. You have to add meditation to it. Through ahimsa, you stop doing current bad karma. But your past karma has to be burnt. That happens only through meditation. हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम है. एक फार्मर के लाइफ में, एक पॉलिटिशियन के लाइफ में, एक हाउसवाइफ के लाइफ में, एक बच्चे के लाइफ में, एक बिजनेसमैन के लाइफ में. सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज मेडिटेशन एंड अहिंसा. आप खाली अहिंसा मतलब आप नॉन किलिंग करोगे तो नहीं काम बनेगा, क्योंकि आप अभी अगर नॉन किलिंग कर रहे हो तो आप अपने पहले अभी से कर्मास को डिसॉल्व कर दिए. लेकिन आप अगर जब मेडिटेशन करने लगोगे तो आपके जो पास्ट कर्मा है वो भी डिसॉल्व होने लग जाएंगे. तो दो चीज आपको चाहिए, दैट इज मेडिटेशन एंड अहिंसा. दे गो बोथ हैंड इन हैंड. वो एक साथ जाते हैं दोनों. Please remember that through meditation you dissolve the past, and through ahimsa you rectify the present. These are the two aspects. Then only you will create a good future for you. If you have not dissolved your past, if you have not rectified your present, how can you go to a bright future? No. Meditation dissolves the past. Ahimsa purifies the present. Then you are a beautiful candidate for the bright future. And everybody will become a Buddha, a Jesus, a Puri Jagannath. Yes.
मेडिटेशन जो है वो आपके पास्ट कर्मास को काट देता है और अहिंसा जो है आपके फ्यूचर को सही कर देता है। तो ये दोनों अगर आपके साथ में है तो जगन्नाथपुरी आपके घर पर ही है, आपको कोई जगन्नाथपुरी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान करें और अहिंसा को फॉलो करें एंड फिर चेंजेस देखें। आप स्वयं जगन्नाथ बनते हैं, यू बिकम जगन्नाथ, यू बिकम वर्ल्ड लेवल इन्फॉर्मर, world level good Samaritan. Meditation dissolves the past. Ahimsa purifies the current, Vartaman. Therefore, you create a beautiful future. If you don't clear the past, and if you are not pure in the present, your future is dark. Hell. You create your own hell and you create your own heaven. According to these two things, meditation and ahimsa. मेडिटेशन और अहिंसा, मेडिटेशन से आप अपने पास्ट के कर्मों को ठीक करते हो और अहिंसा से आप अपने प्रेजेंट को ठीक करते हो। इससे आप अपने फ्यूचर को ठीक कर रहे हो, आप अपनी फ्यूचर लाइफ को ठीक कर रहे हो। आप अपनी खुद रियलिटी बनाते हो, चाहे तो आप हेल बना लो या आप हेवन बना लो, ये आपके ऊपर है। See, preparing the soil, tilling it is meditation. Sowing the right seed is the ahimsa. Then you get a bumper crop. If you don't clear the past, you can't sow the seed. And there'll be no, if you don't sow the seed, there'll be no crop. So two things are required: tilling the soil and then sowing the seed, right seed. Sowing the right seed is ahimsa. Tilling the whole soil, preparing the ground is called as meditation. You prepare the ground through meditation. You prepare your mind through meditation. Then you sow the seed of ahimsa. Then you become a tree and you become a source of right information. Before meditation, before ahimsa, you are a source of wrong information to everybody, including your parents. You are a source of wrong information to your own children. You spoiled your own children. Your parents have spoiled you because of wrong information. Because there was no meditation and there was no ahimsa. So every parent was spoiled by their own parents, and every parent is in turn spoiling their own children. This is how whole of earth has become hell. But now, because of PSSM, plus because of meditation and ahimsa, every family is set right within the family. When every family is set right, the whole nation is set right. When every nation is set right, the whole world is set right. Information is important. Right information. What is right information? Do meditation. Close your eyes, observe the breathing, and no killing, no violence, no interference. These are all sacred principles. Non-killing, non-violence. Even a husband cannot rape his own wife. Parents cannot rule the children in the name of discipline. No. Right information. The children are beautiful people. They are only wanting right information from you. They become great masters by themselves. Thank you very much, Neelam ji. Thank you, sir. Thank you very much for the beautiful session, sir. सबका बधाई हो. Please carry on. Thank you, sir. अभी क्या टाइम हुआ? सर अभी 10 बजा, ठीक 10 बज गया सर. It is. ना देखो फिर. I don't have a watch, but still I know that there is a time. Thank you, sir. एकदम ठीक 10 बजा है सर. डॉट 10 बजा है बिल्कुल. तो अब मैं विराम दूंगा. यहीं बैठा हुआ रहूंगा. आप सबको देखते हुए रहूंगा बाबा मजे में. Thank you, sir, for this beautiful session. I think everyone liked it. All the masters who are watching us, they all liked the session. And now I would like to hand over the next session to Rohini Bhavsinka. Rohini. Good morning, everybody.
पत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज इस सुंदर प्रवचन जो मिला हमें, उसे सबकी जरूर जरूर आंखें खुली होंगी। और इस प्रवचन के बाद I take the pleasure to introduce Dr. Sangeeta Nehra. Firstly, she is a PSSM master from last 10 years. And she is also a MD in Ayush with the Haryana government. She is a spiritual scientist. She is a specialist in herbs, yoga and meditation, nutrition and dietitian. She also works on Panch Karma, that is the healing process of 5 stages, and even in quantum healing. Today, Dr. Sangeeta Nehra will shower her wisdom on the shift of knowledge, wisdom, surrender, and bliss, a journey towards wholeness to emptiness. So may I please invite Dr. Sangeeta Nehra ji. Yes, thank you. Thank you so much. Welcome. नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्ते। सब बहुत अच्छा लग रहा था। आपने बताया कि कोरोना और पिरामिड मास्टर्स एंड डिजिटल ध्यान योग से पूरा वर्ल्ड अभी मेडिटेशन और वेजिटेरियन होने जा रहा है। तो सेम अभी मैं सभी पिरामिड मास्टर्स को थैंक्स करती हूँ और इस डिजिटल ध्यान योग और अवेकन यूथ को सभी को थैंक्स करती हूँ कि एक इतना बड़ा मूवमेंट हमारे सब पिरामिड मास्टर्स के थ्रू पूरी धरती को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है। मैं शुरू करूंगी। जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं एक बुक का सिर्फ एक ही चैप्टर में पढ़ रही थी, अगर था। ये रिटन बाय मैरियाना, और अगर था इज द अर्थ्स इनर वर्ल्ड। आने वाली जो लाइफ है, हमारी रेस है, वो कैसी होगी। तो उसमें एक लाइन लिखी है, वहीं से हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो उसमें लिखा है कि देयर इज विजडम एवरीवेयर, यंग मैन, ही रिस्पॉन्डेड। द मैन हु बिलीव्स हिमसेल्फ वाइज इज स्टूपिड. Stupidity always try to mislead wisdom. But if you are seeking wisdom, you need only look around carefully. The nature is full of wisdom. तो जो नेचर है वो फुल ऑफ विजडम है, एंड विच सरफेस ज्वेलर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय. तो तभी ये जो हमारे सरफेस ज्वेलर्स हैं, जो धरती के ऊपर हैं, वो अभी डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे हुए हैं। और उसी वजह से कोरोना आया, और उसी वजह से हम घर में बैठ के अपनी एक राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज टू विजडम टू सरेंडर टू ब्लिस, ए जर्नी फ्रॉम होलनेस टू एम्प्टीनेस। तो मैं अपनी ही लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ इसको शुरू करूंगी। फ्रेंड्स, जब 24 साल का मैंने आयुर्वेदा किया था, तो नॉलेज तो थी। हम एक एजुकेशन में, हमारा एक माइंडसेट रहता है, हम उस नॉलेज को गेन करते हैं। और उस नॉलेज को जब हम गेन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक एजुकेशन लेवल पे हमारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अभी पूरा वर्ल्ड इम्यूनिटी कैसे एनहेंस होगी, उसको कैसे बूस्टअप करेंगे। तो इम्यूनिटी के लिए मैं सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के ऊपर फिक्सअप थी, और मैं सोचती थी कि इम्यूनिटी जो बढ़ेगी वो फिजिकल बॉडी के ऊपर ही बढ़ेगी। लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ जैसे ही मेडिटेशन में आई, मुझे पता लगा कि हम तो फिजिकल बॉडी है ही नहीं, वी आर गॉड्स। हमारी वाइटल बॉडी भी है, हमारी मेंटल बॉडी भी है, कॉजल बॉडी भी है, सुप्रा कॉजल बॉडी भी है, कॉस्मिक बॉडी भी है, निर्वाणिक बॉडी है। जब तक हम इन नॉलेज से विजडम तक नहीं जाएंगे, जब तक हम नॉलेज से विजडम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि immunity is not only based on physical body, it is based on vital body, based on mental body, based on cosmic body, based on nirvanic body. We have to accept everyone. immunity का फर्स्ट फॉर्मूला यही है कि हम सबको एक्सेप्ट करें, अलग अलग छोटे छोटे समुदाय में उस बॉडी को ना बांटें।
वो स्पेशलाइजेशन ना ले। पत्री सर ने बताया कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, अभी समझ आया नॉलेज और विजडम में बहुत बहुत फर्क है। हम बेसिक एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन अभी स्पिरिचुअल एजुकेशन मिसिंग है, जो हमारे डिजिटल ध्यान योग से, यज्ञ से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन, स्वाध्याय, साजन संगत करना ही है, तभी हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। बिकॉज हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सबसे एक अनकंडीशनल लव, केयर, सपोर्ट, हार्मनी, जॉय, सब चीजें उस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो इम्यूनिटी सिर्फ अकेली एक दवाई खाने से या एक खाना आज खाया और हम सोचे कि 2 दिन में हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी। या हम आज मेडिसिन खा रहे हैं और सोचे कि इम्यूनिटी बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, जो इम्यूनिटी है, जो फिजिकल बॉडी है, वो फ्रूट है। पत्री सर हमेशा बोलते हैं कि ऑल बॉडीज आर द रूट, वहां से रूट से आने के बाद हमारा फ्रूट। तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी इम्यूनिटी इज डिपेंड ऑन मेडिटेशन, स्वाध्याय और साजन संगत, जो अभी हम घर में बैठे हुए इस लॉकडाउन पीरियड में हम कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लूंगी, बचपन से ही मैं 24 साल से पहले कबीर को पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, कुछ वेदास, गीता, ये सब पढ़ा। लेकिन नॉलेज तो पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन लेती गई, लेकिन उसका विजडम नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, समत्वम योग उच्यते क्या है, त्रिकरण शुद्धि क्या होता है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में आई और पत्री सर का जो ट्रांसलेशन किया गीता का, वो पढ़ने के बाद त्रिकरण शुद्धि जो चैप्टर नंबर 6 है, उसका 13वां श्लोक है, उसको मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया। उससे पहले नॉलेज तो थी, लेकिन विजडम नहीं था, खुद का आत्मज्ञान आया ही नहीं था। तो नॉलेज के साथ साथ हमारा विजडम, हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑफ स्वाध्याय, बहुत सारे राइट स्पिरिचुअल मास्टर्स को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकरण शुद्धि में सिर, ऐसे शिरो, काया, ग्रीवा, वाणी, इन तीनों चीजों का, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी वाणी, इन तीनों का शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको दूसरी तरीके से उस नॉलेज को लेते जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, और शायद मैं भी भटक गई थी। और मैं उस रेस में चली गई, उस रेस में जहां पर सोचने लगी कि बस पढ़ाई ही सब कुछ होता है। और बिल्कुल ठीक है कि जो सोसाइटी है हमारी, वो सोसाइटी हमारी बस इसी के ऊपर बेस्ड है, जो हम कस्टम, हमारी ट्रेडिशंस, और वो एजुकेशन हम लेते लेते हमारा पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है। तो 24 साल तक मेरा भी पूरा माइंड सेट चेंज हो गया, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट आने लगा कि चलो अब शादी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। जैसे एक सोसाइटल जो पत्री सर बोलते हैं संघ बुद्धि, जो समाज से बुद्धि मिलती है, हम उसकी रेस में शामिल हो जाते हैं। तो हमें उस रेस में ना शामिल होकर हमें अपने उस विजडम को, उस आत्म ज्ञान को आगे लेके आना है, उस नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को समझते हुए। फिर तीसरे एग्जाम्पल में देती हूँ कि चक्रास। आयुर्वेदा में भी मैंने पढ़ा कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी कि चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। और मैं बहुत पैशनेट थी, अपने टीचर से भी पूछती थी कि क्या होता है, सब कैसे समझ आएगा, बट किसी ने आंसर नहीं दिया। और मैं ढूंढती रही कि मैं किससे पूछूं। लेकिन 41 ईयर की एज में आने के बाद पत्री सर से मुलाकात हुई और डोर ओपन हो गए अपने आप ही। जैसे सर ने कहा कि अगर ये एक ऐसा डोर है मेडिटेशन, जिससे आपकी सारी डायमेंशंस खुल जाती हैं। तो चक्रास को मैं बहुत एक सिंपल, कुंडलिनी कैसे जागृत होगी, तराटक कैसे करेंगे, ये सब चीजें मैं प्रैक्टिस में लाती रही। लेकिन मुझे इन चीजों का बिल्कुल नॉलेज था, पढ़ती रही, किताब पढ़ती रही, बट एक आत्मज्ञान, विजडम बिल्कुल नहीं आया। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, उस विजडम वो अपने आप आने लगता है।
तो हम ये समझें कि जो आज की सोसाइटी है, अगर हम सोसाइटी के 2 पार्ट कर दें, एक सोसाइटी है ए पार्ट और एक सोसाइटी है बी। ए सोसाइटी और बी सोसाइटी के पास सब कुछ है, वही जगह है, बी के पास भी वही है। ए सोसाइटी में भी उतने ही लोग रहते हैं, बी सोसाइटी में भी उतने ही लोग रहते हैं। ए सोसाइटी के पास भी पैसे हैं, उसके पास भी पैसे हैं, दोनों चीजें बराबर हैं। लेकिन जो बी सोसाइटी है, उस बी सोसाइटी के पास मेडिटेशन है, बी सोसाइटी के पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं, नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस, 5 फिंगर कंसेप्ट, ये सब जो चीजें हैं, जो बी सोसाइटी है वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और हम जो पिरामिड मास्टर्स हैं, हमें अपनी धरती को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं। जो सोसाइटी है उसको देखना है कि जो राइट एजुकेशन है वो अभी नहीं मिल पा रही है ए सोसाइटी को। जो फिजिकल एजुकेशन है अभी वो बेस्ड है सिर्फ मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पे। उनका जो पूरा फोकस एनर्जी है, वो एनर्जी सिर्फ फोकस्ड है अपनी मेंटल लेवल पे। एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट। वो एनर्जी नहीं है जिसकी हम नॉर्मल बात करते हैं। ब्रेथ एनर्जी इज चेंज्ड इनटू यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ना। लेकिन जैसे ही भटकेगा मन तो हमारी मेंटल एनर्जी उस तरफ जाने लगती है। समटाइम्स इंटेलेक्चुअल एनर्जी भी है, लेकिन एनर्जी का जो फिनोमेना है वो हमें समझना पड़ेगा। बहुत बार हम ये बोलते हैं वी आर कॉन्शियस बीइंग्स, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। तो उसका मतलब क्या है कि हम हमेशा अवेयरनेस में रहें, जागृति में रहें। कॉन्शियसनेस, वी आर गॉड्स, अहम ब्रह्मास्मि, एवरी मोमेंट वी हैव टू फील। तभी हम उस बी सोसाइटी के जो पार्ट है वो ए सोसाइटी में अब ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अभी धरती डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही है, एक शिफ्ट हो रहा है। सेम उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी शिफ्टिंग हो रही है। हम उस नॉलेज के कुछ पार्ट को जो बचपन में हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने उस सोसाइटी में देखा, उसके बाद हम उसको एक विजडम लेवल पे, आत्मज्ञान पे, स्वाध्याय पे हम उसको समझने लगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी लाइफ का, शादी के बाद एक लैक ऑफ सेल्फ लव, अपने आप से दोस्ती थी नहीं। टोटल फोकस माइंड बॉडी में दूसरे के ऊपर था, एक्सपेक्टेशंस थी। और धीरे धीरे कुछ कुछ साल बढ़ते चले गए और मैं अपना पूरा ट्रू नेचर खो दिया। वही जैसे एक समाज में जैसे होता है उस तरीके से मैं फॉलो करने लगी, उन्हीं रिचुअल्स को, उन्हीं ट्रेडिशंस को, उन्हीं कस्टम्स को। लेकिन अंदर से तूफान था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जॉब कर रही हूँ लेकिन खुशी नहीं है, टेम्परेरी हैप्पीनेस थी, टेंशन थी, स्ट्रेस था। सारा कुछ होते हुए भी इतना सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी मैं। लेकिन ये टाइम पीरियड होते होते आई वॉज 41 ईयर, 41 साल बीत गए और उससे पहले बहुत सारी किताबें पढ़ डाली कि शायद मुझे कहीं कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन नॉलेज इकट्ठी होती चली गई, नॉलेज इकट्ठी, एजुकेशन, डिग्रियां इकट्ठी होती चली गई, बट उससे कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो हमें अपने लेवल पे हमारा सोल इवोल्यूशन, हमारी सोसाइटी का इवोल्यूशन टोटल बेस्ड ऑन मेडिटेशन। साजन संगत, सब हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुने, फॉलो करें। ब्लड के अंदर आना चाहिए वो। अगर वो ब्लड के अंदर नहीं आता तो कुछ फिजिकल पार्ट हमारा अलग हो जाता है, क्योंकि माइंड इतना जल्दी अपने आप को ढका लेता है कि हम सीधा वहां से उस कॉस्मिक लेवल से चुटकी भर में हम यहाँ पहुंच जाते, मी सेंटर्डनेस आ जाता है। तो हमारा अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन, हमारी ब्रेथ एनर्जी से ही आएगा। तो हमें इस नॉलेज के साथ साथ विजडम में आगे चलना है। और अभी बताया कि मैं 41 एज में
पत्री सर से मिली, माय बिलव्ड गुरु, अभी पत्री सर ने कहा वी आर इनफॉर्मर्स, बट ए डीप ग्रेटिट्यूड माय बिलव्ड गुरु, कि जिन्होंने मेरे रास्ते खोल दिए और मैं एक ऐसे पाथ के ऊपर, सोल पाथ के ऊपर चली गई जहां पर सब अच्छा लगने लगा। लाइफ में एक शिफ्ट आया, चेंज आ गया। लेकिन 41 कोई चेंज नहीं था, बिल्कुल मर के जी रही थी। 41 एज के बाद मुझे मेडिटेशन से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने देखा कि आप आंख बंद करते हैं तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी कैसे एक जगह अलाइन होकर आप एस्ट्रल ट्रेवल सिखाती है, कैसे आप अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं और कैसे उस पास्ट लाइफ से आप सीखते हैं कि द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मिशन ऑफ लाइफ क्या है, और आपका होलनेस, आप क्या हैं अंदर से। फिजिकल बॉडी, पंचमे कोश तो मैं आयुर्वेदा में भी पढ़ती थी, लेकिन पंचमे कोश कब समझ आया? जब पत्री सर से मिली, मेडिटेशन किया, स्वाध्याय किया। स्वाध्याय की शुरुआत हुई, फर्स्ट टाइम रामराजू सर ने मुझे एक बुक दिया, ये सोल जर्नी, पीटर रिशेलू की लिखी हुई। जानने लगी कि यस, मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर से एक एस्ट्रल बॉडी कैसे ट्रेवल कर सकती है, द सेम मोमेंट। अभी क्वांटम फिजिक्स में पता लगा कि देयर इज नो स्पेस एंड टाइम इफ यू वांट टू कनेक्ट विद एनीवन। उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अभी समझ आने लगा कि हम कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोल जर्नी से मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ। यू फॉर एवर, लोबसांग रंपा, उन्होंने बताया कि वी आर नॉट जस्ट फिजिकल, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देन टिश्यूज एंड एवरीथिंग। कितना डिटेल में उन्होंने बताया है। समझ आया कि अरे वी आर, अगर मेरा एक गुस्सा है तो मेरे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बताया कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो तो उधर ही ट्रेवल करेंगे जहां एनर्जी ट्रेवल करती है। समझ आने लगा कि यस, अगर मैं कहीं दुखी होती हूँ तो कितना मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, मैं दूसरों को कैसे तंग करती हूँ। अगर मैं नहीं बोलती हूँ, नाराज होती हूँ, रिलेशनशिप में बदलाव आ गया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एक बार मेरी फैमिली में, जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल सीख रही थी और द मीनिंग ऑफ थर्ड आई और ये सब जान रही थी, तो ऑटोमेटिकली मेरे मेडिटेशन में एक बहुत स्पेशल बात होती है कि ऑटोमेटिकली अंदर से एक मैसेज आता है कि यू गो थ्रू दिस बुक। तो सम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वो हंसने लगे कि एक दिन तो ये मर जाएगी, ये छोड़ जाएगी, अगर एस्ट्रल ट्रेवल ऐसे सूक्ष्म जरिए छोड़ दिया तो सेम मोमेंट मुझे मेडिटेशन में आया कि यू गो फॉर द क्रिएट योर ओन रियलिटी, रिटन बाय जे नाइट, एंड यू हैव टू गो फॉर द 7th चैप्टर, 7 सील्स। मैं सरप्राइज थी कि मुझे कौन बता रहा है ये, मुझे जब तक कुछ पता नहीं था, स्टार्टिंग था मेरा मेडिटेशन का। जैसे ही मैं ऑफिस में गई, मैंने नेट के ऊपर वो पीडीएफ निकाला, उसका 7th पार्ट पढ़ा और उस पर पता लगा कि हम सिल्वर कोड होता है, एस्ट्रल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी में सिल्वर कोड है, हम ऐसे नहीं मर सकते हैं, हम ट्रेवल करते हैं सिर्फ। ग्रेट मास्टर्स, इनविजिबल मास्टर्स आर प्रेजेंट ऑलवेज, अगर हम सही ट्रू पाथ पे जाना चाहते हैं। ट्रुथ नेवर चेंजेस, पत्री से बोलते हैं, ट्रुथ कभी नहीं बदलता। तो धीरे धीरे लाइफ में स्वाध्याय का, मेडिटेशन का पार्ट बढ़ने लगा और उसके बाद इजिप्ट गए, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, रिटन बाय डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा पढ़ा। उसके बाद मुझे पता लगा कि आयुर्वेदा की ही ओज क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, शुक्र धातु क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, कुछ चीजें मुझे उसमें डिटेल पता लगने लगी। उसके बाद और भी बहुत सारी बुक्स, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, यू आर ए प्लेसिबो, बिकमिंग सुपरनैचुरल एंड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, रिटन बाय पीटर टॉम्किंस। अभी जब मैं अपना एमडी कर रही थी तो उस वक्त मुझे पता लगा कि अरे प्लांट्स
के अंदर कितना सेंसिटिव, उनका कितना सेंसिटिव नेचर होता है। अगर हम प्लांट्स के पास खड़े होके बोलते हैं तो दे रिसीव द वाइब्रेशंस। मेरी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई। और जो नॉलेज का पार्ट है वो विजडम में तभी आएगा जब हम खुद में प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, चेंजेस आएंगे लाइफ में अपने आप। ओनली किताब पढ़ने से या मेडिटेशन अकेले करने से, मेडिटेशन करने से हमें एक पूरी बॉडी के अंदर हमें सभी बॉडीज का ज्ञान होता है और उसके साथ हमारा अलाइनमेंट होता है। और दूसरे नेचर हमारे चारों तरफ जो नेचर है उसके साथ भी हमारा रिलेशनशिप बनता है। तो हमें कॉन्टिन्यूसली जो पत्री सर एडवाइस करते हैं, जो आपके अंदर से आता है, उन बुक्स को, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनको जरूर से जरूर पढ़ना है। ये बुक्स पढ़ते पढ़ते अंदर से कुछ मेडिटेशन लेवल पर भी कुछ कुछ अनुभव हो रहे थे। फिर एक बुक आई, द 1000 सीड्स ऑफ जॉय। उस बुक के टाइम में जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो उस वक्त मुझे ऑटोमेटिकली एक कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक मदर एंड मेरा एक पास्ट लाइफ सतयुग का मुझे दिखाई दिया। एंड वहां से मुझे गाइडेंस मिली कि यू गो फॉर दिस बुक। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो पर्पस है इज द फेमिनिन एनर्जी। मुझे अभी सोसाइटी में क्या करना है। धीरे धीरे उस चीज को मैं समझने लगी, क्योंकि बहुत फास्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जो माइंड है या जो हमारा मन है, उसके पैटर्न्स है, वो हमेशा हमें खींचते रहते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ जो चीजें हैं जो सोसाइटी की है या जॉब है, ये फैक्टर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन फिर से अवेयरनेस आती है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और जब हम अपने पिरामिड मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो उससे हमें एक बूस्टअप मिलता है कि यस, हम एक सही पाथ पे जा रहे हैं। वो जो ईगो सेंट्रिक हमारा जो मणिपुर चक्र है, जो बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया है कि जो हमारा ईगो सेल्फ है वो वहीं पे मणिपुर चक्र में ही रहता है। और मणिपुर चक्र में रहते रहते हमारे जो नीचे के 2 चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, हमारा पृथ्वी और ऊपर उसका जल तत्व, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ईगो आया, दोनों डिस्टर्ब हो गए। मन में कुछ कुछ चलने लगता है, ईगो सेल्फ मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर ईगो सेल्फ मजबूत होगा तो तीनों चक्रास ओपन ही नहीं होंगे। हम उस फिजिकल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी मैं जॉब में देखती हूँ कि बहुत झगड़े रहते हैं, कास्ट का झगड़ा, क्रीड का झगड़ा, सेक्स का झगड़ा, रेस का झगड़ा, कितने झगड़े हैं। लेकिन अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि मेरे को समझ है। वो समझ कहाँ से आई? मेडिटेशन से आई, विजडम से आई, और बुक पढ़ने से आई कि नहीं, अभी वो मणिपुर चक्र को शांत, नो ईगो सेल्फ, अभी बहुत बड़ा सेल्फ हमारे पास है, कॉस्मिक सेल्फ है। तो अभी मैं उस कॉस्मिक सेल्फ पे आऊंगी, क्योंकि मैं अभी लास्ट 2 ईयर से मैं उस रियलाइजेशन से निकल रही हूँ। तो विजडम दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें हर रोज उसका प्रैक्टिस करें। कुछ ना कुछ अपना एक मैनेजमेंट करिए। और जैसे ए सोसाइटी और बी सोसाइटी, ए सोसाइटी में बहुत समुदाय हैं, अलग अलग मठ बन गए। मैं कभी कभी सोचती थी कि पता नहीं क्यों इतने टीकाकार और ये सब हैं जो अपना लिखते हैं, बट वो राइट नॉलेज, राइट विजडम नहीं है। लेकिन अब समझ आने लगा कि यस, हमें उसमें से क्या लेना है, लेना भी है, नहीं लेना है, पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना है। ये एक विजडम का पार्ट है जिसमें हम स्वाध्याय और स्वाध्याय के साथ साजन संगत, हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, वो हमें सिखाते हैं। हमारे ईगो सेल्फ से निकाल के हमें मेन हायर सेल्फ के साथ जोड़ते हैं कि नहीं, अभी सर हमेशा बोलते हैं अपना मुंह जब खोलना है, जब आपके पास कुछ राइट शब्द हो, मुंह नहीं खोलना है।
कितना प्यारा है, एंड मैंने वो अपने ऑफिस में लगा के रखा हुआ है। अभी कोई ऑफिस में आता है तो वो सबसे पहले चुप ही हो जाता है कि बोलना है नहीं बोलना है। सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस से कितना बदलाव आता है सोसाइटी में। और ये बुक पढ़ने से बहुत सारी चीजें और जो मेरी लाइफ की थी उसके डोर ओपन हुए, और मैं जो एक प्राइमोर्डियल जॉय जिसको मैं बोल नहीं पा रही थी, वो एक अंदर से ऑटोमेटिकली फीलिंग आती चली गई। अब ये 3 चक्रास के बाद जो अभी पिछले 2 सालों का अनुभव है, वो ऑटोमेटिकली जब हमारे पर्सनल मैटर शांत हो जाते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि अभी हम लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में हम सब फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, तो वी आर सेटिस्फाइड, ओके, वी आर विद द फैमिली मेंबर्स, ऑफिस का काम भी घर से चल रहा है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैंने मेडिटेशन में एक मैसेज देखा, फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉस्मिक मदर, फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सल मदर, टू मदर्स आर डिफरेंट। उन्होंने कहा कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ द 3 चक्रास। 3 चक्रास का एंड का मतलब कि हमारे जो फिजिकल अफेयर्स हैं, जिसमें हम इतने ज्यादा इंडल्ज हैं, बिकॉज द अर्थ इज गोइंग इन द 5th डायमेंशन, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे इन 3 चक्रास का काम इतना ही है जितना हमें जरूरत है, नीड है, उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो वी विल डिस्टर्ब अवर, इन तीनों चक्रास को डिस्टर्ब कर देंगे। और अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट चक्र, जिसमें इम्यूनिटी भी रहती है। और अनाहत चक्र में इज द डीप साइलेंस। जब आप खुश हैं, एक डीप साइलेंस आता है, और उसमें आपके इन तीनों चक्रास की कोई बात नहीं रहती। नो ईगो, नो इमोशंस एंड नो फिजिकल एक्टिविटी। उसमें आपका कर्म इंद्रिय, आप फिजूल की काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब कोरोना ने स्टॉप कर दिया। नो वे, नाउ दिस इज द टाइम फॉर टू कम इन अनाहत चक्र, ए डीप साइलेंस। डीप साइलेंस के बाद क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली लास्ट 2 मंथ से मैं मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन कर रही हूँ, कुछ दिन मौन में चली गई, लेकिन 2 सालों से उस डीप साइलेंस का आंसर आने लगा कि ऊपर से कुछ वॉइसेस आने लगी उस साइलेंस में। वो वॉइसेस मेरी नहीं थी, मेरी आवाज नहीं है वो, मैं बोल ही नहीं रही हूँ, शांत बिल्कुल। कुछ और वॉइसेस आ रही है जो बता रही है मुझे कि साइलेंस में भी कुछ साउंड वाइब्रेशंस होती हैं। ये जब साइलेंस में जब ये वाइब्रेशंस आने लगे, तो हम एक कॉस्मिक सेल्फ बनने लगते हैं। विशुद्धि चक्र, आपकी भाषा में सच्चाई, स्पष्टता, ये सब आने लगती है, शुद्धता आने लगती है। फिर आप उन चीजों के लिए नहीं बोलते जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, ऑटोमेटिकली मौन आ जाता है। नो फिजूल की बातें कुछ होती नहीं। तो जर्नी फ्रॉम नॉलेज टू विजडम टू सरेंडर, अभी मैं उस जर्नी की तरफ जा रही हूँ जहां पर हम सरेंडर करते हैं। 2 साल पहले मुझे ये फील होने लगा कि बहुत बुक्स पढ़ ली, अभी इस बुक्स के साथ साथ मुझे कुछ शायद और करना चाहिए। और जब हम बुक्स भी पढ़ते हैं तो कभी कभी उसमें हम जजमेंटल हो जाते हैं, ईगो सेल्फ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और थिंकिंग भी चलती रहती है। और बुक्स के साथ साथ मुझे लगा कि नाउ आई वांट टू सरेंडर माई सेल्फ। मुझे ये सब चीजें सरेंडर करके, और जैसे हम सरेंडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपने गुरु के चरणों को छूते हैं या भगवान को छूते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उठा के अपने गले से लगा लेते हैं। कितना फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है। सरेंडर इज समथिंग यू आर नाउ इन द ट्रू नेचर। आपका वो ट्रू नेचर आता है, वो आपका आर्कीटाइप, आप कैसे आदर्श हैं, जो मैंने खो दिया था 41 साल से पहले, वो सब धीरे धीरे वापस आने लगा, और एक डीप साइलेंस आ गया।
और वो जो डीप साइलेंस है उससे आपकी वाणी में ऑटोमेटिकली बदलाव आता है, वो रस से भरने लगती है, आपके शब्द बदल जाते हैं। ये जो सरेंडरेंस है वो एक एक एक, एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन है, ग्रेट हैप्पीनेस है, जहां पर आप सिर्फ मुस्कुराते हो कि अच्छा ठीक है, सब जो कर रहे हैं इट्स ओके। कुछ अपनी तरफ से बात नहीं आती, उन तीनों चक्रास की कोई ईगो बोलता नहीं। तो वो एक जो डीप साइलेंस एंड देन विशुद्धि वाणी आती है, तो ये जो वाणी आएगी उसमें ऑटोमेटिकली मधुरता आ जाती है। तो दोस्तों, एक नॉलेज से विजडम एंड सरेंडर, और जो सरेंडरेंस है, द जॉय ऑफ सरेंडरेंस, वंडरफुल चीज है जो मैं रियलाइज करती हूँ। उसमें कहीं कोई बात नहीं आती, उसमें लगता है कि यस, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ साइलेंस। अभी रिसेंटली पत्री सर ने एडवाइस किया कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ, टोटल हाई एनर्जी वाइब्रेशंस आई फेल्ट, और उसमें एक जो वर्ड है द सेल्फ गवर्नेंस, कि हर एक के पास जाके उनकी तकलीफ सुनना, उनकी बातें करना, और एक पूरा सर्कल क्रिएट करना, पूरी सोसाइटी में सेल्फ गवर्नेंस क्रिएट करना। द सेम वर्ड इज इक्वल टू होलनेस, ए जर्नी टुवर्ड्स होलनेस। होलनेस इज समथिंग, पत्री से कितने दिन तक कितने पिरामिड मास्टर्स सब डोर टू डोर जाते हैं। द जर्नी टुवर्ड्स होलनेस, आप जहां बैठे हैं वहां पर आपको साइड वाले की भी वाइब्रेशंस फील होती हैं। आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो आपको उसके बारे में पता लग जाता है, एंड यू लिसन अदर्स। लेकिन 24 साल की संगीता मी सेंटर्डनेस पर थी, लेकिन आज एट द एज ऑफ 51, 52, नाउ द होलनेस आई अंडरस्टैंड। और धीरे धीरे जब होलनेस आता है तो हम सब आपस में एक होने लगते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ वननेस। होलनेस, आपको पेड़ के वाइब्रेशंस भी सुने। पेड़ क्या कहना चाहता है? कभी कभी उदास होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो पेड़ अपने आप ही बोलता है कि यू फील द वाइब्रेशन, यू फील द प्रेजेंस, आई एम हियर। दिस इज द स्टोरी ऑफ होलनेस। लेकिन फिर मन खींचता है। ये तो एक प्रैक्टिस है। जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी में रोटेट करना लगता है वो एनर्जी। जब मैं ये द्रव्य गुण पढ़ रही थी तो उसमें एक फॉर्मेको डायनेमिक एंड फॉर्मेको काइनेटिक होता है। डायनेमिक इज टू चेंज इंस्टेंटली, और काइनेटिक द एनर्जी ऑफ दैट हर्ब, वो चेंज करती है पूरी बॉडी को। द सेम, द कॉस्मिक एनर्जी, द यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रेथ एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को चेंज कर देती है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ होलनेस। अब होलनेस में हम अपने सराउंडिंग में अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपना रिलेशनशिप, अपना फ्रेंड्स, अपना ऑफिशियल दायरा, अपने प्लांट्स, अपने एनिमल्स, इन सबको हम एक ही सर्कल में ले लेते हैं। जैसे इम्यूनिटी, पूरा चक्र जो सबको एक लेता है। और उसके बाद फिर आपकी आवाज अपने आप बंद होकर वो ऑटोमेटिकली चैनल होने लगती है, बिकॉज यू आर द कॉस्मिक सेल्फ, यू आर द निर्वाणिक सेल्फ। एंड थैंक यू टू ऑल पिरामिड मास्टर्स कि जो इस मूवमेंट को इतना तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। इन ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर आउट ऑफ इंडिया। और बिल्कुल सत्य है जो सर ने बोला कि अभी आने वाले 10 सालों में सब बदल जाएगा। अभी कोई बिलीव नहीं करता था। ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ऑल माई इन लॉज, नाउ दे आर वॉचिंग, दे आर इन मेडिटेशन, अंडरस्टैंड करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
बट होलनेस आने के बाद एक स्माइल आती है, एक मुस्कुराहट आती है, एक हैप्पीनेस आती है कि यस नाउ आई एम रिलैक्स्ड, आई एम एंजॉयिंग। एक जॉय आता है, उसको प्राइमोर्डियल जॉय भी बोल सकते हैं, बट एक फीलिंग है कि एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन की। एंड उसके बाद आता है नथिंगनेस, द एम्प्टीनेस। तो बहुत सारे सेशंस जब मैं सुनती हूँ और लाइक मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा, और एक जो पेन होता है समटाइम्स, इनर चाइल्ड, ऐसे एक फीलिंग आता है इनर चाइल्ड का कि कहीं वो इनर चाइल्ड मेरा दबा हुआ है, कहीं पेन है। तो पेन ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर in the emptiness, you dissolve everything. You dissolved all your past life, akashic record, and inner child, your pains and emotions, सब कुछ dissolve हो जाता है. But it needs the daily practice of meditation, daily practice of reading spiritual books, and daily listening the experiences of masters. तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों, हमें हमारी एक जर्नी फ्रॉम टुवर्ड्स होलनेस टू एम्प्टीनेस, टुवर्ड्स होलनेस टू नथिंगनेस, दिस इज द जर्नी जहां पर हम अपनी फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, माइंड बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी में आके ठहर जाते हैं, द होलनेस, एंड देन द निर्वाणिक बॉडी, वी आर नथिंग. कितने मास्टर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, कितने मास्टर्स अलग अलग पूरे ऑल ओवर द कंट्रीज काम कर रहे हैं. तो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन. जो एक ये सोसाइटी है जो अपने रिचुअल्स में लगी हुई है, ये सोसाइटी है जो अपने समुदाय एंड ऑल दीज थिंग्स बनाने लगी हुई है, वी आर नॉट दैट वन. वी हैव टू लिव इन वननेस. यही हमारा लाइफ का पर्पस है, और यही हमारा फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डायमेंशन जाने के लिए यू हैव टू कम एट द सोल लेवल फीलिंग. सोल लेवल फीलिंग इज समथिंग you have to live in truth, the forgiveness, your real archetype, your real quantum energy. You are energy beings. Molecule atoms को किधर ही ले जाएंगे उधर ही चले जाएगा, because it is up to you. And cosmic energy तभी हमारे पास आती है, तभी अंदर आती है when we are in nothingness, when we are in emptiness. So हमें अपने लाइफ के साथ साथ पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फिर से तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन कि हम अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और जब रोशनी होती है तो कोई अंधकार नहीं होता. नो डार्कनेस. लिटिल बिट माइंड, इंटेलेक्ट, सोसाइटल एजुकेशन, ये लिटिल बिट आएंगे, बट हम डिस्टर्ब नहीं होंगे. फिर 1000 सीड्स ऑफ जॉय में एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल उसमें दिया है. क्वेश्चन पूछती है माँ कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना चाहिए. बहुत साधारण सा मैं बता रही हूँ, नॉट इन डिटेल. तो वो कहती है कि यू जस्ट स्टैंड इन द स्टॉर्म. आप उस तूफान में खड़े रहिए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए. यू स्टैंड इन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म अपने आप निकल जाएगा. द सेम हैपेंड विद अस कि हम बहुत ही पीसफुली, बहुत ही ग्रेट सेटिस्फेक्शन से हम अपना काम कर रहे हैं. आराम से इस लॉकडाउन पीरियड में हम एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इन्फॉर्मर बन के
एक राइट एजुकेशन, राइट स्पिरिचुअल एजुकेशन सब लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं. तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, उड़ीसा मास्टर्स, and thank you all pyramid masters, and thank you all seekers, and thank you to my beloved guru Patri sir. Thank you very much. Wow, what a wonderful session that was. Thank you, Baba. Thank you. Thank you. Love you, sir. और क्या क्या हो रहा है? On behalf of PSSM and the entire team, I would like to thank Sangeeta ji for gracing us with her important work and sharing her knowledge and wisdom on us. Thanks a lot, Sangeeta ji. Thank you. Now I hand over to Anubhav. Wait. I would like to talk to Sangeeta ji. Yes, sir. Where are you now? सर अभी मैं सिरसा में हूँ, हरियाणा में. आज संडे है और कल फिर से पंचकुला जाऊंगी ऑफिस में. और आयुष की जो गाइडलाइंस आ रही हैं अभी सर, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं सर. ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में हम गाइडलाइंस पहुंचा रहे हैं कि क्या खाना है, कैसे योग करना है, एंड अपना अपना मैसेज जो सर भारत सरकार की गाइडलाइंस है वो दे रहे हैं. और पर्सनली मैं सर जो बुक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ वो पढ़ रही हूँ. एंड सबसे ज्यादा ये कि आई एम इन्वोकिंग द तारा माँ एंड द पार्वती माँ इन माय मेडिटेशन. और उससे मुझे पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो मिल रहा है. एंड हाउ टू बी कूल विद इन अवर सेल्फ. अभी पूरा कितना बदलाव आ रहा है इस धरती पे, उसके लिए हमें और मेहनत करनी है. बिकॉज द मेन मैसेज वाज कि जो 3 चक्रास हैं वो हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं वो बंद हो गए हैं. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर टू ओपन द हार्ट चक्रा एंड विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा एंड सहस्रार चक्रा. द मीनिंग इज कि हमें अपना डेली रूटीन का काम करते हुए उसमें उलझना नहीं है. अगर हम उसमें उलझेंगे तो वी लॉस्ट इन 5th डायमेंशन. तो ये सर नॉलेज मिल रही है. और अभी 2 दिन पहले पार्वती माँ का सेशन था आशा गुप्ता मैडम के साथ, तो वहां पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ वो. और उसमें जो चैनलिंग हुई बहुत अच्छी थी और उससे काफी कुछ इफेक्ट आया सर, प्रभाव पड़ेगा. और बहुत सारे हरियाणा के जो मास्टर्स हैं उनको पर्सनली मैं मैसेज दे रही हूँ. और उनको ये जूम करना ये सब अभी दे आर वीक. अब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उनको पक्का सिखा दूंगी सर. थैंक यू सर. थैंक यू बाबा. बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए. Thank you, We are all very happy to listen to you today. Thank you, sir. It is our great joy to listen to your experience and wisdom. Yes, sir. Your travel from wholeness to nothingness. Yes, sir. Yes, Anubhav, proceed. Thank you so much, sir. Pranam to our Guru Shri Patri ji, and thank you, Dr. Sangeeta Nehra, for enlightening us with your wonderful wisdom. Coming up next session is one of the most wonderful, one of the most energetic, and one of my favorites is our youth session. And we have a wonderful community of youths set up and co-founded by our very beloved Sahil Kandoi. He has been my childhood friend and my co-meditator, and I have learned a lot from him. And right now I would request, I would invite Sahil to come forward to take forward this session of Meet the Awakened Youths. And wait, tell more about yourself, your family, your upbringing, how you came into contact with him and PSSM. Please, a few more words. So I as a child, I have been very curious and very मुझे बहुत जानने की इच्छा थी, सीखने की बहुत इच्छा थी बचपन से. और बचपन से मुझे काफी दिमाग में क्वेश्चंस आते थे कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान हमें मिलते क्यों नहीं है, और हम भगवान को कैसे पा सकते हैं. बचपन में
तीर्थ यात्रा के बारे में सुनते थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और वैष्णो देवी माँ और रामेश्वरम जी। और मैं सोचता था मैं यहाँ कटक में बैठ के भगवान को अगर पाना है तो मुझे इतना दूर जाना क्यों पड़ता है, मुझे इतनी दूर जाने की क्यों जरूरत है। मेरी जिंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो मुझे इतनी दूर जाके उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या कि मेरे इश्यूज को सॉल्व करो, या मेरे को जो जो अंदर फील हो रहा है उसको समझाइए, उसको बताइए कि क्यों फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। बचपन से मुझे ये सारी चीजों की बहुत उत्सुकता थी जानने की। फिर दोस्तों से भी मैं जब बात करता था तो मैं बोलता था कि यार जिंदगी से मैं बोर हो गया हूँ, जिंदगी में क्या हम लोग यही करेंगे कि सुबह उठो, खाओ पियो, स्कूल जाओ, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर जब बड़े होंगे तो काम करो। सेम रूटीन से मैं बोर हो चुका था। एंड मैं सरप्राइज था कि एज अ चाइल्ड, मैं शायद स्टैंडर्ड 3 या 4 में था जब मुझे ये सब क्वेश्चंस आते थे, कि एज अ चाइल्ड मैं सरप्राइज था कि मुझे ये सब क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, मैं लाइफ से बोर क्यों हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चीज। लेकिन बचपन में ये सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे कोई कहीं से सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले नहीं थे, और मैं भी काफी थोड़ा डरा हुआ था कि किससे पूछूं ये क्वेश्चन और कौन मेरे सवालों का जवाब देगा। तो बचपन में तो ये हिम्मत नहीं हुई कि जाके एक्सप्लोर करूं ये चीज। जब बड़ा हुआ तो जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मुझे अपने आप के अंदर से ये एक तो मैसेज आया कि अनुभव, अभी तुम्हें ही खोजना पड़ेगा आंसर्स। यू ओनली हैव टू फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एंड नो वन इज गोइंग टू कम एंड गिव इट टू यू अनलेस यू आस्क फॉर इट। तो फिर मुझे कहीं से डॉक्टर न्यूटन के पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्कशॉप के बारे में पता चला, और बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे वो वर्कशॉप करना है। और पापा ने भी थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए। फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि मैं जाके और वो वर्कशॉप अटेंड करूं। वर्कशॉप करके डॉक्टर न्यूटन ने मुझे एक तो 40 डेज का मेडिटेशन का चैलेंज दिया कि आप 40 डेज 40 मिनट्स तक एवरी डे कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करो, और उसके बाद आप मेरे को मेल लिखना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा। तो मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया, एक संकल्प ले लिया कि 40 डेज 40 मिनट्स तो कुछ भी हो जाए, मैं 40 मिनट्स के लिए तो मेडिटेशन करूंगा ही करूंगा, एटलीस्ट 40 डेज के लिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जब 40 दिन पूरे हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो चीज है जो कि मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, जो कि जिंदगी का पाथ जो है, हमारे जो जीवन का जो रास्ता है वो बता सकता है। तो मेडिटेशन मैंने शुरू किया था 2016 में, और उस दिन से लेके आज का दिन है मेडिटेशन करना मैंने बंद नहीं किया है। और पत्री जी से जब मिला तो मतलब मुझे पता चला कि डॉक्टर न्यूटन के जो गुरु हैं वो है हमारे बिलवेड श्री पत्री जी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ द पावर ऑफ वन मैन। मतलब एक पत्री जी ने दुनिया भर में जो मेडिटेशन का जो मैसेज है, ध्यान का जो मैसेज है, वो सबको फैलाया है, और उन्होंने सबको ये सिखाया है। और अभी उन पत्री जी ने जो बीज बोए हैं, अब उन बीजों में से जो पेड़ उगे हैं उनमें से अभी फल निकल रहे हैं, और सब उस फल का मजा ले रहे हैं। तो हम भी मजा ले रहे हैं, और हम भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मेडिटेशन, अपने ध्यान की जो स्टोरी है, जो जर्नी है, उसका मैसेज लोगों को फैलाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोग भी खुद अपने जिंदगी में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता अपने में पैदा कर सकें। और जैसे कि सर आपने आज बताया कि कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर गाइड नहीं है, बस इन्फॉर्मर है। और सर ये चीज बहुत 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 छू गई है मेरे को। एंड इट इज सच अ हम्बलिंग थिंग टू से दैट आई एम नॉट योर गुरु, आई एम just an informer. This is like an epitome of humbleness, sir. And I am deeply, deeply grateful that I am born and I am alive in a time when you are here to give this message to us live. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Baba. आगे बढ़ो. Now I would like to invite Sahil Kandoi to please take over the session and invite all the awakened youths to share their experience. Sahil, please.
Namaskar, everybody. A wonderful, wonderful morning to everyone. Thank you, Patriji. Thank you, Anubhav, for sharing your beautiful experience. I'm so happy that you also shared your experience. And very warm welcome to Patriji and all of us, all the people who are here for this amazing DDY session. And it's a great pleasure to host it and do it in this beautiful way. So, I'm Sahil Kandoi. I have been in meditation for the past more than 10 years now. And in this process, with Patriji, we've formed a youth organization called as Awakened Youths, and it is guided by the 18 principles given by Patriji. It is the core essence of our information of our basic software is the 18 principles. So it's a youth collective where we've decided, it's simply PSSM in a more youth packaging, and that is why, because we thought that we need to reach out to all the youngsters, because meditation is so important. Because in my life, मेरे जिंदगी में ध्यान ने इतनी परिवर्तन लाई, तो मैंने कहा ये तो हर जगह तक पहुंचना चाहिए, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए. जब PSSM से मैं नहीं भी जुड़ा हुआ था, तब भी जब मैं ध्यान करना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, तो मैं सबको स्पिरिचुअल रियलिटी जो वीडियो है दिखाने लगता था कि आप वो वीडियो देखिए, कितनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं उसमें, कितने अच्छे से समझाया गया है कि ध्यान कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पिरामिड की क्या ऊर्जा है. And then later I connected with PSSM, and then I realized that this PSSM is spreading the exact truth of meditation, of pyramid energy, of spirituality, of the truth, of the real truth, which is meditation. तो अभी at this point of time इतने सारे organizations हैं, लेकिन ध्यान का जो मूल है, सब बहुत बातें करते हैं, बहुत प्रचार होता है, बहुत wisdom होता है, but the real wisdom that resides in the beauty of meditation. And Patriji is the person who जो उससे ज़्यादा emphasize किसी ने इसको नहीं किया है, क्योंकि he has made sure that everybody knows that if you do everything else, but if you don't meditate, you're not going to get the result. आपको वो result नहीं मिलेगा अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो ध्यान is the mold. तो that is why we formed this beautiful organization, and we have a lot of masters, young masters who awakened in this journey, जो ध्यान करके उनको फायदा हुआ है, उनको लाभ हुआ है, who have gained beautiful essence. And we formed a small sangha which through which we share each other, we learn from each other, we learn experiences, exactly how it is happening here. So we also believe that it's about experiencing oneness. हम सब एक होके एक दूसरे से सीख के कुछ शेयर करें दुनिया को, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब में कुछ यूनिक है. आप सब में जितने भी मास्टर्स हैं, आप सब में कुछ यूनिक है. हम सब आम आदमी हैं, लेकिन हम सब इंडिविजुअली कुछ यूनिक है. हमारा एक रंग है, हमारा एक तरंग है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है. उस तरंग को पहचानना ध्यान के माध्यम से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आप किसी को पूछ नहीं सकते कि मैं कौन हूं. ये प्रश्न गूगल भी आंसर नहीं कर सकता. ये प्रश्न सिर्फ आप ही आंसर कर सकते हैं, और इसका आंसर आपको अंदर ही मिलेगा. तो ध्यान वो मार्ग है जिससे आप ये पूछ सकते हैं कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या यूनिकनेस है, व्हाट इज योर अबंडेंस. फाइंड दैट अबंडेंस, फाइंड दैट पैशन, find what you're made to do in this life, and then go out and do it. And not just do it alone, do it together. साथ में करें, एक संघ में करें, लोगों के साथ करें, एक community में करें. Expressing oneness. We want to express oneness in our action. We want to express togetherness in our action. So that is a little brief about Awaken Youth. You're going to meet all amazing people in the community now. We have a lineup of Awaken Youth from all over the world who are going to be sharing their experience in 5 minutes. So stick around to meet all of them. And before I shift to them, I will just share my experience also, that Patri sir had told me some time ago in the period of Corona lockdown that Swamiji, aap 7 days mon mein jaiye, you will gain a lot. And I did practice that 7-day silence, and it was a very transforming experience. But the experience was it's something that I did not anticipate. जब मैं Patri sir ने जब मैं कहा कि भाई आप 7 दिन ध्यान में जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है 7 दिन मौन में जाओ. मैं कहा चलो अच्छी बात है, 7 दिन मौन में जाएंगे, एंड बहुत सारे मास्टर से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे विजन्स दिखेंगे और बहुत कुछ होगा मेरे साथ. लेकिन व्हाट हैपेंड वाज वेरी डिफरेंट. व्हाट हैपेंड वाज, जब मैं ध्यान में बैठा तो 6ठा दिन, 5 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ. 6ठा दिन ध्यान में इतनी जोर से मुझे हार्ट में पेन हुई, एंड इमीडिएटली ऐसा लगा कि there is a flower that is blossoming in my heart. And then my heart told me
the message was that, it doesn't matter how many masters or how many spiritual beings we connect with, or how many visions we have, how much abilities we possess. Doesn't matter. What matters is that you should have compassion in your heart. You should have love in your heart for everybody. जिस तरीके से हम अपने अपने हृदय को हर इंसान के लिए खोल सके, वो ज्यादा जरूरी है. उसका वो आध्यात्मिकता है, ना कि आप कुछ बहुत एबिलिटीज लिया है अपने लाइफ में, बहुत कुछ देख ले. अब इफ यू सी फॉर पत्री जी, ही इज सच अ सिंपल पर्सन, ही इज सच अ सिंपल मास्टर, जो इतने अच्छे से इतने लोगों को ध्यान सिखा दिए, एज एन इनफॉर्मर, एज ही सेज, एज अ फ्रेंड, as a father, as every element that he is, and all he does is share from his heart, share from compassion. Pati sir bolte hain ki karuna is what matters. Karuna is compassion for every one of them. So I would like to share that everybody should open their hearts to everybody. किसी को भी हम अपना नहीं बनाए, सबको अपना बनाए. Let us open our hearts to everybody in this world. Let us think about everybody, because the moment I make a boundary of अपनापन कि भाई ये खाली अपने, हम दूसरों को पराया बना रहे हैं, तो किसी को पराया ना बनाए. Let us open our hearts to everybody. And अगर हमें आध्यात्मिक में ग्रो करना है, तो हम सिर्फ अपने आप को एक चीज पूछ सकते हैं कि कहाँ पर मेरा करुणा खत्म हो रहा है, कहाँ पर मेरा करुणा रुक रहा है, क्यों मेरा करुणा रुक रहा है, why is my love not flowing, क्यों मैं इसको अपना नहीं बना पा रहा हूँ. वो एक ब्लॉकेज है. उसी ब्लॉकेज को आपको ब्रेक करना है, एंड यू हैव टू इंक्लूड एवरीबॉडी इनटू योर फोरम. इट डजंट मैटर दे मेडिटेट और दे डू नॉट मेडिटेट. इवन इफ दे डोंट, इफ यू हैव कंपैशन फॉर देम, दे विल लर्न मेडिटेशन. यू कांट जज देम, यू डोंट हैव टू जज देम. लव देम and they will come into meditation. So my message is love, that all that matters in this world is love, is compassion, and out of compassion you will naturally go out and serve people. You will naturally move to people, and आपको अपने आप अंदर से मन करेगा कि आप सबको ध्यान सिखाए, क्योंकि ध्यान से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है जो आप इंसान को दे सकते हो. तो हर इंसान को ध्यान सिखाने का जो तड़प है वो प्यार से ही जन्मता है और आपके अंदर से जन्मता है. So let your heart blossom. ध्यान करिए, अपने इस प्रेम को उजागर करिए, फिर आप अपने आप सबको ध्यान सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इससे बढ़िया कोई गिफ्ट ही नहीं है इस पृथ्वी में इस इंसानों को देने के लिए. So let us all spread love and spread meditation. So with that, I conclude my message. And now I would like to invite a beautiful array of people from all over the world. So many awakened youths from everywhere, from Switzerland, from Vietnam, from Qatar, Bhubaneswar, everywhere. From everybody they're coming. And let's look at each one of them and see how these beautiful people have कैसे इन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को जागृत किया, and the change in their life they witnessed after meditation came into their life. So now I would like you to meet Sriram Chakravarti as the next AY to share his experience. Thank you so much. Hello all. First of all, I'm so happy to be on this forum and share the stage with so many other AYs. It's a beautiful time. And as Sahil said, and as Patriji said, it's a time for a lot of karuna. It's a time for a lot of love. And that has been my journey as well, because I was caught up in the world, the material world for a long time. And finally, the world decided that I need to wake up. So what did the world do? It made me fall sick. So I was unwell for about 6 years. Doctors could not do anything. Every year they used to give me a new phenomena, a new condition, new medication. But finally, meditation and going inwards was the only way I was able to recover from this problem that nobody else was able to solve. And at that point, when I was able to heal myself, when I was able to come out of my whole sickness, I also realized what my purpose in this world was. I was able to understand that how I can help more people, support more people to understand that they need to go inwards first, they need to meditate. So to me, being spiritual means when you go beyond yourself, you go beyond your body, go beyond your senses. And the best way to go beyond your body and your senses is by meditating. It has been my experience that meditation takes me to some beautiful places,
to beautiful new realities that is beyond me. So when I started exploring this, when I started exploring how that being humble, being small is actually better than having a big bloated ego. It was a wonderful experience of supporting more people to understand that they can be more. They can be more, and there can be more as well to them. So I believe that in this time that there are more people who come into the state that they are beyond their egos, beyond their materials, then they will automatically gravitate towards love and togetherness. So I would like it that it is the need of this hour, it is the need of today that we meditate together. And through the meditation, we will not only seek out each other, we will also seek our own togetherness and we will grow love together. So with this, I would like to invite the next Evi. Please meet Inaya Gupta. Hello, sir. Namaste. Hello, everyone. I am Anaya Gupta. Thank you, Shriram, for sharing your experiences. I am from Mumbai. I came into meditation first through my mother. My mother, Rinku Gupta, she taught me how to meditate. So I've been on this journey since 2011. And I started meditating. I took up those 40 days of meditation. And then I heard about this GCSS. Everyone told me about this big event called GCSS. And I attended that. That was my first PMC event. And then PSSM. And then I went there. I met so many youth, so many youngsters coming together, everyone, like the entire PSSM, everyone came together for such a big event. It was so good. It was so overwhelming. I met Sahil, I met Mahesh, I met Shiram. They helped me a lot. And recently, so what happened is while after a couple of months, I started going into other healing modalities. A lot. I used to do my anapanasati, but also at the same time, I thought, I want to try my past life, inner child. So I started trying all that, but I realized that I could never hold on to anything. The only thing which stuck with me was anapanasati, which I would practice regularly. And then just recently, just a week or 2 weeks ago, it just happened that I heard a talk about another healing session. And then from inside my inner voice, it just spoke to me saying, you don't need any of this. It just said that you have what you need, what you require. So it was so beautiful. It was so beautiful that I realized you just need yourself. You just need to be with your breath. You don't need anything else. Everything will get healed inside you. Everything. You can heal all your chakras. You can heal all that you want just by being with your breath. Breath is everything. And then yesterday, while I was thinking about this event today, and um, when I sat into meditation and when I came out of meditation, suddenly the message just came to me while I was, thinking about my higher self when I came. And it just came to me suddenly that all our higher selves are one. Like being told that all is one. Yes, I knew it, but realizing it just happened yesterday, and it was such a beautiful realization that all are one. We all are connected to one source.
So believe in yourself and just be with your breath. Thank you. And now I would like you to meet Manisha Agarwal. Hello everyone, I'm Manisha Agarwal and I have been member of Awakened Youths from last 2.5 years, and my journey has been really very beautiful. इतना time ध्यान करने के बाद I got realized that I have become much more aware with myself. I have started understanding myself in a much more better way. ध्यान स्टार्टिंग में wasn't easy for me because मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती थी स्टार्टिंग में. Then I took the 40 days challenge of sitting every day, and with that challenge I made it as a habit of sitting every day for at least half an hour. And from that I did it every day since then. So I realized that how with whomever I talk, whatever I do, I feel that I have become much more aware with myself. And इसी तरह से जो भी मैं सोचती हूँ, I keep checking my thoughts also. Whatever I think, if I check that whether I'm getting more influence towards negative thoughts, एंड उसी टाइम पे आई स्टॉप माई सेल्फ एंड अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देती हूँ कि ना, सो दैट आई डोंट ओवर थिंक ऑन दो सिचुएशंस एंड आई डोंट थिंक नेगेटिव. So this is how awareness has helped me. Through this, I also realized that how acceptance is so important, how it is the key to everything. Because if I won't accept the things, the situations, I will not be able to release from it. I realized that I need to accept the things with whatever is coming into my path so that I can no longer hold it on to. एंड अगर एक्सेप्ट कर लूँगी तो उसी तरह से मैं रिलीज़ हो जाऊँगी उस चीज़ से मैं जान पाऊँगी कि ना मैं क्या चीज़ में गलत थी. एंड फ्रॉम दैट आई रियलाइज़ दैट वेयर आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ. So this is how acceptance helps me. And if we accept the things without any judgment, then it becomes more easy, because where you bring judgment, there you cannot accept it easily. So one more thing which I realized through meditation is self love. How loving yourself completely brings you beautifully start sharing that love, joy, happiness with everyone among yourself, everyone around you. Because if you have accepted yourself truly, then you can love yourself also truly. And once you start loving yourself truly, you know how beautifully you can spread that thing, that you can express that love with everyone around you. So be with more awareness, accept without judgment, and love unconditionally. Thank you so much. And thank you so much, Awakened Youths, which given me this platform, this opportunity to share my experience of all this meditation. And now I would like you to meet the AY Hiraktong to continue this session. Thank you. Hello, I'm Hirak and I'm from Cuttack. I have been meditating since 2007 and the journey has been amazing since there on. Life has been the same as it is to all of us, throwing its challenges and surprises. But all that has changed after meditating is it has changed within me. So after, since I have been meditating, I have the life which I used to live, it has changed completely, and I have realized to value the journey and to live by the moment. So meditation has made me strong. It has made me strong as iron and soft as cotton. So we have to it has made me realize that we are more than this body. We are above this body, and it's been a really amazing journey.
and mm, I'm really very happy to be sharing in this platform, and I'd like to meet our next AY, Geeta. Thank you. Namaste everyone. I'm Geeta Manahalli. First of all, I would really love to thank Patri sir, for what I am today. It's all because of you. Because from my childhood, I have observed myself that I was not like others. Like I was having so many questions, like, why I'm getting the kind of questions that others are not getting. So the journey was going like this. I was kind of an isolated person from family or like friends. So it was in 2012. So I there was a program, Sangeeta Dhyana Mahayagnam, that was happening in Davangere, Karnataka. So I was studying engineering that time. So I just went there. To just check. There was some beautiful music was playing. I just went there and started listening to the experiences. This is what is the beauty of PSSM, I feel. Patricia says meditation, reading books, and sharing experiences. So when you listen to sharing experiences of others, you kind of relate to others, and that's what happened in me also. Like I just started feeling there was a lady sharing her experiences about her emotional ups and downs and how she started healing those. And I felt so interested. And we were around 11 friends went there. It was happening in a school ground. Every one of them left, but I was the only one who was sitting there. And soon after, that girl got out of the stage. I went to her, I spoke to her. I just asked what it is, like, what are you doing? Like you said, like you're doing some meditation. So can you please, teach me about it? And she was so kind. She was so compassionate. I don't even remember her name now, So she just invited me to her home the next day. So she taught me meditation. She gave me some books about thoughts and, a power of subconscious mind. I started reading it. And she even took me to Bangalore Pyramid Valley. And I felt like it is so heavenly. And that's when I started reading more books, which is one of the three important things that happen in PSSM. And I started reading more books, but I never meditated very regularly. And things were good, like because of reading books, I started having a positive kind of mindset. So with that, I used to manifest things. But then uh, the kind of real transformation started happening in me when I started facing my own inner, my own dark side. I started feeling like, fears, insecurities in me, my own inauthenticities. I didn't know what was like, what was like triggering me. Somehow I felt, okay, I have a tool with me. So let me start meditating now. So the more I meditated, the more I started understanding what is happening in me. I felt so, it was so hopeful. Like, without meditation, I don't think like what my life would have been. Because meditation gives you that strong awareness, like what is happening in you. And, as I said, I was reading a lot of books. And so because of my knowledge I have received with those books, I have understood, okay, I have read about this, I have read about these and these things, how to heal myself and stuff. So I increased, duration of my meditation, and things were all good. But still, life always throws challenges at you. And it's not like life is not a stagnant thing. It is a variation. So there are so many unconscious behavioral patterns in you about which you don't know because you live in a surface level. But the more you meditate, the more you meet yourself. This is the beauty of meditation. I feel like uh, many of us go through this. Like, even today, like children are so stressed out.
because of school, homework. There are so many things. Not only children, adults, elderly. Each category has their own challenges. I feel gone were those days like wherein meditation is only for 70 plus people. But then I feel like meditation is for everyone. Meditation is not a option. Meditation is a need. Because I have went through that. I can see myself now, like, life before meditation, life after meditation. I know how I was, like, I was living with fears, insecurities. I didn't know what was happening within me. So only meditation, and only because of the awareness I achieved through the meditation, I would, I could able to sense, oh, okay, this is what is the thing. So then I knew, I was so blessed, and I started feeling so, I started developing lots of qualities, that feeling of, gratitude, the kind of, the kind of experience, the feeling of gratitude, and the feeling of that peaceful mind, and that feeling that you get after meditation is that can be experienced only by the person who meditates. So I feel, so meditation there is no substitution for meditation. That is first point. And and we have to read a lot of books, and that also gives reading books like that gave me a lot of clarity about my own self. I was like, I was getting a lot of awareness, and a lot of how do I say, um, like, the kind of phase I was going through, I meditate, and then I used to get so strong intuition that I should read this book now. So I started reading that book. And again, I meditate, and then I get another strong level of intuition that was developing in me, that guides me from within. So journey is so beautiful. At the same time, it's like it's amazing. It's amazing. I'm so overwhelmed. Everyone should meditate. Everyone should experience this joy. And now I would like to invite Ayushi. Thank you. Hi everyone, this is Ayushi, and I started meditating before 10 months, and today I turned 21, and I think this is the best thing that has happened with me in my 20 years of lifespan. And it actually came to me when I needed it the most. As a teenager, I have faced irritation, stress, anxiety, but the most important thing happened during meditation was I started exploring self-love. And that was the starting point. Like when I started exploring self-love, I started to realize that how important it is. I started to embrace my flaws, my emotions, and everything else. I started to be more aware, and I started to observe my emotion, my thoughts, my actions. It's like I'm watching my own movie. And I used to read books before also, but now when I'm reading it after doing meditation, I'm able to get everything. Like when I'm reading a sentence and I'm able to accept it, and I'm like, oh, I have learned this thing while meditating. Like Sahil Bhaiya has told us this thing, and I already know it. So it has been an amazing journey so far, and I have been to places after doing meditation, it's like I'm going with the flow. Like destiny takes me to places and destiny takes me out of places. And now also, like, I have a lot of things to do, like work on my emotions and all. Now also, by mistakenly, when I judge someone, like I hear a voice saying to me that, oh shit, Ayushi, you are judging him or her. And then I'm like, oh, okay, I need to work on that. And that's all I would say.
Thank you so much. And now I would like you to meet the next AY, Sneha ji. Namaste, everyone. Proceed. Yes. Namaste, everyone. My journey into meditation started in 2017 under guidance of Mother India when I was going through really tough times of my life. But since then, when I got into meditation, my life has changed completely. To be precise, like 360-degree change has come. And all of it has come through meditation. Like I feel gratitude for those tough times which introduced me into this. And since then, the journey to this self-exploration and understanding who I am as a person has started. And meditation for me is being what I am in the most true sense. The answers that I was seeking outside, those reside within me, and all that was required was to connect to my own breath. Meditation has helped me see things clearly and overcome my fears. This very moment of sharing this experience with everyone around is the very proof of it. I have been an introvert, a very shy person, but I was able to overcome this fear all through meditation. There's this particular incident I would like to share with you all. Like we all are searching peace within ourselves. And when we are at peace with our breath, we ask our inner self, like, what is our soul's purpose? And the answer is not very clear. But for me, it happened that 2 days back, I was able to connect with our beloved Patri sir in a session. And I was able to ask him this question, like, sir, how do I understand my soul's purpose? And in very simple words, sir explained that whatever you are doing currently in your life, just go with the flow and be and try to understand, like, what makes you happy. Whatever you are doing, the thing that makes you most happy is your soul's purpose. Just be observant, look forward to it, and you will have all the answers. So friends, keep meditating, be good, do good. And this is what meditation teaches us. It's not our thoughts that have to control us. We need to stop letting our thoughts control us. So friends, keep meditating, be happy, be good, be with yourself, understand yourself. That's all I want to say. Thank you. Thank you, sir, for like introducing meditation to everyone, every soul on this earth. And we express our deep gratitude for this. And now I would like you all to meet our next AY, Pooja. Hello, everyone. I am Bhavya. I have been a member of Awaken Youths since last 2.5 years. Well, my journey has been a lot of learning one. Well, 3 words that I would say they summarize my learning. Forgiveness, fearlessness, and love. Forgiveness, as in, why you think that we think we need to forgive others for their peace, for their well-being. But no, I realized through meditation when I went that I need to forgive others for myself, for my peace. And that's how I changed from that. How do you know that what the change do you need in? That is how
what meditation taught me. And the second one, fearlessness. Well, I fear people. More than swords, I fear people because people can say anything. So, how did I overcome this fear? Through meditation. Um, that is how I'm expressing today in front of you all, and openly I'm expressing my views. And the third one, love. Well, it was actually the most important, and it took almost 2 years, 2.5 years to realize me this, that I had not only to love myself, to love someone, like throughout the life, I love him or I love her. No, I have to love everyone because love is the essence of life. And I'm very thankful to the awakened masters, and I myself thank to help me this recognize this. And with this, I would like to invite our next awakened youth, Nikita Jain. Thank you. Hello, everyone. I am Nikita, and I have been in the spiritual path from last 4 years. My guru once said me about these lines, Jaha sthit saha pragya, which means stillness is necessary for our consciousness and for gaining wisdom, as consciousness is more vital than our knowledge. Meditation has changed my life. I was a very negative person. I was a huge introvert. It helped me to connect with myself and realize what I really want out of my life. It helped me to slow down and breathe as I realized life is very short. It helped me in self transformation. Each and every day, I'm knowing myself a little more and making myself more positive and trying to be more perfect. Now I have learned the art of attachment from detachment and detachment from attachment. Now, gradually, I have started observing things and realizing things in a better way. Now, I'm able to control my anger and I have become a good listener, which is very much necessary and is the essence of life. Meditation is the best solution to reduce the stress and strain. There is a great sense of awareness in me, and I'm developing my innocence. The attachment of my body with my soul has become more strong. Before, I had just learned to adjust, but after meditation, I have started to learn how to adjust and accept. Meditation is helping me to keep myself in contact with the Supreme Power. Lastly, I would like to say, Jo Kyamam Baha Yamaham, which means God assured us that if we meditate, then He will always be with us, guiding us and saving us from all the bad and evil. Thank you for giving me a chance to speak about my experiences regarding meditation. Thank you. And now I would like to meet our next AY, Lokesh Bhaiya. हेलो एवरीवन, नमस्कार। पत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी पिरामिड मास्टर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है, 2 साल हो गए मुझे मेडिटेशन में आए हुए, और मेरा एक दोस्त शशांक ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया था। और मेरा मेडिटेशन में आने का एक ही रीज़न था, वो था क्यूरियोसिटी। मुझे जानना था कि ये जो एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं और ये जो लाइट्स और कलर्स दिखते हैं लोगों को, क्या वो सच है या नहीं। मैंने उसके बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, परंतु कुछ स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक भी मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं घटा, ना मुझे कभी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, ना कभी कुछ लाइट्स और कलर्स दिखे। परंतु एक दिन मुझे ध्यान में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए, और मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि लाइट्स और कलर्स दिखना मेडिटेशन में कोई जरूरी नहीं है। आपको रियलाइजेशन अंदर से होना जरूरी है। अगर जहाँ तक गेम्स का सवाल है, अगर हम मेडिटेशन से मिलने वाली चीजों की अगर एक सूची बनाएं, तो ये सूची नेवर एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मेडिटेशन एक सागर के समान है, और हम उसके बूंद के बराबर की नॉलेज के बारे में जानते हैं। अगर मैं मेरे रियलाइजेशन के बारे में बात करूं, तो मुझे मेडिटेशन की जो शॉर्ट लिव जर्नी में मुझे 2 की रियलाइजेशन हुए हैं। एक हुआ है कि सरेंडर,
कि हमें लाइफ को सरेंडर करना चाहिए। लाइफ जो कर रहा है हमारे लिए वो हमारे भले के लिए कर रहा है। ये जो लाइफ हमारे लिए कर रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है, और हमें लाइफ हर समय कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और हमें उतना अवेयर रहना है कि हमें जानना है कि लाइफ हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा चीज है अवेयरनेस। कभी कभी बीच में एक ऐसा समय आया था जिसमें मैं हर दिन मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था, रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। सो उस समय मुझे लाइफ एक चीज अवेयरनेस ने मुझे ये चीज सिखाया कि without doing meditation every day, how can we be meditative all the time by being aware? हम अवेयर रह के भी मेडिटेटिव रह सकते हैं। अवेयरनेस से हमें ये पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। सो मेडिटेशन से हमें ये सब कुछ रियलाइजेशन मुझे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा यूथ मेडिटेशन में जुड़े, क्योंकि हम यूथ को सबसे ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है, बिकॉज हम सबसे ज्यादा एनर्जीज यूज करते हैं अपने लाइफ डे टू डे एक्टिविटीज में। सो ये कॉन्सेप्ट जो लोगों के मन में है कि ये मेडिटेशन सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए है, ये पूरे की पूरी भूल है, जो मैंने खुद रियलाइज की है, क्योंकि मेरा भी ऐसा एक थिंकिंग था और मैंने धीरे धीरे अपने थिंकिंग को बदला, और अब मेरे को ये रियलाइज होने लग गया कि हम यंग एज लोगों को ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। सो यही बोलते हुए मैं मेरा टॉक समाप्त करता हूँ, और नाउ आई वुड लाइक यू ऑल to meet our next AY, Rishabh. Thank you. Hello everyone, my name is Rishabh Agrawal and I have been practicing meditation since 1 year approximately, and I have started this feeling changes in various aspects of my life from past few months. The major change I want to share is about my immune system, which was very weak because I suffered a minor asthma attack 7 years back, which damaged my immune system, and I became prone to various illness and allergies and diseases. Cold and fever due to climatic change were very frequent, but now it's because of meditation, it is repairing this damage, and I can feel that climatic change has almost no effect on my immune system, and I can feel it is healing from me from the inside. Allergies are also being reduced, and meditation also helped me with my emotional imbalance, as I was very spontaneous and just reacting to the situations. For example, getting sad, depressed, or getting frustrated because of the adverse situation around me. So meditation helped me to keep myself grounded and stay calm in these situations, and not only balancing my emotions, but also releasing it from my inside, the buried emotion which I kept it from the past, which were harming me from the inside. And I can feel that it is clearing myself from the inside now. So in short, I would say meditation has become my friend and who balance my ups and downs. So I would like जिसको भी मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना है वो मेडिटेशन करना पड़ेगा। सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन इफ यू डू द मेडिटेशन यू फील द पावर ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। So now I want you to meet AY Peter. So good morning from Switzerland. Thank you very much for the invitation, and let me share my story. I would say that I'm kind of like self-taught because I come from the Czech Republic, and when I was a teenager, I actually realized I was different, and I hated myself for that. And in that period of time of my life, books were the biggest help. Books that the knowledge helped me to turn 180 degree from self-hatred to self-love. And this is one of my key realization. It's accepting my destiny, accepting whatever it is coming. And I felt also alone, but once I went to university, I started meeting kindred spirits and soulmates, and I realized, oh, I'm not alone. And when we are together, when there is a group of people, like-minded people, it
was a time when I made the giant leap in my spiritual growth as a community with people. And also I realized, like, for me, meditation, the day-to-day life became a meditation. Whatever is coming, I just accept. I don't fight with my fate, with my destiny. It's about finding the inner peace. I think that's also very, for me at least, it's very important to find the inner peace. And many times I got from my life not exactly what I wanted. I never wanted to live in a big city and work for money, and then boom, I got in capital in Prague, and I worked for 5 years for international corporation. I never wanted to live in a cold place, and boom, I live in the middle of the Alps. So I learned that eventually it doesn't matter what exactly is happening, because it's about how I react, how I respond, whether I create positive or negative energy. And the negative energy I can call like ego. It will be always here, but I can deactivate it through understanding. That's also what I realized. It's so important to look on our shadows and just accept them, embrace them, not to try to hide them or fight against with them. And as many of you said, meditation is important. For me, meditation, it's also a time when I can go to nature and I feel connected with myself. After all, how the relationship with ourselves, it's what determines everything. We need to love ourselves first, and then we can love the other people and just expand our love and open our heart. That's what I learned. And when I was a kid, I thought we are on the top of the technical development and nothing can ever change or nothing can be even better. And now we have all these instruments. We can be like instantly connected globally. And I'm just curious what's next. And what I feel also, each of one has the wisdom inside of us. And the next step for the future could be this oneness, connectedness, that everybody, as many of you said, just love each other, open your heart, live in the truth. It's also one of my key understanding, living in the truth. And then we can change the world. We can become the change in the world we want to see. So thank you again for getting me this opportunity to speak up. And now I would like to invite AY Pastor Sarah. Good morning, everyone. I am Astha Saraf. I am into meditation since 2 to 3 years, but it's been a year I am meditating regularly. And I was brought to this beautiful world by my mother, Sarika Saraf, and I really owe to her for bringing me to such a beautiful and magnificent world of meditation. And it has given me many cherishable and profoundable experiences. What I really got from meditation was hope. No matter in whatever situation I am in or will be in my life, I have this powerful tool, a ray of hope called meditation. I realize that I don't need to go to solutions, but the solutions will automatically come to me. The solutions lie within us, and we just need to connect to that breath who brought us to this world. I truly realize that we should focus on what we want rather than giving energies on what we don't. If you suppose you want to be an astronaut, imagine you have become an astronaut with full belief, and it surely got to manifest. What struck me the most in meditation was vegetarianism. I'm a born vegetarian, but there are people who still continue to be killers of animals and consume non-vegetarian items.
but they truly need to be awakened and educated that by killing animals, they are not only destroying the animal life, but also their own lives. So I have made this one of the purpose of my life to spread vegetarianism to each and every house. That's the need of the hour. And this is my message to all the youth striving hard for in the exams, क्योंकि ये मुझे भी बहुत help किया था अपने 10th के exams में. Just be calm, meditate, and surrender to the universe. You're gonna step to a world of peace and knowledge where no negativity can stop you achieve your inner goals. Thank you. Now I would like you all to meet our next AY Bharat Bhaiya. Hello everyone. My name is Bharat and I'm from Cuttack. And thank you so much, Asta, for this invite. And I want to share this experience, my first experience into actual spirituality, you may say. I started meditation around 1.5 years ago. Shashank took me to Awakened Youth's Pyramid Center at Cuttack. And I was meditating and it was normal for around 4 weeks. I felt nothing. And then suddenly there was a realization that I'm meditating and all of a sudden it turned into a gaseous form or air and got merged with each and everything that is there. Means the spirit of oneness is what I experienced that day. And it was a great experience. From that day, my prospects started to change regarding what perceptions I used to keep in my mind, carry with myself. I would like, everyone spoke so amazingly, and I think they covered each and every essence of meditation. But yes, I also want to share something like 3 things. In and out. There's a connection between your inner self and your outer world. Your outer world is your outer self. And the thing is, it's very weird when people do not realize that what it's going inside is actually projecting outside. Say, for example, there is some sort of frustration or anger within yourself. Actually, this is my own experience that what I am sharing with. Do not take it as a statement, but it's my truth. What's happening inside is being projected outside. We have potential energy, and the kinetic energy is what we do and what we receive. There is a great connect between the inner and outer world, and it's by your breath. It's your constant support between you and your outer world, your outer self, I should say. And one more thing that I gradually got to know is by observing myself and observing people around me that using your abilities, it's a very important thing that we should know that wisely using our energies is very, very important. Energies or your abilities in this physical world, because if we misuse it, there will be a karmic ripple effect, and which will hamper only you and your growth process. So it can be done only through one thing, that is thought awareness. Yes, thought awareness. Because thought awareness is very important. What we think, we start to do. And thought and man actually defines you. Thought awareness can be brought in by just one thing, and that's meditation in any form, but meditation. And the easiest of those is Anapanasati, no doubt. You just have to sit, clasp your hands, and just close your eyes, start breathing and observing it. And it has actually helped me a lot in bringing in patience and more things. The third thing that I want to share is energies. See, we cannot control energies. We need to understand this. But yes, those who are able to control them, they must be aware that there might be consequences. So be aware and use it.
we all can do just one thing, and this is a gift from Paramatma or the universe, that we can just flow with the energy. And what Paramatma has given us freedom about is choosing it. It's we who choose the energies we want to flow with. Thank you so much, Awakened Youth. Thank you so much, PMC. And now I would like you all to meet J. Venugopal, RAY, and the Indian in charge of PYMA, a youth organization. Thank you. Hello, all Awakened Youths. Hello, my dear friends. This is J. Venugopal, All India PYMA in charge. I hope you guys are listening to me. Thank you so much, Bharat Kochar. That was a great expression from you. Am I audible? Okay, fine. Continue. Yes, sir. Thank you. Hello, all. This is J. Venugopal, All India PYMA in charge. Bharat Kochar, it was a great expression from you. My dear friends, I would like to express my views about meditation and the awakened youth. We are actually, let me tell you guys about myself. I've been practicing meditation from last 20 years, from the bachpan se main dhyan kar raha hu. When I was started meditation, in the childhood, I was like, I never wanted to do meditation. But when I started meditation, practicing meditation, slowly, I started understanding spirituality. When I started understanding spirituality, I wanted to dig deep into the spirituality. And after some days, because of Patriji and PSSM, I learned a lot of things, and I came to know about so many spiritual masters and read so many books. And finally, I have become awakened. I was aware that I was awakened. So when I came to know that I was awakened, I wanted to spread the meditation. I wanted to spread this spirituality. So then I started teaching meditation to all the youths all over the world, and I started practicing meditation as well as telling the meditation to all the people. So when I started doing that, I even more digged into spirituality, and I came to know many more beautiful things. And all this happened because of only one thing, that is PSSM. Yes, Pyramid Spiritual Society's movement. Thank you so much to Brahmashri Pitamaha Patriji to establishing this beautiful organization where all of us combined and getting together, doing Sajjana Sangatya and gathering at one place and learning spirituality together. We are PSSM equals to oneness. It is giving us a chance to explore spirituality. So we have PSSM to spread meditation. The same way, we all have awakened youths to spread meditation to all over the world. So I would like you all guys to understand about this meditation, and I would like you to know about the importance of awakened youths and Sensei and PYMA, all of the organizations, youth organizations, whatever we have. I would like you guys to involve into such organizations, and like our friend Lokesh said, spirituality and meditation is not only the elder people. It is for youth, younger people like you and me. Younger people are like bridge, like a bridge for children and the elderly people. We can communicate with both of them. So we youth must know spirituality, must practice meditation. And to practice meditation, why can't we come together at one platform, that is Awakened Youths and PYMA, Sensei? We have so many organizations. Wherever you are, you have an organization in PSSM. There is a separate branch for that. So you guys please join in all the youth organizations and let us work together to spread spirituality. Let us bring peace and bring oneness to the world. Thank you so much. With this, I would like you all to invite Mr. Shashank, my dear beautiful awakened youth, to express his feelings. Hello everyone and namaste. A very good morning to everyone. My name is Shashank Parekh and I am from Odisha. ध्यान करते हुए अब मेरे को करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं
एंड काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे मेरे, काफ़ी सारे बुरे भी रहे। कई चीज़ों से मैं सीखा, कई चीज़ों को मैंने वर्कआउट किया एंड सॉल्व किया। बट इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी जैसे हमको पता है कि हाँ, वी नीड टू लर्न एक्सेप्टेंस, वी नीड टू इम्प्रूव आवर अवेयरनेस, हमें ग्रैटिट्यूड देना है, हमको लव स्प्रेड करना है सबके साथ। बट ये सब जानते हुए भी हम डेली इसको अपने लाइफ में क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट एबल टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी डेली इन आवर लाइफ्स? सो ये क्वेश्चन मेरे मन में काफी समय से आ रहा था कि मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, मुझे सब चीज मालूम भी चल रहा है, बट फिर भी मैं इसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। चीजें उस हिसाब से नहीं हो पा रही जिस हिसाब से हम जानते हैं कि वो हो सकती है अगर हम ये चीज करें। तो व्हाट हैपन अ डे, मैं एक बहुत यूट्यूब पे बहुत अच्छा एक सीरीज है बुद्धा के नाम से, आप सबको देखना चाहिए। तो जब मैं वो सीरीज देख रहा था तो फ्रॉम दैट आई केम टू नो दैट बुद्धा वंस सेड कि the knowledge you have is useless until and unless you put it in your daily lives. जो ज्ञान आपके पास है वो तब तक इस काम का नहीं है जब तक आप उसे अपने कृत्य में नहीं लाते। सो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद जब भी मैं ध्यान में बैठता था, आई केप्ट ऑन रिकलेक्टिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। आई केप्ट रिकलेक्टिंग अगेन एंड अगेन इन दिस माई एक्सपीरियंस कि हाँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, उसे मैं अपने लाइफ में डेली अप्लाई करूंगा। बट ये बोलने के बाद भी अब मेरे को ये लगने लगा कि हाँ भाई, अपने ये भी बोल रहे हैं बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना है? तो इसका भी एक बहुत इजी सा उपाय मेरे को अपने आप को जानने को मिला कि जितनी भी छोटी छोटी जगहें हैं मेरे लाइफ के डेली कार्यक्रम में, जो छोटी छोटी हैं, जैसे कि कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे गरीब लोग हैं, हम जाके उनसे स्टार्ट करें। मतलब इंटेंशनली वी कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे कि इतने एनिमल्स है, वी शो आवर कंपैशन टू द एनिमल्स, वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द पीपल हु आर पुअर, जो जिनके पास खाना नहीं है, जो मतलब सबके साथ, सिर्फ उनके साथ नहीं, हर किसी के साथ हम ये प्रैक्टिस करें इंटेंशनली। तो जब हम इंटेंशनली ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करने लगेंगे, लव, ग्रैटिट्यूड एंड प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, जब भी छोटी छोटी चीजें हम इंटेंशनली प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब ये अपने आप अपने कृत्य में आ जाएंगे अपने आप। तब हमें ज्यादा इसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग डेली। सो ध्यान हम रोज करते हैं, हम सारी चीजें जानते हैं, उसके साथ साथ हमें अपने डेली स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते रहना है। एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज जो भी सब ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी डेली। छोटी छोटी जगहों पे एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, स्प्रेड लव टू एवरीवन एंड बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जो आपके पास आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू यू, बिकॉज देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, एवरीथिंग दैट हैज universal law that has meant to happen with you will happen with you। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ जो होना है वही होकर रहेगा। So be in the flow, be in a state of acceptance, be in a state of gratitude and spread love with everyone. From this, I would like to conclude my experience sharing. And now I would like to invite AY Pooja Sharon from here. Thank you. Namaskar. I am Pooja Shoran from Hisar, Haryana. तो अगर ये पानी का ग्लास मैं यहाँ गिराऊं एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ लैक्टोपस, तो आप इसे क्या कहेंगे? मिरेकल, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। पर अगर इसी पानी को मैं पीऊं, इट टर्न्स आउट टू बी मी, है ना? तो हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर कंटेंट है। सिमिलरली जो अर्थ है उसके ऊपर भी 72% वाटर ही है। तो हम में और प्रकृति में कितना सामंजस्य है, हम कितने सिमिलर हैं। यथा पिंडा तथा पुमाने, अर्थात जैसा पुरुष है वैसी पृथ्वी है। तो हमारी बॉडी मिराकुलस है। सिमिलरली जितनी भी इन्वेंशंस हैं, एक बल्ब से लेकर एक स्मार्ट कंप्यूटर तक, सब किसने की है? ह्यूमन बीइंग। वो भी किससे? थ्रू ब्रेन। और वो भी तब जब हम ब्रेन का कुछ ही प्रतिशत इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद भी इतनी सारी इन्वेंशंस हमने कर दी हैं। तो ह्यूमन ब्रेन से बड़ा तो कोई कंप्यूटर नहीं हुआ और इस बॉडी से बड़ी कोई क्रिएशन नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि ये बॉडी जो इतनी मिरेकुलस और सुपर्ब है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा कि इसे कोई हार्म या डिस्ट्रक्शन हो,
फिर खुद को खुद हील कर सके? ऑफ कोर्स होगा. द पावर दैट मेक्स द बॉडी हील्स द बॉडी. बट हमने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया. क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास हो रही चीजों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते. कुछ सालों पहले मुझे भी इस चीज का नहीं पता था. द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू हील. आई वाज नेवर इन्फॉर्म्ड बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट. बट इन ऑर्डर टू वेक अप गाइस, एवरीवन नीड्स अ वेक अप कॉल. और मेडिटेशन बनी मेरे लिए वो. जब संगीता नेहरा मैम ने 2.5 साल पहले मुझे मेडिटेशन सिखाई, आई वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन. बट मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. आई हेट इट लिटरली. बट अब माइग्रेन में सीवियर हेडेक होता है तो हमें मेडिसिन लेनी होती है. तो आई स्टार्टेड मेडिटेशन. तो जब भी मुझे हेडेक होता मैं 10, 15 और 20 मिनट्स के लिए बैठती और मेडिटेट करती एंड इट वर्क. मेरा माइग्रेन ठीक हो जाता. और तब से अब तक मैंने कोई भी पेन किलर नहीं ली है माइग्रेन के लिए. बिलीव मी, कोई भी नहीं. हमेशा मेडिटेशन करती हूँ और ठीक हो जाता है. देन आई रियलाइज दैट मेडिटेशन इज मेडिसिनल. बट बुद्धा सेड every man and woman is architect of their own healing and own destiny. तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है बाहर से कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट लेने की? क्यों हम किसी चीज को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, किसी फॉरेन मेडिसिन को या किसी चीज को, जब हमारी बॉडी के पास इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कैपेसिटी है हील होने की? तो गाइस, हमें करना क्या है? इस चीज पर सिर्फ बिलीव करना है. और हमें इस पर बिलीव कौन करवाएगा? मेडिटेशन. सो ट्रस्ट में गाइस, रिप्लेस योर मेडिसिन विद मेडिटेशन. आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट करिए. और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए. थैंक यू. नाउ आई वुड लाइक यू टू मीट नेक्स्ट सेवाई साहिल भैया. So thank you so much, everybody. Welcome back, guys. I hope you enjoyed the beautiful sharing by all these beautiful masters. What a great message from every one of them. See, this is how, इससे हमें ये पता चलता है कि हर युवा के अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान है. हर इंसान के अंदर दिव्य ज्ञान है. बस उन्हें जागृत करने की देरी है, ध्यान करने की देरी है, फिर ये दिव्य ज्ञान हम सब में है. तो इससे बस यही प्रमाणित होता है कि किसी को भी हम छोटा नहीं समझे, किसी को भी हम कम नहीं समझे. Everybody has been is God. Patrisaka, we are all gods. So we respect everybody's God within them. Meditate and let it out to share with everybody. So with that, I would like to say, Patriji, I would like if you wants to share some words about how the session went and how you felt about it. So if you would like to share something, and then we'll move to the next session. It was wonderful to hear everybody all the way. Every person was wonderful, was giving something new to us. Especially the last person. He said, no doctor, no medicine. See, this body is a great creation. I was very, very happy to hear all these words. Sahil bhai, aap to jadugar hain. I really appreciate all the masters, young masters. Meditation is not for old people like me. No. Meditation is for young people who are going to be Jagat Gurus. Yes, Sahil bhai, aage badho. Thank you so much, Patriji, for such great motivation to us. You are the source of our inspiration, and thank you so much, Swamiji. And now we are moving on to the most very, very important, very beautiful session. It's going to be wonderful. So I will not reveal it. I will now invite Samita to take over the session and invite one of the great masters who's going to be with us today. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Namaste, everyone. Namaste, Patri sir, and namaste, all Pyramid Masters. So honored to be here on this platform. Thank you. मैं भी पिरामिड मास्टर हूँ, समीता फ्रॉम मुंबई, और मैं भी ध्यान करती हूँ सिंस 2012. और मेरी जर्नी भी GCSS से शुरू हुई, बैंगलोर से. और यहीं पर GCSS में ही पहली बार जूडी सटोरी से मुलाकात हुई. माय डियरेस्ट फ्रेंड जूडी सटोरी, और बहुत लोग जानते भी हैं उनको क्योंकि वो बैंगलोर में आती हैं. एंड आई एम सो ऑनर्ड टुडे दैट आई एम वेलकमिंग हर टुडे इन दिस इवेंट. जूडी सटोरी के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, बट मैं कुछ वर्ड्स में कहती हूँ. शी इज लाइक शी इज अ एनर्जी हीलर हरसेल्फ.
She is multi-galactic translator. She's a spiritual teacher. उन्होंने एक book भी लिखी है, Sunshine Before the Dawn. काफी लोगों ने पढ़ी भी है. और she is actually a medium. उनकी जो mission है Earth में, it's very unique. She has been told that she is a multi-dimensional translator, or translator from not just the Earth, but all from the star nations, galaxies, and beyond. तो वो जो translate करती है, she is the medium to help the human potential, to bring that energy, that translation हमारे through, हमारे लिए वो ये translate करती है for the people on earth. And she speaks the language which is multidimensional, which is called light language. हमें वो कुछ words समझ नहीं आते हैं, but she speaks from her voice, from her hand movements, but उसकी जो energy है वो हम महसूस कर सकते हैं. Although we will not understand what she speaks in that light language, but हमें वो महसूस surely होती है. और यही उनका जो mission on earth है वो 22 years से कर रही है. And this is such an honor कि आज मैं उनको invite कर रही हूँ. मैं भी उनके साथ इसी तरह जुड़ी हूँ. And she has become good friends since then. मैंने उनके events organize किए बॉम्बे में बहुत बार. उनके साथ लद्दाख tours किया है. और मैं crystal ball बजाती हूँ उनके साथ, जो कि मैं Pyramid Valley में भी करती थी. तो I feel such an honor to invite her today in this event and let her speak her ideas about it. Or I invite and take this pure honor from PMC through PMC to invite Judy Satori now. Thank you. Is so very critical and important. Any process of change feels uncomfortable as it is unfamiliar and strange to us. Within our lockdown bubbles, we are changing in how we feel physically and emotionally and how we co-create together. We are being asked to ignite our imaginal selves and begin to look at life through new eyes, to create a new vision. We're being prepared to go beyond who we know ourselves to be. The changes that we are experiencing are partly to do with our own personal human experience. But really, what is occurring is part of a much bigger picture of an expansion of human evolution. What we once considered important is for many of us no longer our focus. A desire for inner peace, love, connection, and happiness is becoming the new indicator of success. When we emerge from this time of reset, life will not be the same. But consider this.
Maybe this time of reset is actually being divinely orchestrated, and that breaking through into a new way of being will actually lead us to greater success, peace, love, and co-creation together. As you go through the 6-week breaking through process, you'll be prepared physically and emotionally, supported to move through a personal energy transformation to support your emergence into a new reality. Hello, everybody. It's wonderful to be speaking with you all tonight. And thank you to Samita for your wonderful introduction of me and for your friendship. And I want to acknowledge with deep respect you, Patrici. It's really lovely to be looking at you on the screen. And it's wonderful to be speaking to all of you in India and to be connecting with Pyramid Valley for this evening. This evening here, I'm speaking to you from New Zealand, and it's a great pleasure to be here. Really wonderful. So Samita told you a little bit about me, but I'll just tell you a little bit more. My work with spirit began 22 years ago, and it's been quite a journey of change. What you are all going through and experiencing in your own awakening. And it's so wonderful to see so many young people here joining together because the future of our planet depends on all of you. And when you go into the stillness of meditation, you begin, as some of you shared, and it was wonderful to hear you share. But when we go into meditation, we really tune in to the authentic soul aspect of ourselves. And from that place of going deep within, we can build the true energy and essence of us. So as we gain that wisdom of the authentic being that we truly are and have always been, then we become empowered. My work with spirit is about helping people to open to their true authenticity and helping people to really activate the soul truth inside of all of us. So I've been doing this work for quite a long time, and I was trained by spirit as a channel, like a conduit, to bring energy through my body. And after 5 years, quite spontaneously, I began to speak these rather strange sounding languages that Samita referred to as the languages of light. This language that we can all speak is part of our sacred truth. It's part of our authentic soul self and our eternal soul aspect. So what I can do, you can also do. But the thing that maybe is a little bit different for me is that it's part of my role. You know, we all have something that we've come in this physical body, in this life, to do. And my role in this physical body, in this life, is to bring through energies as a ascension catalyst. This is like energies spoken in very fast frequencies of sound and light and vibration that are designed to activate and open people to what their role and their truth is. So I want to demonstrate this to you. Some of you may know me and some of you may not. I have an Ascension library, and there's many tools there that help people that I'll talk about. Spiritual masters and teachers that have walked this planet. But we also are referring to those unseen ones, those beings of sound, of light, who overshadow us, who guide us on our way, that we may not even know are there. So as I began my work 20 odd years ago, I began to connect to some of those beings. And many of you will have your own connection with them because those wonderful beings of light and love are with all of us. So the first being that really comes to mind and comes into the space here is Tara, the goddess Tara, the Buddhist goddess Tara. And Tara comes to us in her golden aspect, because her golden aspect is like the future Tara,
the future energy that is to come forth upon the planet. Because Tara is the great mother goddess of the earth. And as the great mother goddess, she wants to mother us. She wants to support us. She wants to nurture us. She wants to guide us forward so that all of you and your incredible beings, incredible masters, and in your lifetimes, you're going to do an incredible amount of work and good upon planet Earth. But what is occurring now is that Spirit want to help all of you, all of us, to gain a greater connection with them so that you can all, at a much earlier time, step forward to do what you are called to do. Because when you were born, you came in, all of you, on a much more expanded vibration. And that star-seeded expanded vibration, Spirit are now saying to me, needs to be activated on this session today. So let's begin with this activation with the energies of beautiful golden Tara, Mother Goddess. Moko kalaki celestia, alabaragola belagusoda galabadia, akalakadabadagalasia, akalabadagalabadia bedadia, akalagolagolabadagalabadia, akalakadabadagalabadi gulugulabadaki, mokolagalabadia, salvadagli, istanabadia, gulugulasia, istanabadagalabadia. So what you might feel within your body, and just let whatever happens for you happen for you, because we're all unique. And so these energies are like keys and codes to open time locks within your own soul memory, your own soul's Akashic records, but also within your human DNA, because we've had all these lifetimes where we've been able to do much more advanced things than we remember doing. This life, for all of you who are watching today, is about opening into these more expanded aspects of self and bringing more of the soul knowledge, the soul's authenticity, into your human life today. All of you have certain things that you're being called to do, and this calling is really beginning now, because in 2020, we've already seen unprecedented change on our planet. But 2020 is the sparking or the beginning of a much more expanded energy vibration coming through to the earth. And in the next 13 years, all of us are going to be expanded. And we're going to be being human people in a different way. And we're going to be being these human people, and we're going to be bringing in the star being aspect of ourselves, or the multigalactic spiritual aspect of ourselves, so much more strongly. So Golden Tara, she has a blessing, and her blessing is one of holding us in the palm of her hands, really, like holding us in the light, holding us in the truth and the energy of that sacred knowing that we really are. And as we connect now through the heart, because everything happens through the heart, because the heart is all about love, and love is the key in the way. So as we connect through the heart, we pull through with the love vibration, the energies of the divine, beginning with the support of Golden Tara. So all you have to do really is sit with your hands palm up and just open your heart into as much love that you can muster up and create, and just be with what is, knowing, as some of you expressed, and I was very impressed by what you said, as some of you expressed, life is already planned. Destiny will play out. And all we really have to do is follow the heart, to follow the still small voice within the heart and be guided by the intuition, and then actually step forward, take action and do it. So it's a great privilege to be here talking to you all today, because you've all stepped up, stepped forward, and you're doing it. This energy is just to help you.
So some of you might feel strange sensations in your body. This is just like spirit recoding, spirit opening, spirit activating, spirit getting you ready for your own unique role on the planet. And if you have any questions, you could just type them in the chat box because I can see that. And then I can make sure that I cover anything that anybody needs. But we're going to be having Q&A later on. So now as I sit and I see within my inner sight beautiful golden Tara, like she's not going away, she's stepping back. And who is coming? It is Maitreya Buddha. Maitreya Buddha is now with us. Maitreya Buddha is future Buddha. And Maitreya Buddha is bringing the energy and the blessings of the open heart, of the fully open lotus to us. It's like this 1,000-petaled lotus within the heart is blooming and opening and strengthening and showing itself for all to see. So as you sit in meditation, this is the most important thing that we can all do to grow spiritually, to open into the authentic truth that we are on a soul level. It is in the meditation process that we become still. And as like a still, calm lake, and as we become still, so we become receptive to the promptings of spirit, to the promptings of soul. We settle down from the rough water of our human emotions and our human thoughts. And as the emotional body within us calms and stills, so we can truly open to the energies that are to come. So imagine now that your whole being is going into a deeper state of meditation, the calm, still lake of yourself. You know, when you walk beside a beautiful lake and you throw a stone, a pebble into the water, if it's really calm and still, you'll see a ripple spreading out. If the water is all rough and ruffled, you throw the stone in the water and it doesn't even leave a mark. You can't even see where it went. And this is the difference between someone who meditates and someone who does not. So when we meditate, the calm stillness of our mind allows a receptivity for the energies of spirit to flow in and activate. So just imagine now, even though you're not sitting in meditation, imagine that you are, and just allow yourself to go deep and still, and imagine that you're making your mind like this calm, still lake, and just be. And spirit, God really, source, all that is, it's like a trinity with golden Tara, Maitreya, and source energy, God energy. Golden Tara, Maitreya, source. And then my body is the fourth part, is to anchor this. So my role now is to anchor source energy, God energy, through the auspices of Golden Tara and Maitreya Buddha into you. So you can step forward and you can illuminate and be the illumined master that you are meant to be.
Akulasashtikia. So we're just grounding the energy now. So these energy words that I'm speaking are transmitted automatically through me. It's not a language that I've ever learned or practiced. It's just a language which is transmitted through me as a channel, as a conduit for it. So many of you will know, I'm sure, about this galaxy, this Milky Way galaxy that we are part of. The Earth is a very rather insignificant planet on the outer arm of this Milky Way galaxy. And many of you will also know about the galactic center, the source, energy source of this Milky Way galaxy. But what you may not know is that in the last 7 years, since 2013 to 2020, there has been a profound opening of more energy, more of the source God energy, creation energy, being able to come into the Milky Way galaxy and us on Earth and all of us. We've been receiving more of this very catalytic, stronger and stronger, more accelerated ascension energy. Ascension is not about going up or going anywhere. Ascension is about bringing more of our authentic soul aspect into our physical body. Ascension is also about, to a certain degree, it's about more vitality, a revitalization of the physical body. Because as the energy pathways are opened to receive more of this expanded God energy that I'm talking about, what is occurring is that our physical body revitalizes. So the ascension process is a physical process as well as a process of expansion of consciousness. It's both. And it's really only kicking off now in 2020, much more powerfully. So the energies that are coming through my voice now, which are source energies, are coming from a more expanded God creation energy matrix at the heart of 22 galaxies, which are configured together in a vast multigalactic diamond-shaped grouping, which is interesting in itself because when I started to do the energy work, I was bringing energy from source. I had Golden Tara and Maitreya and me. So it was creating a diamond-shaped pattern. So the energies of source that are coming from this more expanded multigalactic 22 galaxy matrix are coming through to activate us, not just us on Earth, but all life within this Milky Way galaxy and all life within the other 21 galaxies of this multigalactic diamond. So this upgrade, this ascension upgrade, is not just about people on Earth. It's not just about Earth. It's a massive thing. It's a massive advancement for not only for humanity, but for all life within the 22 galaxies of the diamond, all life. And this is why we are all opening up now with more insight to our understanding that we've had lifetimes on other star systems and in other galaxies, and that we are intimately connected with those places that actually help to give us creation. Because years ago, when I first came to Pyramid Valley, I think it was 2012, when I first met Brahmashi Patriji here, it was because I wrote a book called Sunshine Before the Dawn. And I was contacted because of that book. Sunshine Before the Dawn is a book about the creation of the human being and the fact that the human being was created by God, of course, we are God beings, but also created by the genetic input of star races, founding races, guardian races within this Milky Way galaxy who contributed an aspect of their own DNA code, their own genetic makeup to create the human. And so the human was deliberately created around 100,000 years ago by these star nations who were part of a galactic union or a galactic council and deliberately brought to seed the earth
so that in 4 great cycles of Earth precession, which is 4 cycles of approximately 26,000 years, Earth and the beings, the human beings that were created, because Hu is a sound that means of God, the beings, the people that were created as God beings could be activated by energy words of new creation by God to upgrade and advance. And that's exactly what is happening now. You see, we have just begun this new cycle, this 5th great age. This 5th great age is the age of the golden coming. It's like the time of the great return. It's the time of the returning to the truth and the authenticity of who we are. But it's also the time of returning to this more expanded capacity that we all have within ourselves as human beings. And this is the important thing, because within our DNA, our human DNA, there's a lot of DNA which is so-called junk DNA. Scientists understand it doesn't seem to have a purpose within our human genome, our DNA code. But what spirits say to me is it does have a purpose. It just has not been the right time to activate that DNA to express. Because when that DNA that is really there within our human genome, so-called junk DNA, is switched on to expressed by energy words of creation from a more expanded source God energy, there's no telling what is going to happen for us as a race. And we certainly need this now, don't we? We need this activation of our human capacity to be expanded, because we have to step up, all of us, and change our world. Because we see all the changes out there. We see what is happening. We see the fact that there are a small number of people who control the planet and most people who work and struggle throughout their lifetimes. And that is not what the divine intended for us as human beings. The way forward is that people wake up. The way forward is that everybody begins to understand their more expanded soul aspects, and that we unite together to co-create from love, from peace, and from unity together, creating win-win situations and outcomes for all life. And there's very many people who are trying to do this now, but it's like a situation where, as we awaken, each one of us is like a little light. And as we combine our little lights, then we can create wonders and seeming miracles. No one person can do it alone. And that's the most important thing. And so this is why it's so important and so gratifying to me to see all of you young masters come together and share, because this is the seeding, this is the nucleus. And it's wonderful to see Brahmarshi Patriji also, that Pyramid Valley is bringing this energy forward for the young people of India and the planet, because it's absolutely the time to do this. And it's absolutely the time to help people understand meditation, but also to help people understand that our capacity to meditate and become still and go within is what is actually going to open us to the acceleration and the ascension activations and openings, the upgrades and advancement that Spirit want to bring to all of us now. But we have to be ready. And the readiness depends on our capacity to open our heart and to love, our capacity to still our mind and become peaceful, our capacity to get out of our own way. Because we are human beings, but we're also energy beings. We're also souls in a human body for a very tiny amount of time. And during that time, that 70, 80, 90 years that we're in the human body, we have to have fun. We have to enjoy, because our birthright is to be in joy. Our birthright is to be happy, to be well, to be happy, and to live our lives in joy. And that's why
meditation is so profoundly important also, because we can't get to that peace and love and joy unless we can get away from the endless thoughts that go round and round and round in our mind as human people. You know, we've all had many lifetimes in human form on planet Earth. And one of the downsides of that is that we have accumulated a lot of what's called karma. Karma is not really payback, or karma is not terrible things happening to us just by chance. Karma is the energy accumulation of what's called karmic miasmic patterning, which is the energy, the discordant or dissonant, out of pitch energy that has been created within our energy fields, within our chakras, in every aspect of us on a physical and energetic level, and even within our what's called our soul DNA. The soul DNA is like the soul's Akashic records. There's also this out of pitch, off pitch, discordant, incoherent energy there that we call karmic miasmic patterning. And when this vibrates, and it does when we go through change, it starts to vibrate when we try to step out and do something new. It starts to vibrate when challenging circumstances pop up for us in our life. And of course they do, because we're human, and it will always happen like this because that's part of life. It's part of human existence. So if we can understand that this karmic miasmic patterning is like a tape recorder going play, and it's playing the same old tune. And how we know it's playing the same old tune is that we will think and feel and respond to certain situations in our life in the same old way. And this is not just the same old way from our childhood. This is the same old way that tracks us and travels with us from lifetime to lifetime to lifetime. I have an Ascension Library. It's ascensionlibrary.org. And the Ascension Library has many tools for healing and transmuting karma. But what I want to do with you all now is I want to bring through some energies to help you shift very quickly into the states of consciousness that we all want, and we want to have them permanently, which are peace, love, and joy. So we're going to begin with peace. So what Spirit are doing is that they're going to bring through certain frequencies that if there is energy discordancy within you, which is not at the vibratory level of peace, that's going to be taken out. A bit like vacuuming out the discordancy. And then we'll move to the other two, love and joy. So we'll start with peace. We'll remove any aspects of self or soul or fragments of energy that are not aligned with peace. And just be. Put your hands palm up. Akulabali Sedasia, Akulabadi Sedisi, the Belakudi Sarabadi, a Labadi, Akulabadi, Akulabadi, Alakalabadi, Sadakalabadi Sia, oh, Kazeshtaka. So, what I think you will feel, hopefully, is a feeling of just relaxing energy going out. If you do feel this, just write me a little message in the chat box. Makokalaki Sedisia. Akulabadala Kodi Sarabadi, Stanabadi, Akala Stanabadi, Stadasanabadi, Alukolabadi Salakia, Stasokadi, Stasokadi, Akolokabadi Sadishti, Akalagali Standisi, Akalabadi Sanishti Navalesi, Akolakala Lagalakadi Sadakadi, Akalakadi Sadidi, Sakulisia, Akustana de Tokodi. So what you're feeling is you're feeling the spirit with these energy words. It's like a suction. It's like sucking out energy discordancy. It's not really sucking out thoughts. It's more sucking out or removing the energy that at times can vibrate within you when you're challenged.
when you're going through a challenging situation in your life. This is the energy that takes you out of your peaceful, calm state and like ruffling the waters of your being. Ikistanya, 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 Ikistanya. Okulukana Badesa Ikistanya the Badia, Akulistanya the Badia, Okulukana Badagalaistanya, Ekasadik Sabidugala Godesia, Alakulukana Badasadia the Badia, Mysteria. So if you have some water beside you, just drink some water. I will, because we need lots of water when we're running this kind of energy through the body, because water hydrates and it helps the energy, just helps the energy work better through the physical system. So, hope you're all feeling good. Now what we're going to do is we're going to work with any energies that are discordant and not at the vibration of love. For this, you can just put your hands like this, just over your heart chakra like this. And just be, because there's nothing that we have to do. And yes, close your eyes and just feel the energy. It's not me doing this, it's spirit doing this, because of the love and the support that they have for all of us, which helps us know that we are not alone. And sometimes we can feel a bit in our human selves and we feel a bit alone, because all of you and some of you expressed that in your childhood or growing up, you felt a bit out of it, a bit alone, different from others. And the thing is, you are. You are different from others, because not everybody does what you were going to be doing. And it is a lonely road at times, because you are at the advanced guard, if you like. You are at the forefront. You are at the beginning of this surge of energy. And sometimes that is lonely, because some people don't understand this. You do, because you feel it. And you know with your own being. Because you, all of us, including Patricia, we all put up our hands on soul level to be here and do what we've come into this lifetime to do. We probably chose this a long time ago. But this time on the planet is when we've come in to do it, because it is the divine right time for these changes to occur. And so we probably had some training or experience in other lifetimes, many, many lifetimes, where we've stood in the light and supported the light and tried to help people find the light, mainly in themselves. And we've had many lifetimes where, as we have tried to help people find the light within themselves, they haven't understood us. And in those lifetimes, we may have been even killed. And so this is trauma energy. It's karmic, miasmic trauma energy. And this is the energy that's locked away within our being, you see. And when it's locked away within our being, on all levels of our being, when we are tasked to step forward and step out, it goes vibrate, 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 play. And we may get anxious. We may get physical issues coming up because our physical body wants to keep us safe, because last time we weren't that safe. And so these things are what can happen. So now we're going to remove and clear blocks, energetic blocks, to opening into more love, because the more we can open into love, the more spirit, God, source, all that is, the more spirit
can bring the energy through us. You see, if our energy circuitry is really clear and opened unto love, then they can bring the energy through. When we're tight and stressed and anxious and we don't relax, it's much harder for spirit to do their work in helping us, which is also another reason why meditation is so very important, because that's when we relax and we know and we go within and we trust the truth of our own heart and the truth of our own knowing. You see? So let's bring this energy through now to do with the heart and the love. Moko ki senti ki sabe to kusi de siadia ala bala bala si de salbala koda sadadia melaka sela bala kasati ishtanda kazla kia akala kasishta kazda bedestidi akala kala 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 stidi akala kala kala bada kala bada ishtonna bala sadadia akala bada kala de kala bada kazishta ki akala bada kala bada kala bada sida bada kala bada sadadia melaka kala bada sadadia Ogul kalapa 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 they see. Akaka they sat the kadia. Akaka he said ya. Akala castidity. Mokola castidity. Mokola castidity. Ekla sedish ton no kia. Ogulaba de kodans the Belagadi sedity. Akala castidity. Acastidity. Mokola sedish ton nabadia. Okola kalabella sa. Ekisa de sebi goodis to the barista barista badi. A melacolo sage de car Matia. Matia, which in this energy language, Matia is multigalactic language, really. It's translatable, this part, and it means you are loved, you are blessed, and so it is. Matia. You are loved, you are blessed, and so it is. Amen. So just take a big deep breath. And what we're going to do now is we're going to work with joy, to let joy come in. Joy, the joy vibration, when we feel joy, is like a catalyst also. Joy is like being on this super duper sports car, being in this amazing fast car, because it's the fast ascension car. It's the fast car that's going to take us where we want to go on our ascension and human journey to be and do what we're here to do. It's the joy vibration that is the catalyst. So the more we can hold the joy vibration within our being, and we'll go to that piece in a minute, the more the energies of God, of Source, of all that is, can work through us as the energy conduits in the vessels that we are. So the more change we can enact and do and make out there in the world, on the planet. So now we need to clear blocks to joy. This is the karmic miasmic patterning of the past life thought and belief that has shut us down. And as some of you will maybe know, but as you begin to clear this heavy energy, the old thoughts and feelings of what shut you down in the past might come up again. It could affect you physically. I mean, for example, I know I'm going through this process at the moment where I'm being worked with by Spirit to open me up wider and wider and wider as a channel, as a conduit. But in the process, what actually happens to me is little niggly aches and pains come up, because there's aspects of my own physical being where I'm holding discordant energy, incoherency, this karmic miasmic patterning, locked away in the body where I, in past life, had some physical trauma happen to me. And that's true for all of us, but we're all unique. So we're all going to have our own set of physical or emotional or thought-related karmic miasmic clearings. Another way that it can affect you is that you'll suddenly not think in the way that you normally think and behave. And you might revert to old patterns of thinking, old patterns of doubt about yourself, or old patterns where you attract from other people antagonism. They don't understand you even more.
this is all part of the clearing, where you will, as part of the releasing of these old outmoded thoughts and feelings about self, you will have them come up into your face, really. They will come up into your consciousness even more strongly for a time. The way to deal with this is to see these thoughts and feelings as like a paper tiger, not a real issue. It is not you losing where you've gone or what you've gained. You're not reverting into an old time in an old way. What is happening is that the old energy that has been almost hidden under the bed is being exposed to the light of day, and it is leaving you once and for all. So the energy that we're going to transmit now will help this, any emotional vibrations that stop you from being joyful in your life. This is about clearing this, letting it leave you with more ease and more quickly. Akote kesiti kozabeda godalabada sohlakia, mishla kazabedako, nusakola kashtakazia kisisi. Some of you might feel a bit of emotion come up. And this is because as we release this energy that is blocking our joy, we're like connecting to a deeper part of ourselves that we might not have really been able to access. Sometimes there's like, because of all these lifetimes that probably all of you have had, where you've stepped out and tried to hold the light in so many times and in so many situations. There's a feeling of probably tightness in you at times, where the anxiety or the slight stress that you have to do it, like a stress that you know you had to do something really quite powerful and important to life on this planet. I'm sure all of you do. You might not know what that is yet because you're still young, but just trust the process, just surrender, because everything is orchestrated and everything that is going on in our destiny plan, if you like, of the soul, is already written. All we have to do is get out of our own way and follow the still small voice of the heart, what our intuition says. Follow this because it's telling the truth, and step forward and do what our intuition, our voice of the heart, is actually telling us to do. And sometimes that's the hard part, because when we start to do this, we have all sorts of people say, oh no, you shouldn't do this, or we feel afraid or anxious about it. And we don't know at times how to do it. But if we just step forward one step at a time, and that's what's so good about a group of you being gathered together, because you can all support each other in this process. It's really hard to do it alone. So joining together as a group is so very, very vital here, and so very, very important. So let's work now more with the joy vibration. This is about opening to more joy, opening that 1,000-petal lotus of the heart, the love and the joy, and just being. It's not about doing anything, you see. It's just about taking a big, deep breath and just letting go and letting God. Surrender. Total surrender, which is another aspect of meditation. Total surrender. Watching the breath. Total surrender. Mi clear passage lo si media. Ako kalekisa da balaga lisage de koya. Lake said a balaka sadakodi labedia. Mokadaka labadagadi labadi. Ulakadi said a stala kala kush dc. Akalakazi di sadakodia. Akalakazia.
akalakazia, akalakazia. So just be really gentle with yourself. Don't criticize where you're at. Understand that to get from A to B and step out in the way that your soul is destined to do, it's like sometimes 2 steps forward and 1 step back, or you go down one pathway and you have to come back and go down another. That's part of being human. It's part of trusting the process. And so we are all tested, not by any person sitting up there on a cloud testing us, but we're all tested in our capacity to go deeper into our own being by our own soul. And when we are ready, then we are given by our soul, by the soul group that we come from probably also, the green light to step forward and go to the next stage of our development and the next stage of what it is that we have come to do. And this will happen automatically. It's like synchronicities occur spontaneously. Opportunities come to us out of the blue. Just like today, I was invited to speak to you all. This was like an opportunity out of the blue. And so I'm here. But what is this actually teaching me is to let go and let God, because normally I pre-plan what I'm going to say a little bit because I'm human and I like to try to do a good job. But today, Spirit said to me, we don't want you to pre-plan anything. We want you to say namaste and open your mouth and begin. And that's what I've done. So I'm shown by experience to do it a little bit differently and not to let go, to trust the voice of the heart, to trust Spirit to come through. Because we are all channels, we are all conduits for the divine. And when we get out of our own way and trust the process and just do what we intuitively feel to do and say what we intuitively feel to say, then they can do the job that they are trying to do with each of us so much better. You see? So it becomes easier and easier the more we break through really into the vibrations, the triple vibrations of peace, love, and joy. It's like a pyramid. Peace, love, and joy. The way we can do that is also to sit in meditation and just focus, just imagine that there's a beautiful magenta color pyramid. Magenta's purple, pink. And after you do Anapanasati, you could also try this, where you imagine there's a magenta color pyramid above your head, anchored above your head. And you're just reaching up to the triple vibrations of peace. You just create the feeling of peace, reaching up to the vibration of love. And then reaching right up to the apex of the pyramid, which is going all the way up to source vibration at the heart of the 22 galaxies of the multigalactic diamond. And this is joy. Once we reach up with our mind and with our heart and our mind consciously to this vibration of joy, it's like opening a doorway to that joy, opening a doorway to that peace, opening a doorway to that love. And this energy will flood and flow down through our physical body vessel. Just try it. Opening to joy now. Miki salashtan samelakishta samatokodia. Akada kazebeda kalakali sedati. Akalabada kalakalabada stolaki. Ashtikaz shtanamade selaki. Agulugurabade salaki. Akadabadagadabadagalakalagadesadi, Amachtaniki, Shtakazakoliki, Akalakazidikazabadagadabadiki, Akalakazidiki, Zatakazabadi, Akalakalagadabadagadabadiki, Kulakshtanabadi, Akalishtanabadi, Alabadagadishtanabadigalagadi, Akalukudisia, Akalakalagadabadagalashtanabadagadi, Akadabadagalabadagadabadagadabadagadi, Aka, 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 Aka. And take a deep breath and relax.
So what is happening now is that we're being prepared divinely by God, by Source, by all that is, and we are supported by many beautiful beings of light. Light beings on the earth in human bodies, and light beings off the earth and throughout the 22 galaxies of the diamond. Because they're preparing us for upgrade and advancement. So what might this upgrade and advancement mean for us, or look for us, or look like for us in the years ahead? We're just beginning this more expanded and accelerated ascension cycle in 2020. It's interesting that we have all been locked down in our homes, that the earth is going through unprecedented changes right now. It's shaking people up. It's all of us have had to look at life the way we know it and see the life the way we know it is changing, and we've had to adapt to that. We are adapting to that. You know, this virus was not made by God, but we have been pushed into a adaptation process where we've been forced by circumstances to look within. We've been forced by circumstances to reach out to the people in our lives more, and to our communities, and to support the people in our communities more. The desires that we have for success, money, etc., have had to be questioned. And we've had to come back to the heart. Because we've had to realize that it is through the heart. It is through the creation of a win-win methodology, an energy of supporting all people and dealing with the problems that this planet faces, climate change, ecology, etc., that humanity can actually bond together as a human and soul family and advance. It's all of you who are watching today who are part of that wave of helping that advancement. And I'm profoundly grateful for all of you and the younger people of this planet who are opening and awakening and activating and stepping forward. Thank you. And Spirit thanks you too. And they have a blessing for all of you so that you really feel the strength of your own worth, so that you really understand the soul that you truly are and why you've come here and why you've been born where you've been born, into the families that you've come into. And how important it is that the light begins to stream out from all the countries of the earth, through the people of the earth and the young people of the earth who are beginning to remember, because all of you came to the earth with this more expanded sense of knowing of who you are. And now is the time to truly trust and feel into this knowing and to open yourselves to God, to Source, to the infinite oneness of all of creation, to be and do what you have come to be and do, with strength, with heart-centered power. So a blessing. Ikli kasaj la koisania simedia, malili shtusi mi samalosh tistin media. Ala la 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 sadi, mola sadi stan na kodi, ala la 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 saduk shlosi mishtot la kalas media. Ala la 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 hujla san media servalada kodi, ala la la media moshta sabdi salgaista de deshtka. Ikalaka sedistan de la kasiki,
Alabadishtan Belakazilistaka, a Makalisa Distan Abadia, a Kolakazidi, Mashtan Baladi, Mishtan Abadi, a Kalakalakalisa Distan Nakoyaka, Aka, 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 Aka. The ka is ancient Egyptian word for the physical body, the ka. And our ka, our physical self, is changing to accommodate the energies that are now wanting to come through, as it is meant to be. So thank you. Thank you. And I feel now I talk with Sahil. He's going to moderate questions now. Thank you, Sahil. Thank you so much, Judy. It was simply a mesmerizing session to hear you. I feel everyone can just go back to these sessions of yours and just listen to it when they are meditating. You know, it's like a meditation in itself. You know, it's so much to observe in every word that you say, every word that you emit. It's so much of energy, and it was truly experienced, Judy. It was a blessing, and I'm so grateful that I'm able to moderate this session. I'm already feeling a little different right now. Great. Yeah. Thank you for reaching out to me and inviting me. And Brahmashi Patriji, thank you for hosting me in Pyramid Valley so many times. It feels like my soul home, actually, truly. And I was very disappointed not to be able to come when I was in India last year when I fell over and hurt myself. So maybe another time in the future would be wonderful. Thank you. Thank you. So before we move to the questions, we would like Patriji, if you have anything to share and ask Judy, then we can start from you, and then we have some questions. As I see you, there is a violet band across the whole screen. Yes, well, that's not my computer. I've never seen that before. It's energy, Yeah. I think. Yeah. Yes, it's interesting. Right above across my head. Yeah. Right from morning I'm here, but I'm only seeing when you have come onto the screen. I know. I've never seen it on my Zoom calls before either. So it's just tonight here. Yes. Something is happening and we are receiving it. Definitely. And something's also, like I said, something's also happening to me beyond. Something's really happening to me also during the process. I'm well aware of this. That I'm well aware that I was meant to be speaking to all of you today for a more profound reason than I might understand right now, actually. Because, you know, every time I've been in Pyramid Valley, it's been a massive awakening and opening for me on different levels. And so I feel that this link into Pyramid Valley today is also a big opening for me in terms of my own work in what I'm meant to be doing in the years ahead as well. And that's what I think this band of energy across my body is about. So thank you. It's interesting. Thanks for bringing this band of energy across the screen. You're welcome. You brought it. I brought it. Yeah. Well, I've done a lot of Zoom calls and I haven't noticed it before. So it's just new today. So we'll see what happens. So Sahil. Yeah. So if anybody wants to ask a question, then please raise your hands in the Zoom app. There's an option to raise your hands in the chat section or in the participant list. If you raise your hands, I'm going to bring you in with that. Okay. As people take time to raise their hands, we have already a question for you. So the question would be, how does the pyramid structure play the role in our human evolution, and do they have any significance with interconnectedness with the intergalactic civilizations? Definitely it does, on both counts. So the pyramid
is a metaphysical, to do spirit, metaphysical vehicle of transformation. It's to do with the Trinity. That's why we had peace, love, and joy. Because when we create that pyramidal structure, we actually transform. And so when you sit inside the pyramid to meditate, it is a catalyst for your own awakening and your own opening. It's like an energetic catalyst. When fruits and vegetables are grown underneath the pyramid, I know there's been experiments with that, the plants grow much better. So it is an energetic catalyst for transformation. Perfect. So do we see pyramids in other civilizations also? Do they use the energy of the pyramid in other civilizations? Yes, they do. And when I wrote the book Sunshine Before the Dawn, I saw it, and every word that I wrote was transmitted. I heard it in my head, like someone speaking to me, and I wrote it down like I was taking dictation. And I saw pictures. It was like a movie unfolding in my head. So on Sirius, I saw that the character Isayenya was living in a house which had a pyramidal structure, like a pyramidal, had a normal ground floor and had a pyramid at the top, and there were stairs that went up to the pyramid. And so the pyramid structure was very important because of the energy, you see. And she lived in a place called the Mountains of the Morning Star. And the Mountains of the Morning Star sort of were in this green mist, because the green mist was like very powerful regenerating energy, powerful regenerating mist. We also see, apart from the pyramid, there's the Fibonacci spiral, which is also about creation. And also on Sirius, the Syrian Council, the council chamber of the Syrian Council was like a Fibonacci spiral unfurling front as it started at the top and it went all the way down to the speaker's podium in the bottom. So these are signs of nature. They're signs that they're examples of God's creation, and they come across in nature all the time. The three and the Fibonacci spiral, and we see it in a nautilus shell as well. So I think that answers the question. Right, that's beautiful. Thank you so much. That's a beautiful answer there. So I'll invite Shashank to come on board and ask his question. So he's going to be coming on and asking his question, which he has said. Okay. So hello. The session you had right now. Hello. So the session was really very awesome. Completely, I felt the energies you passed on to us. So, like, my question is, like, as we came to know from this session that we have intergalactic beings all around. We can experience them all around. As you said, they share their energies with us. They help us in our spiritual evolvement and many other aspects. So my main question is, what are the key emotions or feelings which we have to overcome to experience their energies completely, to receive their energies completely? So thank you, Sachank. The key emotions or feelings that we need to overcome are doubt. Doubt, not trusting ourselves when we get inspiration or when we feel something. It's about really following those feelings. When we get words in our head about a book we should read or somewhere we should go or someone we should see, follow those gut feelings. If you feel good about it, if it feels expansive to you, then it's probably your intuition or your higher self or even spirit talking to you. So the key thing that we need to overcome is lack of faith and trust in ourselves as people, in ourselves, and then lack of faith and trust in God to support us, really, spirit to support us. It's what we mostly need to overcome. And there's a whole raft of human emotions like anxiety, doubt,
fear. But this is really dealt to when we just keep on walking forward. In my Ascension Library, which is ascensionlibrary.org, there's many very powerful tools and programs that Spirit have brought through me in the past 10 years or so, and I've put them in the library because the Ascension Library was set up as a library, really, where you can take a program out, you listen to it online, you don't take it out anywhere, but it's like going into a public library and taking a book. You choose where your heart is wanting you to go. Samita mentioned Ladakh. We have a program there called Search for the Golden Tara. In Search for the Golden Tara, we met Golden Tara's energy today, but the Search for the Golden Tara program is video and it's audio, and it was actually created live with the people that Samita and I took to Ladakh in 2018. So when you go on that virtual journey to Ladakh, and you do go over the high passes, the high mountain passes, it's as if Golden Tara is guiding you forward. And you will go through quite a profound shift when you work with that program. She's helping to usher you into your future, as is Maitreya, future Buddha. It's time, it's their energy, it's their time, it's their essence coming forth now. Not necessarily at this time as human people in human bodies, but as lights leading us forward. See, hope that helps, Shashank. Yes, thank you so much. I really feel connected to the answer, and this connects me to a line that I have read once in a book, and it goes like, trust and you shall receive what you seek for. Exactly. Trust, and it's in the Bible as well. Jesus Christ said, like there's what you sow, so you reap, which is like the actions that we take, the things that we sow, we reap the good from. Also about, Jesus spoke about the faith of a mustard seed. When you have the faith, like the little grain of a mustard seed, this is what grows. This is what we need. It's that holding on to that faith and trust of ourselves most, of all of us as being, we've had many lifetimes where we've done so much more than we think we can do now. And we just have to reconnect to that knowledge and that ability. And this is what Ascension is actually going to be doing for us in the next 13 years as well. There's so many things that all of you will just spontaneously be able to do in the future that you honestly don't know you can do now. And it will just happen spontaneously. And the catalyst really to make it happen is letting go of doubt and surrendering and stepping forward, allowing this pebble, if you like, to be cast upon the waters, the still waters of our own mind, and opening the heart into love and consciously creating the vibrations of peace and consciously creating the vibrations of joy. Because there's a saying, you may have heard it, fake it until you make it. Fake it until you make it means if you sit every day at the end of your meditation and you consciously create that magenta pyramid of peace, love, and joy, and you deliberately feel the emotion of joy and create it as strongly as you possibly can, then we will become more of that emotion of joy. See, it's what we follow, the threads that we follow lead us to where we want to go. See, we can be the creators of our own reality because we all have a mind. We all can think. We all can create emotion, energy in motion. And as we create the emotion of energy in motion, so we go towards that vibration in all of our life, in all of our being, in every aspect of who we are. We move towards that vibration of peace, love, and joy. See? Thank you so much for this beautiful sharing. I'll surely work upon my doubts. Thank you so much.
Thank you. All the best to you. All the best to you. Thank you. That's beautiful. Thank you so much, Judy. That's a beautiful answer. I guess doubt is all we have to. So the key is doubt. I mean, you have to let go of doubt. So excellent. We have another question from Geeta Manhali. She asks, how to connect with our spirit guides, how to invite them to help us for our progression. Okay, so let me teach you how to connect with spirit. It's not as difficult as you might think, because you're already connected up with spirit, you see. And this is also about going into the stillness of the heart. So if you just shut your eyes, I'll just talk you through a very simple process. Okay? And just put your hands crossed over your heart chakra, because the first step is love. The first step is the deliberate creation of the love vibration within the heart. So just feel this love energy within the heart and deliberately create it. And just let this beautiful bubble of love that you're creating within your heart chakra, see it spread out around your body and flow out through your auric field. See it as beautiful rose pink in colour, like a beautiful pink bubble of love that you're sitting within. So expand it out about 3 feet around your body, this love vibration. And you'll probably feel your body start to tingle and grow warmer. And that's a sign that you're opening to channel, that you're opening to spirit. Now I want you to imagine that you're reaching up with your mind, just like you're taking your mind up in an elevator. You're reaching up with your mind to the light of spirit. You're reaching up to the spiritual realms, to the light of God, of all that is. So just as you take a breath in, just imagine on every in-breath that you're going up like you were going up in an elevator, and you're going right up to God, right up to spirit, to the spiritual dimensions, more expanded reality for us. So on every breath, imagine that you're going higher and higher to the realm of spirit. And now I want you to imagine, just with your inner sight, that in front of you is a beautiful golden doorway, like a beautiful, huge golden doorway. Behind that door is a more expanded connection with spirit for you. Behind this door is an expanded world of light, of love, of peace, of great blessings for you. And just ask within your heart whether you wish to walk through this golden doorway into the light, into this more expanded light. And if you feel ready, imagine that you're gently opening this door, or it might just swing open automatically, and you're walking into the light. And as you walk through this golden doorway into the light, imagine that you're calling to you the highest level guide who is aligned to you from the light, the highest level spiritual guide who is aligned to you from the light, to come forward to greet you now. And just let whatever happens happen. Don't judge the process or yourself. Ask again in your mind for what you want to have happen, which is the heart to greet you. And just wait with your mind like a blank TV screen and feel and see with your inner sight what you feel and see. Trust the process and trust yourself.
It is the birthright of every human being to be able to do this with ease. You are worthy of whoever has come to you. That's why they have come to you. And just allow whatever is happening to happen. And ask whoever it is to strengthen the connection between you and the realm of spirit, now and forever. To make it easy for you to connect again and again whenever you choose, for your upliftment and your human and spiritual advancement. Take note of how you feel and how expanded you feel right now. And know that in 3 simple steps, you can come here again. You don't have to create the golden doorway anymore. You just go to the light. And the light will come to you. So thanking Spirit. And coming back down into your normal reality now. Bringing with you all that is beneficial and supportive for you from this experience. And great blessings and much love. Amen. Oh, Judy, the answers to your question is only energy, and it is profound. It's profound. I could really feel the connection with the light, and I could feel the being and the tower of light that is connecting with that source of light that we went through after the Golden Gate. And I was feeling a lot of things. It was amazing, and it's such an important. Geeta has already said thank you. She's saying thank you right now for the beautiful session that she's received it and she's felt it herself. And so with that, there's another master called as Naga Srinivasa. He would like to ask that question himself. So I'll just bring him online. Thank you. Thank you. Hello. 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 Namaste. Naga, hi. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. During your session, I felt terrific energies. It's unbelievable. 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 The energies I felt every moment. Even still, I could feel those energies. So, my question was how to get connected to the higher self, or the source of energy or the God. I think that was my question. So it was your question, that question. So how did you get on when we did that process? Did you connect to any specific being or just energy? Just like that. Energy, like a feeling of energy. Only energy. Yes. So it's, you see, when I learned to channel 22 years ago, but we've moved on since then. So it's not necessary to get a name of a being anymore, you see. It's more about just connecting to source, connecting to expanded light. That's all it is really now. And so, and the catalyst and the key and the gateway in is really love, as you discovered. We all discovered. Love is the key in the way. Love is the entry point. And so when we create that feeling of love, which is pretty easy really for all of you, and expand that love around us, and then
reach up to the light of God, that light of God just automatically comes down. See? So that's all we really have to do. And then we can ask questions and you'll get answers, because you all have beings of light around you to help you get answers. Is that okay, Naga? Thank you. Okay, Naga had another thing that he wanted to ask, is that his body vibrates a lot. Like right now, his body vibrated a lot. So is that happening for a particular reason? It's even happening now. So can we help him in any way to That vibration is just, that vibration, Naga, is just an indication that you're very open to the energies and you're very sensitive to the energies. My body vibrates too. It's nothing to do with how spiritual we are. It's to do with how wired up we are and how receptive we are to the energy. It's nothing to do with ascension or whether we are evolved or not evolved. The feelings that we feel are nothing to do with our spiritual capacity. The feelings that we feel are to do with our soul experience through many, many past lives. And you're very open to the energies because your soul in other lifetimes has been like a sage, like a energy master. See? And you are now, I think. And so you know your body is wired up, very open to the energies. My body does the same. Thank you. That's a very, I guess that kind of validates him very well, and I'm sure he's have his answer now. So now there's another master named Jeevandhar. Jeevandhar, if you are there, if you can on your camera now, and I'm gonna you are now. You can ask. Hello. 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 Namaste. Namaste. Ma'am, after listening you, actually while listening you, I went to deep sleep. First of all, and then after listening you, I'm feeling to go through the book Sunshine Before the Dawn once again. Is it because of your energy or really it is my soul feeling, ma'am? Well, I feel when I wrote Sunshine Before the Dawn, I'm sort of re-editing it at this time because I feel that there's new information that needs to be brought into the book now, because I first wrote the book in 2011 and it was published in 2012. It's just, I've always just put it out through my, you can, it's on my website. I think it's in the library. So it's a book which is a catalyst and a key to awakening. And because we're at this new time of awakening in 2020, it needs to be slightly altered and upgraded because it's designed to be a catalyst to awaken. And so as we're being awakened in a more expanded way now, that the energy behind the words of the book needs to be slightly altered. That's what I'm doing this year, altering it. Thank you. Thank you. And there's also other stories to come. Like there's other stories of beyond the beyond. There's other stories of the multigalactic diamond that are to come now. I think there's probably 5 at least books. I just have to write them. Thank you so much. Thank you so much, madam. And we are really looking forward and extremely excited to receive those books. I mean, I'll be the first person. I'm sure there's so many of us here who would be would just wait for the book to come and they'll just get their hands on it. So that's amazing. And so now we have, I guess, last 2 questions. So one important question that I feel is, what is the most significant work that needs to happen in the planet Earth, or that we all need to do for mass contact to become easier, for physical mass contact to become easier? I don't know this myself, so I'm going to ask Spirit to say, okay, what is the thing that we need to do? And they're saying, open the heart, be loving. You know, they won't come near us while there's mass consciousness of people who are scared. So it's have no fear, open the heart, be loving, understand that they're not ETs, that they are us. You know, we are an aspect of them. We are all co-created. We're all created
we're created in a human image. They're created in the image that's appropriate for their particular environment or their particular planets or star systems or even galaxies. But they are still of God and they are still of the same heart. You know, in Jesus Christ talks about, in my house there are many mansions. And he could be saying, in my house there are many mansions, meaning in the galaxies there are many different places where there is God created life, spirit created life, and we look different to them. So we have to get over the feeling of alien, seeing beings from other star systems or other galaxies as aliens. They're not aliens. They're same as us, just in different body configurations. Just like people on the planet have different skin colors, we're the same. And so we need to understand that we are the same as them. And when they feel this opening, this welcoming of the heart, then they will come closer to us. It's not quite the time yet, though. Really? Yes, it is. It is. Thank you so much. I guess that says the most important question, that we have to be more accepting, more loving. And when we are open to receive these beings as friends, as families, then yes, I'm sure they will land better. So it will show up. You see, this is one of the reasons I was asked to write Sunshine Before the Dawn, is to help people understand the bigger picture of human creation. Yes, because once we do, we realize that we are not alone here on this planet. And we realize that we are the same as them, just in different types of bodies for the earth bodies. See? Exactly. Yeah, I mean, I guess that's so important. And I guess PSSM and we personally as Awaken Youth also are taking this up on ourselves, that we inform people about the extraterrestrial existence and normalize the awareness about them, because they are simply friends and they're waiting for us to open the doors for them. So thank you so much. Thank you so much, Judy, for being such a beautiful door. I mean, as long as people who are unable to connect, but you are being a door for all of them who's able to receive these wisdoms, these guidance, these perceptions of a higher dimensional reality, and the energies that you share. Everything word that you said was significant, and every energy that you emit is so tangible. Everyone who listens to your light language will for sure does experience it in the core of their being. So thank you so much, Judy. And I would like to tell everybody that Judy already has a 6-week open free session for people who want to log into her session. She already has a ascensionlibrary.org. This is where it is. People can log into ascensionlibrary.org and join in for the free 6-week course for ascension. So it's going to help her. Yes. It's going to help you guys ascend and the vibrations. And she has a 6 weeks free session. So people, please join in, make the most of this session. And you can also explore her library for free, which she was talking about, the Ascension Library. So guys, log in and make the most of her offering. Yes, thank you. So what you can do with the Breaking Through series, it's a transformation process that after we went into lockdown around the planet, Spirit asked me to bring forward. And it's really important, I feel, and I've been told, to get it out to as many people as possible. And you just register by going to ascensionlibrary.org on the homepage and just put your name and your email in, and you're automatically registered for all of the sessions. And you can catch up. This coming week is the 3rd session, but you can catch up at any time. It's not time sensitive. This is a process of energy alchemy. It's a bit like the eggs that the butterfly lays on the leaf, and then the caterpillar eating the leaf to get the energy for transformation, for going into the chrysalis, and then going into the chrysalis. And a process of alchemy is going to happen to everybody in the stage of the chrysalis, and then coming out like the butterfly just sitting on the leaf, drying its wings, and then flying off. So this whole Breaking Through series, which can be done at any time, not necessarily over the next few weeks, so that though I am taking a weekly program, which is on Thursdays at midday New Zealand time, which is probably quite early in the morning for people in India. But if you register, you can get the replay, even if you can't listen live, and you can just listen to the replay.
if you register, you'll go direct to the landing page of this program, this series, so you can read all about it there. There's a lot of information about what it's going to do, how it's going to do it, how it can support you. But it's a process of metamorphosis, really, complete change. And it's designed for 2020 to get people over the hurdle to really start to run in this ascension process, really, and to step up more quickly and to do what you're here on this planet to do more quickly with greater ease. That's what it's about. Yes, and it's a great gift by Judy Satori. So it's a gift from her because it's free, and so people can register in it. It's a 6-week session, and so people must make sure you use it, because I logged in and I tried. So you can also look into the back sessions, even the sessions that happened in the past. You can log into that and you can see those sessions and then catch up with her, because she's doing it every week for the next 6 weeks. So make the most of it, guys. And I just also wanted to say that Samita, who introduced me, she is the person in India who represents the Ascension Library. So if we could just talk to Samita briefly again, she can help people in India. You can bring her in. Yes. She is. She's here. There she is. So. Hi, Judy. Hi, Sahil. Hi. Yes, so Ascension Library, I think Judy has already told most about it, and it is really a gift, and it's so nice that she has come up with this library. As she said, it's like getting the book and we can read anything. So especially we were talking about it, how we can get people from India also to connect to your library, and we had this in the when we did the Golden Tara group, what she was talking about in Ladakh. And that's how we got the idea that let's put all this Golden Tara group at one place so people can access, because we recorded the whole tour. And that's how we thought that this library, if you put it, people can access from wherever they are, and the library can be the thing. So we come up with especially for the India group. And she has so wonderfully accepted that this library has a membership. And if you log in on the links that you will be shown now, and if you log into the links, there is a link to even connect to the India group of people. So the membership is around $33, but Judy has very nice of her that she told me that we'll have a special price. As I said, we can have a special price for India to join the membership, which is just 1,700 rupees. So it's really nice that you can connect to the library and access, and you can download, like you can hear, of course, the MP3s of her, all that she has put in the library. It's like amazing. And people who are using already in India, there are many of them already into it. And they are really grateful because it's like a gift from Judy. So please access the library, use it, or any questions you have regarding the library or being the membership, I'm here in India. You can connect with me on WhatsApp. I can explain you how you can get into the membership and help you to connect and be the part of the library then. So thank you, Judy. All to you. Thank you, Samita. But just want to also say that there's two things. There's the Ascension Library, and it's a membership library, but there's also the Breaking Through series, which is free to everybody. You do not have to be a member of the library to access that. And also in the Ascension Library, there's quite a lot of free material there as well, which you can explore. So the membership library is like an Ascension catalyst. It's to help people get there quicker, basically. That's all. Yeah. Thank you so much, Judy. That is for sure very significant. Thank you, Samita, too. And I'm sure every content in that is significant. And thank you so much, Judy, for this beautiful time. We will for sure make the most of what you have to offer in the website. And we've already experienced the greatest bliss in this session. Thank you. Thank you so much, Judy. Thank you so much for having me. Bye. Thank you. Bye.
So thank you everybody, guys, who've tuned in. We're going to break for lunch. We're going to be breaking for a quick lunch. So I'll see you all guys by 2. So 2 p.m. we're regaining the session. So post lunch, we're on back with you. So till then, see you and have a quick lunch and come back, because we have amazing Odisha masters who are going to be sharing their experience from 2 to 3. So hang on for that. Thank you so much, guys. Everybody. See you. सांस को अपना है, ध्यानी बन जाए। 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 सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। सृष्टि के आरंभ में था लोगोस, महाविस्फोट, प्रारंभिक ओम। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार भौतिक सर्पिल ब्रह्मांड एक अकल्पनीय गर्म और सघन एकल बिंदु से प्रकट हुआ, जो विलक्षण कहलाता है। पिन की नोक से करोड़ों गुना सूक्ष्म। क्यों और कैसे, ये स्पष्ट नहीं। कोई वस्तु जितनी रहस्यमय हो, हमें लगता है हम उसे जान गए हैं। ऐसा सोचा गया कि अंततो गत्वा गुरुत्वाकर्षण या तो विस्तार को धीमा करेगा या ब्रह्मांड के लिए विकट स्थिति पैदा करेगा। लेकिन हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन की छवियों से पता चलता है कि ब्रह्मांड के विस्तार में वास्तव में तेजी आई। जो ये महाविस्फोट से बाहर आया, इसमें तेजी से विस्तार होने लगा। पता नहीं कैसे, पर ब्रह्मांड में भौतिकी के पूर्वानुमान से कहीं अधिक द्रव्यमान है। लापता द्रव्यमान की खोज में भौतिकविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल 4% परमाणु खनिज है, जिसे हम सामान्य खनिज कहते हैं। ब्रह्मांड में 23% अविज्ञ पदार्थ हैं और 73% निष्क्रिय ऊर्जा है, जिस पर पहले हमने रिक्त स्थान के रूप में विचार किया था। ये अदृश्य तांत्रिक तंत्र की तरह है, जो सभी वस्तुओं को संबद्ध करते हुए समग्र ब्रह्मांड में संचालित होता है। प्राचीन वैदिक शिक्षकों ने सिखाया कि नाद ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। कंपायमान क्षेत्र समस्त मूल आध्यात्मिक अनुभव और वैज्ञानिक अन्वेषण का आधार है। ये ऊर्जा का वही क्षेत्र है जिसे संतों, बुद्धजनों, योगियों, मनीषियों, पादरियों, शमन और मठवासियों ने अपने भीतर खोजकर महसूस किया। इसे संपूर्ण इतिहास में आकाश, प्रारंभिक ओम, इंद्र का रत्न जाल, खगोल का संगीत,
और न जाने कितने हजारों अन्य नाम दिए गए। ये सभी धर्मों का आधार है। और ये हमारे भीतरी और बाहरी दुनिया की संपर्क कड़ी है। तीसरी सदी में महायान बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड विज्ञान की जो व्याख्या की गई है वो आज की उन्नत भौतिकी से भिन्न नहीं है। इंद्र का रत्नजाल अति प्राचीन वैदिक शिक्षा को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक उपमा है जो ब्रह्मांड की संरचना को स्पष्ट करता है। देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य को जन्म दिया और वायु एवं जल को गतिशील बनाया। मकड़ी के जाल की कल्पना कीजिए जो सभी दिशाओं में फैला होता है। जाला ओस की बूंदों से बना होता है और प्रत्येक बूंद में जल की अन्य सभी बूंदों का प्रतिबिंब होता है और प्रत्येक प्रतिबिंब ओस की बूंद में आप अन्य सभी ओस की बूंदों का प्रतिबिंब देख सकेंगे। उस प्रतिबिंब में इसी प्रकार पूरा जाल अनंत सीमा तक फैला होता है। इंद्र के जाल को स्वलिखित ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहां प्रकाश की क्षणिक झलक में भी पूर्णता का एहसास होता है। सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को कभी कभी 20वीं सदी की खोज करने वाले व्यक्ति का श्रेय दिया जाता है। टेस्ला प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की खोज तथा कई अन्य सृजनों के लिए विख्यात थे जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। प्राचीन वैदिक परंपराओं में अपनी रुचि के कारण टेस्ला पूर्वी और पश्चिमी मॉडल दोनों के माध्यम से विज्ञान को समझने की अद्वितीय स्थिति में था। सभी महान वैज्ञानिकों की तरह टेस्ला ने न केवल बाहरी संसार के रहस्य को गहराई से देखा बल्कि अपने भीतर की गहराई में भी झांका। प्राचीन योगियों की तरह टेस्ला ने स्वर्गिक अनुभव को वर्णित करने के लिए आकाश शब्द का प्रयोग किया जो सभी वस्तुओं में प्रसरित है। टेस्ला ने योगी स्वामी विवेकानंद के साथ अध्ययन किया जिन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा को पश्चिम तक पहुंचाया। वैदिक शिक्षाओं में आकाश स्वयं में शून्य है, वो शून्य जिसमें अन्य तत्व भरे हैं जो कंपन सहित उपस्थित रहते हैं। दोनों अभिन्न है। आकाश यिन है और प्राण यांग। एक आधुनिक संकल्पना जिससे आकाश अथवा प्राथमिक अस्तित्व की अवधारणा का हमें पता चल सकता है वो है अंश की अद्भुत कल्पना। 1980 के दशक के बाद ही कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति ने प्रकृति के ढांचे की गणितीय कल्पना कर उसे वास्तविक रूप में पहचानने का हमें अवसर दिया। फ्रैक्टल अर्थात अंश शब्द का गठन 1980 में गणितज्ञ बेनॉइट मेंडलब्रॉट ने किया जब उन्होंने कुछ गणितीय समीकरणों का अध्ययन करने पर पाया कि एक सीमित दायरे में दोहराने पर वो अंतहीन गणितीय अथवा ज्योतिमितीय रूप में बदलती हैं। वो सीमित हैं लेकिन साथ ही अनंत भी। एक अंश एक स्थूल ज्यामितीय आकार है जिसे अनेक हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक लगभग संपूर्ण आकार का संक्षिप्त प्रतिरूप है। एक गुण जिसे समरूपता कहा जाता है। मेंडलब्रॉट के अंश को ईश्वर के अंगूठे की छाप कहा जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लं गं गणपतये वरवरदः सर्वजनमेव शिवाय आप प्रकृति की स्वयं निर्मित कलाकृति देख रहे हैं। यदि आप मेंडलब्रॉट की आकृति को एक विशिष्ट तरीके से घुमाएं तो ये किसी हिंदू देवता अथवा बुद्ध के समान दिखाई देगा। इसे बुद्ध ब्राट आकार नाम दिया गया है।
sarvajanam me vashamaya swaha. यदि आप किन्हीं प्राचीन कला और स्थापत्य कला के रूप में देखें, आप पाएंगे कि मानवों ने जमाने से सौंदर्य और पवित्रता को फ्रैक्टल पैटर्न के साथ जोड़ा है। अत्यंत जटिल, फिर भी कण कण में उसकी पूर्णता का बीज है। फ्रैक्टल यानी अंशों ने सृष्टि और इसकी संचालन प्रक्रिया पर गणितज्ञों का दृष्टिकोण बदला है। आवर्धन के हर नए स्तर के साथ मूल से भिन्नता उजागर होती है। जब हम फ्रैक्टल के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पारागमन करते हैं तो सतत परिवर्तन एवं रूपांतरण घटित होता है। ये रूपांतरण ब्रह्मांडीय सर्पिल गति में होता है, दिक्काल के सांचे में सन्निहित बुद्धिमता। Om Shrim Rim Klim Lam Gam Ganapati Vara Vara Sarvajanam Me Vashamaya Swaha. फ्रैक्टल यानी अंश सहज रूप से अस्त व्यस्त, शब्द एवं नियम से भरपूर हैं। हमारे मस्तिष्क किसी आकार को जब पहचानते या परिभाषित करते हैं तो हमारा ध्यान उस पर यूं केंद्रित होता है मानो वो कोई वस्तु हो। हम आकारों को देखी गई सुंदरता के अनुरूप ढूंढते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क में इन आकारों को बनाए रखने के क्रम में हमें शेष फ्रैक्टल्स हटा देने चाहिए। फ्रैक्टल्स को चेतनाओं में समाविष्ट करना, इसका संचालन सीमित करना है। ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा तटस्थ, शाश्वत, आयामहीन है। हमारी अपनी रचनात्मकता और आकार की पहचान, क्षमता, सूक्ष्म जगत एवं ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। लहरों का शाश्वत जगत और ठोस वस्तुओं का जगत। चिंतन की स्वाभाविक सीमाओं में अवलोकन करना एक सृजनात्मकता है। हम वर्गीकरण द्वारा नाम देकर चीजों के ठोसपन का भ्रम पैदा करते हैं। दार्शनिक कीरकेगार्ड ने कहा, यदि आप मेरा नाम रखते हैं तो आप मुझे नकारते हैं। मेरा नाम रखकर, वर्गीकरण कर आप उन सभी अन्य चीजों को नकार देते हैं जिनकी मुझ में होने की संभावना हो सकती है। आप कण को नाम देकर उसकी वस्तु के रूप में व्याख्या कर देते हैं। आप उसके अस्तित्व को परिभाषित कर उसका सृजन कर देते हैं। सृजनात्मकता हमारी सर्वोच्च प्रकृति है। वस्तुओं के सृजन से ऐसी स्थिति बनती है जब चीजों में ठोसपन का भ्रम हो। आइंस्टाइन पहला वैज्ञानिक था जिसने महसूस किया कि जिस अंतरिक्ष को हम शून्य मानते हैं वो ऐसा है ही नहीं, उसकी विशेषताएं हैं। अंतरिक्ष की प्रकृति अथाह आंतरिक ऊर्जा से भरपूर है। प्रतिष्ठित भौतिक शास्त्री रिचर्ड फैनमैन ने एक बार कहा, अंतरिक्ष के अकेले क्यूबिक मीटर में इतनी ऊर्जा है कि विश्व के सभी महासागर उबल सकें। गंभीर ध्यानी जानते हैं कि अधिकतम ऊर्जा मौन में है। बुद्ध के पास इस तात्विक सार के लिए एक और शब्द था जिसे उन्होंने कल्प कहा, जो सूक्ष्म कणों या तरंगिकाओं की तरह हैं और प्रति सेकंड खरबों बार उत्पन्न व लुप्त होती हैं। इस अर्थ में वास्तविकता स्वलिखित फिल्म कैमरे में तेजी से गतिशील फ्रेमों की श्रृंखला द्वारा सातत्य का भ्रम पैदा करने के समान है। चेतना के पूर्णतया स्थिर होने पर यह भ्रम समझा जा सकता है, क्योंकि ये चेतना ही है जो भ्रम को संचालित करती है।
पूर्व प्राचीन परंपराओं में सदियों से ये समझा गया है कि सब कुछ कंपायमान है। नाद ब्रह्म ब्रह्मांड ध्वनि है। नाद शब्द का अर्थ है ध्वनि या कंपन और ब्रह्म ईश्वर का नाम है। इसके साथ ही ब्रह्मा ब्रह्मांड या ईश है और ईश सृजक है। कलाकार और कला अभिन्न है। उपनिषदों में, जो कि प्राचीन भारत के प्राचीनतम मानव जाति के अभिलेख हैं, ये कहा गया है, कमल पर बैठे सृजक ब्रह्मा के नेत्र खुलने पर जगत अस्तित्व में आता है। ब्रह्मा के नेत्र मूंदते ही जगत का अस्तित्व मिट जाता है। प्राचीन रहस्यवादियों, योगियों और ऋषियों ने माना कि चेतना का मूल एक आधार है। आक्षिक क्षेत्र अथवा आक्षिक अभिलेख, जहां विगत, वर्तमान और भविष्य की सभी जानकारियां, सभी अनुभव अस्तित्व में हैं और सदा रहती हैं। ये वही क्षेत्र अथवा आव्यूह है जहां से सभी वस्तुएं प्रकट होती हैं। उपपरमाणु अणुओं से लेकर आकाश गंगा, नक्षत्र, सितारे और समस्त जीवन चक्र तक। आप इसे समानता में कभी नहीं देख पाते, क्योंकि ये कंपन परत दर परत पर बना है और निरंतर परिवर्तनशील है। आकाश से जानकारी का आदान प्रदान कर रही है। वृक्ष जल ग्रहण कर रहा है। वर्षा तथा पृथ्वी से वस्तु के भीतर और बाहर ऊर्जा का संसार संचालित है, जिसे हम वृक्ष कहते हैं। जब विचारशील मस्तिष्क शांत हो तो आप यथार्थ को वास्तविक रूप में देखते हैं। सभी अवस्थाएं एक साथ, वृक्ष एवं आकाश और पृथ्वी तथा वर्षा एवं सितारे पृथक नहीं। जीवन और मृत्यु हमारी अपनी या किसी अन्य की पृथक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पर्वत और वादियां अभिन्न हैं। अमेरिका की आदिवासी तथा अन्य देशज परंपराओं में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में जीव है, जिसे अन्य तरीके से कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु स्पंदनशील स्रोत से संबद्ध है। सर्वत्र एक चेतना, एक व्यापकता, एक ऊर्जा विद्यमान है। ये व्याप्ति आपके आसपास नहीं, बल्कि ये आपके माध्यम से घटित हो रही है और आपके वास्तविक स्वरूप के अनुसार घटित हो रही है। आप ब्रह्मांड का अंश हैं। आप नेत्र हैं जिनके माध्यम से सृजक स्वयं को देखता है। स्वप्न से बाहर आने पर आप महसूस करते हैं कि स्वप्न में सब कुछ आप ही थे। आप इसे सृजित कर रहे थे। तथाकथित वास्तविक जीवन अलग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु आप हैं। प्रत्येक नेत्र की चेतना दृष्टि, प्रत्येक चट्टान के नीचे छिपे प्रत्येक अणु के भीतर तक देखती है। CERN कण भौतिक शास्त्र की यूरोपियन प्रयोगशाला के अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानकर्ता इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, जो सभी वस्तुओं में विद्यमान है। लेकिन इसके भीतर झांकने की बजाय वो बाहरी भौतिक संसार देखते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के CERN की प्रयोगशाला में अनुसंधानकर्ताओं ने घोषित किया कि उन्होंने हिग्स बोसन या ईश्वर कण खोज लिया है। हिग्स बोसन के प्रयोगों ने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया कि अदृश्य ऊर्जा फील्ड अंतरिक्ष का शून्य भर देती है। CERN का बड़ा हेड्रॉन कोलाइडर 17 मील की परिधि में है, जिसमें 2 किरण पुंज विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं और प्रकाश की गति के निकट एक साथ टकराकर नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने देखकर जाना कि प्रचंड टकराव से क्या हासिल होता है। मानक मॉडल ये पता नहीं लगा सकता कि अणुओं का द्रव्यमान कहां से आता है। प्रत्येक पदार्थ कंपन से निर्मित दृष्टिगोचर होता है।
लेकिन कोई चीज कंपित नहीं हो रही होती। लगता है मानो कोई अदृश्य नर्तक ब्रह्मांड की नृत्य नाटिका में छिपकर छाया नर्तन कर रहा हो। अन्य सभी नर्तक हमेशा इस छिपे नर्तक के आसपास नृत्य करते हैं। हमने नृत्य की नृत्य कला देखी, लेकिन अब तक उस नर्तक को नहीं देख सके। तथाकथित ईश्वर गण ब्रह्मांड का आधार तत्व का गुण सभी पदार्थों का अंतःस्थल है, जो उस रहस्यमय द्रव्यमान एवं ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को संचालित करता है। लेकिन ब्रह्मांड की प्रकृति की व्याख्या करना तो दूर की बात, हिग्स बोसन की खोज ने बड़े बड़े रहस्य साधारण रूप में प्रस्तुत किए, जिसने वो ब्रह्मांड उद्घाटित किया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यपूर्ण है। विज्ञान चेतना और पदार्थ के बीच की सीमा रेखा के सन्निकट है, वो दृष्टि जिससे हम प्रारंभिक सिद्धांत का क्षेत्र देखते हैं, और वो दृष्टि जिससे क्षेत्र हमें देखता है एक ही है। जर्मन लेखक और विद्वान वुल्फगैंग वॉन गोएथे ने कहा है, तरंग आदिकालीन तथ्य है जिससे विश्व उत्पन्न हुआ। सिमेटिक दृश्य ध्वनि का अध्ययन है। सिमेटिक शब्द ग्रीक के मूल शब्द साइमा से बना है, जिसका अर्थ है तरंग या कंपन। तरंगीय तथ्य का गंभीरता से अध्ययन करने वालों में प्रथम पश्चिमी वैज्ञानिक अर्नेस्ट श्लाइनी 18वीं शताब्दी का एक जर्मन संगीतज्ञ एवं भौतिक विज्ञानी था। श्लाइनी ने खोज की कि धातु की प्लेटों पर रेत फैलाकर वायलिन गज से जब प्लेटों को डुलाया गया तो रेत स्वतः प्रतिकृतियों में व्यवस्थित हो गई। उत्पादित कंपन के आधार पर भिन्न भिन्न ज्यामितीय स्वरूप दृष्टिगोचर हुए। श्लाइनी ने इन रूपों की समूची तालिका रिकॉर्ड की, जिन्हें श्लाइनी आकृतियों के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इनमें कई प्रकृतियों को समग्र प्राकृतिक विश्व में देखा जा सकता है, जैसे कछुए या तेंदुए की चित्तियों की प्रतिकृतियों के निशान। श्लाइनी की प्रतिकृतियों या साइमेटिक प्रतिकृतियों का अध्ययन एक गोपनीय विधि है, जिसके माध्यम से उन्नत गिटार, वायलिन और अन्य वाद्य यंत्रों के निर्माता वाद्य यंत्रों की ध्वनि गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। हैंस जेनी ने वर्ष 1960 में श्लाइनी का कार्य आगे बढ़ाया और ध्वनि नैरंतर्य को विकसित करने के लिए विभिन्न द्रव्य एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धकों का प्रयोग किया एवं सिमेटिक्स ध्वनि का सृजन किया। यदि आप जल में सामान्य तरंगों की ओर दौड़ते हैं तो आप जल में प्रतिकृतियां देख सकते हैं। तरंग की आवृत्ति के आधार पर विभिन्न तरंगित प्रतिकृतियां दृष्टिगोचर होंगी। आवृत्ति के बढ़ने पर प्रतिकृति जटिल होती जाएगी। इन स्वरूपों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन ये बेतरतीब नहीं होंगी। जितना अधिक आप इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपको इस बात का एहसास होगा कि किस प्रकार तरंग पदार्थ को साधारण दोहराव वाले तरंगों से जटिल रूपों में व्यवस्थित करने लगती है। इस जल तरंग की प्रतिकृति सूर्यमुखी फूल के समान है। मात्र ध्वनि निरंतर्य के परिवर्तन से हम विभिन्न प्रतिकृतियां पा जाते हैं। जल अत्यंत रहस्यात्मक द्रव्य है। ये अत्यंत संवेदनशील है, अर्थात ये कंपन प्राप्त कर सकता है और उसे रोक कर रख सकता है। अपनी अत्यधिक गुंजायमान क्षमता तथा संवेदनशीलता एवं गूंजने के लिए आंतरिक तत्परता के कारण
जल सभी प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया देता है। प्रदोलित जल तथा पृथ्वी से अधिकांश पौधों तथा पशुओं के समूह का निर्माण होता है। ये देखना सरल है कि जल में किस प्रकार साधारण प्रदोलन पहचानने योग्य प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को सृजित कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें ठोस पदार्थ मिलाते हैं और उसके आयाम को बढ़ा देते हैं, तो वस्तुएं और भी दिलचस्प हो जाती हैं। पानी में कॉर्नस्टार्च मिलाने से हमें और मिश्रित तत्व हासिल होते हैं। कदाचित जीवन के सिद्धांतों को भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि कंपनों से कॉर्नस्टार्च चलते फिरते जीव में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मांड का जीवन सिद्धांत उन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बड़े धर्म में वर्णित किया गया है जो इतिहास में तत्कालीन समझ को प्रतिबिंबित करता है। एकांश की भाषा में कोलंबियन पूर्व अमेरिका में मानव शरीर के लिए अल्पा कमास का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवंत पृथ्वी। कबाला या यहूदी रहस्यवाद में ईश्वर के दिव्य नाम का उल्लेख है, वो नाम जिसे उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसे इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये एक ऐसा कंपन है जो सर्वत्र है। ये सभी शब्दों, सभी पदार्थों में है। पवित्र शब्द ही सब कुछ है। चतुष्फलक सर्वाधिक सामान्य आकार है जो 3 आयामों में अस्तित्व में है। कुछ में भौतिक वास्तविकता के लिए कम से कम 4 बिंदु होने चाहिए। त्रिकोणीय संरचना प्रकृति की केवल स्वनिर्धारित प्रतिकृति है। पूर्व विधान में शब्द चतुर्वर्णी ईश्वर के कुछ एक प्रकटीकरण के लिए प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। इसे तब प्रयोग किया गया था जब ईश्वर के शब्द या ईश्वर लोगों या प्रारंभिक शब्द के विशेष नाम से बात की गई थी। प्राचीन सभ्यता जानती है कि ब्रह्मांड की आधारभूत संरचना चतुष्फलक आकार की थी। इस आकार में प्रकृति साम्य शिव के लिए आधारभूत प्रमाण प्रदर्शित करती है। हालांकि इसमें परिवर्तन के लिए आधारभूत प्रमाण शक्ति भी है। बाइबल में जॉन सिद्धांत में सामान्यतया आरंभ में शब्द था पठित है, लेकिन मूल पाठ में प्रयुक्त शब्द लोगो था। ईसा पूर्व लगभग 500वें वर्ष में विद्यमान ग्रीक दार्शनिक हरक्लीटस ने लोगों का उल्लेख कुछ आधारभूत अज्ञात के रूप में किया। सभी पुनरावृत्ति, पद्धति और स्वरूपों का उद्भव। हरक्लीटस के उपदेशों का अनुसरण करने वाले निर्लिप्त दार्शनिकों ने ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य जीवंत सिद्धांत के साथ इस शब्द का पता लगाया। सूफीवाद में लोगों सर्वत्र है और सभी वस्तुओं में है। ये वो तत्व है जिसमें अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। हिंदू परंपरा में शिव नटराज का शाब्दिक अर्थ है नृत्य सम्राट। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की धुन पर नृत्य करता है। सभी कुछ स्पंदन से ही ओतप्रोत होता है। केवल जब तक शिव नृत्य कर रहे हैं तभी तक संसार विकसित और परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा सब कुछ समाप्त होकर शून्य हो जाएगा। यद्यपि शिव हमारी चेतना का साक्ष्य है, शक्ति संसार का सार है। यद्यपि शिव ध्यान मग्न है, शक्ति उन्हें संचालित करने का प्रयत्न करती है जिससे उन्हें नृत्य में उतारा जा सके। यिन एवं यांग की तरह नर्तक तथा नृत्य का अस्तित्व एक है। लोगों का अर्थ है अनावृत सत्य। जो लोगों को जानता है वही सत्य को जानता है। छिपाव की कई परतें आकाश के रूप में मानवीय संसार में अस्तित्व में हैं, जिससे स्वयं के स्रोत को छिपाते हुए वो जटिल संरचनाओं के भंवर में फंस जाता है।
लुका छिपी के दिव्य खेल की तरह हम हजारों वर्षों से छिपते चले आ रहे हैं और खेल को पूरी तरह से भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी खोज की जानी है। बौद्ध धर्म में प्रत्येक को अपने लोगों को सीधे महसूस करना अर्थात ध्यान के माध्यम से अपने भीतर परिवर्तन या नश्वरता के क्षेत्र का पता लगाना सिखाया जाता है। जब आप अपना आंतरिक संसार देखते हैं तो आप सूक्ष्म संवेदनाओं और ऊर्जा को देखते हैं और मस्तिष्क अधिकाधिक कुशाग्र व आत्म केंद्रित होने लगता है। अणिका के प्रत्येक अनुभव या संवेदन के आधारभूत स्तर पर नश्वरता के माध्यम से व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। एक बार हम अनुभव कर लेते हैं कि एक ही क्षेत्र है जो सभी धर्मों का सामान्य रास्ता है, तो हम किस प्रकार कह सकते हैं मेरा धर्म या ये मेरा मौलिक ओम है, मेरा क्वांटम क्षेत्र है। हमारे संसार में वास्तविक संकट सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक नहीं है। हमारे संकट चेतना के संकट हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाने की असमर्थता, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकृति को पहचानने की असमर्थता। बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व जागृत बुद्धि प्रकृति का व्यक्ति है। ब्रह्मांड में बोधिसत्व हर प्राणी को जागृत करने में सहायता करता है, ये अनुभव करते हुए कि चेतना केवल एक ही है। किसी के वास्तविक स्वरूप को जागृत करने के लिए व्यक्ति को सभी को जागृत करना चाहिए। विश्व में असंख्य सचेतन प्राणी हैं। मैं उनकी जागृति में सहायता करना चाहता हूं। मेरी अपूर्णताएं असंख्य हैं। मैं उन पर विजय पाना चाहता हूं। धर्म अज्ञात है, मैं इसे जानना चाहता हूं। जागृति का मार्ग अप्राप्य है, मैं इसे पाना चाहता हूं। मैं सुशीला भावसिंह उड़ीसा से हूँ। मैं अपने गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी पितामह को बारंबार नमन करती हूँ और सभी मास्टर लोगों को, पिरामिड मास्टर को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। हमारे गुरु पत्री जी मेरे जीवन में आए आज से 10 साल पहले, उसके बाद से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जीना बहुत आसान है। जब वो आए थे तो मैं भुवनेश्वर गई थी। उस समय मैं बहुत टेंशन में थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, और हर समय मेरे अंदर भय और डर रहता था। जब मैं पहले शुरू में गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ध्यान क्या होता है। मैं ध्यान के बारे में जानती नहीं थी। मैं केवल धर्म और सत्य के बारे में जानती थी। पर जब मैं वहां गई, ध्यान उन्होंने करवाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन आने के बाद फिर मनीष भाई मुझे आके ध्यान कराने लगे, तो मैं 2 दिन 4 दिन बाद में ही मुझे सब दिखाई देने लगा। रोज नए एक्सपीरियंस होते, फिर मुझे बहुत आनंद आने लगा और धीरे धीरे मैं ध्यान में डूबने लगी और मेरे अंदर से जो भय था वो निकल गया। वो मेरे अंदर जो भय बरसों से था, वो भय मेरे अंदर से निकल गया
और जो मेरा डर था वो बना रहा। उसके बाद जीवन में एक तूफान आया। उस तूफान के लिए मैं प्रिपेयर तैयार थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत आशंका थी। मैं ध्यान में उस तूफान के पतझड़ को देखने लगी। मुझे समझ आ गया कि क्या होने वाला है। और जब वो तूफान आया तो मैंने उसे बहुत आसानी से झेल लिया और वैसे ही खड़ी रही। फिर पत्री सर मुझे वाइजैक में गई, वहां पे मिले। वो किसी और से कह रहे थे, 300-400 आदमियों के बीच में वो मुझे देख के हाथ पकड़ के ले गए, एक जगह बैठा के बोले कि अब आपका काम है कि अब आप ध्यान सिखाइए। मैं सोची कि ध्यान क्या सिखाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे ध्यान सिखाऊं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, कैसे ध्यान सिखाऊंगी, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं यहाँ आके 8-8 घंटा 6-6 घंटा ध्यान में बैठने लगी और अपने अंदर डूबने लगी। तो मुझे समझ आया कि हमारे अंदर सब कुछ है, हमारी सारी शक्तियां सोई हुई है, लेकिन हम उन्हें जगा नहीं रहे हैं। जब मैं ध्यान के अंदर डूबी रहती, 8 घंटा 6 घंटा बैठी रहती, तब सारी शक्तियां जागृत होने लगी और मेरे अंदर का भय और डर ऐसे ही चला गया। मुझे समझ आया कि ध्यानियों के लिए कोई तूफान नहीं होते हैं। ध्यानी हर समय तूफान में भी वैसे ही खड़े रहते हैं और वो पतझड़ की तरह आते हैं और एक हवा का झोंका लगता है और सर के ऊपर से चले जाते हैं। उसके बाद से मैंने अपने जीवन को ध्यान के लिए ही समर्पित कर लिया। अब दिन भर मैं ध्यान के लिए ऊपर बैठी रहती हूँ। जब सुबह 2-2.5 घंटा, शाम को 2-2.5 घंटा, कोई आया ऊपर, कोई आया ऊपर। अब मुझे बहुत आनंद आने लगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि तेरा जीवन तो ध्यान ही है। और जब मैं पत्री सर के पास भुवनेश्वर गई तो मैं 4-5 गोलियां खाती थी और मैं बहुत कमजोर थी। मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं तुझे भी क्या हो जाएगा। और 4-5 दिन के बाद में ही मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। 2-3 साल के बाद में मैंने सब दवाइयां बंद कर दी और आज मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। अभी भी मैं पूरी फिट रहती हूँ, 10 से 12 बार ऊपर नीचे करती रहती हूँ और मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। मुझे समझ आया ध्यान की गहराइयों में डूब के अगर आपको आनंद चाहिए तो आप अपनी ध्यान की गहराइयों में जाइए। न मुझे किसी से शिकायत है, न मुझे किसी की बात से मतलब है, केवल मुझे ध्यान ही ध्यान अच्छा लगता है। और जीवन में इतनी शांति आ गई कि जो कुछ है ये बहुत शांत है। हम ही उसको क्रिएट करते रहते हैं, हम ही जबरदस्ती से लगे रहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ। सभी कुछ अच्छा है। सभी बहन भाइयों, मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया और मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, नमस्ते कर रही हूँ और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मिलते रहें। और अभी भी मेरे ऊपर एक बैठे हैं मास्टर, ध्यान कर रहे हैं पिरामिड में। अभी भी पिरामिड में लोग आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं ध्यान पिरामिड में जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, उनके साथ मिलती हूँ, बात करती हूँ, मुझे बहुत आनंद है। मेरा जीवन तो पत्री सर ने पूरा सुधार दिया। जिस जीवन का डर मुझे खाए जा रहा था कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, लेकिन वो डर मेरे अंदर से पूरा निकल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री सर को भी मेरा बहुत धन्यवाद। Me? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିମଳ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର। ସବୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କ
सानिध्य प्राप्त होती आज पर्यंत ए यात्रा रे अनेक अनुभूति अनेक घटना घटी मत बहुत खुशी लगुच जे भली एक आयोजन है जहा फल कि सारा भारत वर्ष सारा विश्व आज ए मुहूर्त एक हो सब मास्टर सहित आम परस्पर अनुभूति शेयर कर पारुचे थैंक्स टू PSSL थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स तो ब्रह्मर्षि पत्रिजी सहित जो मोर प्रथम साक्षात होता भुवनेश्वर रे मु ध्यान विषय रे जदियो अल्प किसी धारणा मोर थिला मु छात्र अवस्था किसी ध्यान करूथली जितेबाला ब्रह्मर्षि पत्रिजी सहित एयरपोर्ट रु भुवनेश्वर को आसिया व्यवस्था होता है से पछरे बसी था तो बाटर एमती कथा छल कहली जे गुरुजी आपण जो कार्य करुछंती ए जो महान कार्य विश्व निश्चित भाव बहुत बड़ा मंगल को जाऊँगी से सी मत कहले हठात अच्छा ये रास्ता ए छकर ना कौन मुझे छकर नाटा कहली से कहले स्वामी जी आपण जदि छकर ना जानी एवं मते कहीदेले कौन सी विशाल काम नुह आपण जानी कहले ठीक से भाई मु जानी गुरुजी कहते मु जानी ध्यान कौन मु अनुभव कर ध्यान महात्मा कौन एवं मु जानी ध्यान सारा विश्व को आवश्यकता अच्छी बर्तमान तो सत कथा केते महान केते अति साधारण भाषा रे से कथा कहीदेले केते गोटे विशाल काम करुछंती एवं आज सारा विश्व आनापान सातिमय हो जाइछि आज सारा विश्व शाकाहारी हवारे प्रयास करुछि आज सारा विश्व पिरामिडमय हवा को जाउछि महान से गुरु महान से पत्री जी तेणु मु कहबी जय पत्री जी जय ध्यान ओडिशा जय ध्यान जगत एवं जय शाकाहार मूवमेंट तो अनुभूति कथा जदि आम कहबा जीवन रे ध्यान पूर्व अवस्था एवं ध्यान पर अवस्था भितर आकाश पाताल तफात गोटे ध्यान दृष्टि रे जहाँ घटुची सब गुड़िक घटना वर्तमान जो पैंडेमिक चली जो कोरोना भाइरस ये भी चली जो भय जो आतंक अन्य मन आतंक हो पारे गोटे ध्यान दृष्टि रे ये सब घटना परी आउ गोटे घटना ये बड़ा आश्चर्य लगे मत जो समस्ते पैनिक समस्ते भय रही आम आम घर बस ध्यान करुचु आम भीतर आलोचना चलती मो विशेष सहित जे प्रकृति को मतलब एत भय हवा आवश्यकता अच्छी मु कहली पत्रिजी भाषा रे सजाग रुह सचेत रुह विचारक हबार आवश्यकता नहीं सत कथा कहा लॉकडाउन को भली हेतिबो किंतु निश्चित भाव में सब ध्यानी भाई भौणी मैंने उपलब्धि करथिबा जे लॉकडाउन बोध हुए आउ गोटे सुजोग आमको देला निजर अंतर्यात्रा को आउरी डीप को नहीं जावा पाई बहुत अनुभूति हेची बहुत ध्यानी भगवान ईश्वर रूपी मास्टर्स एवं भाई भौणी मान सहित सहित शेयर भी आमर हेची गोटे छोट उदाहरण देवी मो जीवन में घटी आज की पाखापाखि 5-7 वर्ष तले मो फैमिली सहित जाइली थाईलैंड से गोटे समुद्र भितर गोटे पैराशूट बोट रे जीव पिला को बंधा हम पैराशूट रे पैराशूट को ऊपर नहीं जीव तापर से बुलेब तलू आनब ये गोटे
ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ଥାଏ। ସେ ଖେଳରେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କଲା। ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଥାଏ ସମୁଦ୍ରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ। ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବର୍ଷା ଝଡ଼ କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପଦି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ। ହାହାକାର ସମସ୍ତେ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଅଲରେଡି ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଛି ତ ଦେଖାଉନି, ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର, କ'ଣ କରିବା? ସ୍ୱତଃ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଯେ ସାକ୍ଷୀ ରୁହ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅ, ବିଚାରକ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। এইଭଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି। ସେଇ ବୋଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆଖି ଖୋଲି ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳିଗଲା, ଖରା ହେଲା, ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା। ଦୂରରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି କିଛି ବୋଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ବୋଟ୍ଟି ଆସୁଛି। ଘଟଣା କହିବାର ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦର କହୁଥିଲେ, ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧ୍ୟାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଘଟଣା କେବଳ ଘଟଣା, ନା କିଛି ସୁଘଟଣା, ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେବଲ ହେବା ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ PSSN ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ପତ୍ରିଜୀ ସବୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଗେଇ ନେଉଛେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଏ କାମ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରିଜୀଙ୍କୁ प्रणाम करुछु। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। Nice to see you. धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ये गाना गाइए आप। सर आज भी अभी सर मुझे छोड़ते नहीं आप। अरे आप गाना है, अभी अभी गाना। मैं बैठा हूँ सुनने के लिए। सर वही पुराना गाना आपको जो पसंद आया था पूरी में। प्लीज 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 एक लाइन सर। यस। सजनी रे काहि गले श्याम, सजनी रे काहि गले श्याम, सते की विधि है लबाम, सते की विधि है लबाम, सजनी रे काहि गले श्याम, सजनी रे काहि गले श्याम। Thank you, Baba. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice to see you again after so many days, Baba. It's my pleasure, sir. It's your blessing, sir. मैडम है क्या घर में? बुलाओ। जी। अरे पति जी रक्षण दी, पति जी रक्षण जल्दी आ। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आपका संदेशा दीजिए सभी लोगों को। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बाबा। सर हम लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे हैं। लॉकडाउन हमको कुछ पता ही नहीं चलता है हम लॉकडाउन में है। हम लोग को लग रहा है बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आगे, इसीलिए कुछ लॉकडाउन में अभी है, कुछ सीखने का मिलता है लॉकडाउन में।
ठीक है, आपका संदेश आप पूरा दीजिए सभी लोगों को। सभी लोगों को संदेशा सर। क्या अभी मैं तो सो रही थी। सर सबको मैं बोलती हूँ कुछ घबराना नहीं। ये जो हालत चल रहा है जो हालत चल रहा है अभी, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हमारा, बहुत कुछ हम लोग को सीखने का मिलता है। और जो लोग ध्यान नहीं करते हैं वो भी कुछ सीख रहे हैं। बहुत चेंज हो रहा है हमारा यहाँ। तो मैं देखती हूँ सबको, सब लोग चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ अच्छा होने वाला है आगे, इसीलिए मैं महसूस करती हूँ बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है सत्ययुग का आने वाला है शायद। लेकिन जो जिसको देखती हूँ कोई कुछ ना कुछ किसी को हेल्प करता है, कोई किसी ना कुछ किसी को घर में कुछ नहीं हो तो गरीब लोग को दान देता है। ये मुझे अच्छा लग रहा है देख के। और ध्यानी हम लोग जो ध्यान करते हैं हमेशा, हम लोग जो सुबह शाम दोपहर को ध्यान करते हैं, इसीलिए हम लोग का तो ये सब में कुछ फर्क, कुछ कोरोना ये सब कुछ माइंड में नहीं आता है। ये आएगा, ये सब फेस करेंगे, फिर चला जाएगा। ये एक टाइम है। ये सब हमेशा तो कुछ अच्छा नहीं रहता है। सब कुछ ना कुछ तो घटना घटते हैं, उसको तो सामना करना पड़ता है। ये भी आएगा, ये भी चला जाएगा। ऐसे ही कुछ किसी को कुछ ये घबराना नहीं। ये जो कोरोना आया है ये हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया मैसेज लेके आया है। कुछ सीखने का मिलता है इसमें। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। मेरा आज भाग्य बदल गया है। मैं क्या नहीं देखा आज सुबह से, मुझे मालूम नहीं था आपके साथ मुलाकात होगी। मैं तो हमेशा देखती हूँ आपको, लेकिन आपके साथ सामने से बैठूंगी इसे मेरा तो बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है आज आपके साथ बात करके। ये कोरोना का महत्व है। आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। जरूर जरूर। ये तो कोरोना का ये कोरोना ने ये मेरा चेंज कर दिया। ये आज लाइफ मेरा चेंज हो गया। नमस्ते शाह जी। नमस्कार बाबा। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम प्रवास पात्र है। मैं भुवनेश्वर से। हेलो। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार सर। मैं PSNSM का साथ 2012 एक मेरे ख्याल से एक मेरा लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ। 2012 जून महीना में एक स्वामी जी हमारा घर पे आए और बताया कि हम आपको ध्यान सिखाना चाहते हैं। वो स्वामी जी का नाम भी लेना मैं चाहूंगा। उनका नाम ज्ञानेश्वर जी है। मैं आपको कुछ ध्यान का मार्ग सिखाना चाहूंगा। तो हमने उसी टाइम में, ये ध्यान का बारे में कुछ पता नहीं था, बट स्टिल हमने सोचा कि चलो हम एक बैठ के ध्यान करते हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं तो उसी टाइम हमको ये आनापाना सती पूजा ध्यान में बैठे, जैसे पत्री जी का पोस्टर है उस पोस्टर को फॉलो किए और उन्होंने बताया कि आप इसी पोस्टर में बैठिए और ध्यान करिए। तो लगा कि ध्यान करना मतलब एक केंद्रित होना, माइंड को एक जगह पे लाके रखना। फिर उन्होंने प्रोसीजर जब समझाया कि आप अपना ब्रेथ का ऊपर देखिए कि ब्रेथ जैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है उसका ऊपर केंद्रित करिए और आप देखिए कि ध्यान आपको लगेगा। तो बोले, हम पूछे कि कितना समय का ध्यान होगा ये। उन्होंने बोले कि 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसी बीच में हमने देखा कि ध्यान हम जब बैठे और ये बढ़ते बढ़ते 1 घंटा चला गया, हमें पता भी नहीं चला। तो ये हमारा शुरुआत हुआ था 2012 जून महीना में। उसका बाद उन्होंने स्वामी जी बोले कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। तो हमने बोला कि हम तो कोर नॉन वेजिटेरियन है और हमारा घर में मांस मछली उसका सिवा तो हम चलता ही नहीं है। तो उन्होंने बोले कि आपको अगर ध्यान सीखना है और ध्यान में पकड़ लाना है तो आपको नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड था और हम सोचे कि इसको कैसे कवर अप किया जाए। तो फिर हमने 2 महीने का बाद ये प्रण ले लिया कि नहीं, अगस्त में हम नहीं पूरा वेजिटेरियन बनेंगे। उसका बाद हम ध्यान, उसका बाद से जो ध्यान हमने किए उसमें काफी मन लगा रहा एंड लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आने लगे।
फिर हमारा एक मौका आया कविता जी का साथ हमको GCSS में जाने का मौका मिला। वो 2012 अक्टूबर था। वहां पे फिर इतना सारे मास्टर्स थे, हमको तो उस टाइम में इतना बड़ा पता नहीं था कि ये ध्यान का मार्ग ऐसे होता है, स्पिरिचुअल साइंस ऐसे होता है। तो हमने वहां गया और हमने सारे चीज को ऑब्जर्व किया, देखा। फिर एक बार फिर हमें मौका मिला, जो ध्यान महाचक्रम था करताल में, वहां पे 2012 में वहां पे भी गए। वहीं पर पत्री जी का साथ मुलाकात हुआ और पत्री जी उसी टाइम में उड़ीसा ध्यान मास्टर्स जी को वहां पर बुलाए और बोले कि आपको भी एक महाचक्रम करना है, वो पुरी में करना है। तो उन्होंने एक समय दिया कि हम मई महीना में पुरी में करिए ध्यान महाचक्रम। और उसी ध्यान महाचक्रम में मैं काफी इन्वॉल्व हुआ, देखा सब चीज। और उसी महाचक्र में पब्लिक सुबह सुबह बैठते थे कि भाई हमें ये ऑर्गेनाइज करना है, और उसी को पत्री जी को कैसे हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, और इसी ध्यान का जो फैलाना है उड़ीसा में, ये एक शुरुआत होगा। तो मैंने ये संघ का साथ जुड़ा और वहां से मेरी शुरुआत हुआ। फिर इतना बड़ा कार्यक्रम था, जबकि मेरे को सारे फाइनेंस का उन्होंने बताया कि आप इसको देखिए। तो हम सोचे कि इतना बड़ा कार्यक्रम में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। तो चलते गए। बट आप जब भी हम किसी से पैसा लेने जाते थे, सुबह ध्यान में बैठते थे और पैसा लेने के लिए फिर जाते थे। फिर उसके बाद हमें पता भी नहीं चला कि पैसा आया, कलेक्शन हुआ, और सारे चीज का प्रोग्राम भी हुआ अच्छे तरह से। फिर फाइनली सबको ही बोले कि भाई आपको ये जो चीज है इसको आगे बढ़ा के रखना है। फिर हमारा उड़ीसा में काफी ध्यान का फंक्शंस वगैरह हुए। ऐसे ही मेरा जर्नी चलता रहा। फिर मेरे को ये पत्री जी का कभी कभी जब मुलाकात होता है, पत्री जी को मैं मिलता हूँ, काफी मन में क्वेश्चन आता रहता है। बट पत्री जी हर टाइम बोलते हैं कि भाई आपको सारे क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन ध्यान से ही मिलेगा। तो फिर हम चुप बैठ जाते हैं कि भाई आप जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको फिर आप ध्यान से बैठिए। और ऐसे ही मेरा सारे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से ही मिलते गया। कभी कभी पत्री जी बोलते हैं कि भाई आपको अगर कुछ चीज में रुचि है तो आप क्या करते हैं, आपको उसी को एक सोचते हैं कि मेरा एक तमन्ना होना चाहिए कुछ ही चीज का, और वो उसी तमन्ना को आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसका तरीका को मालूम करना पड़ेगा। और उसी तरीके को आपको अगर एक्सपर्ट होना है, फिर आप क्या करना पड़ेगा, उसी को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये तमन्ना, तरीका एंड प्रैक्टिस, चाहे वो ध्यान हो चाहे किसी भी चीज में हो, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वेरी सिंपल थिंग, वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बट इट विल गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट। ऐसे ही मैंने कुछ और एक रिसेंटली पत्री जी का जो प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें पत्री जी बोले कि आपको माइंड एम्प्टीनेस एंड माइंडफुलनेस, ये दोनों का समझ किसी को नहीं आता है, किसी को, मेरे को भी नहीं आ रहा था। तो आप जब आंख बंद कर देते हैं तो आपका माइंड एम्प्टी हो जाना है। तो कहने में तो बहुत आसान है, बट इसको करना बहुत डिफिकल्ट होता था। जब ध्यान में आप इसको अभ्यास करते हैं तो ध्यान पे आपको माइंड एम्प्टीनेस भी हो जाता है, और कुछ भी कार्य में अगर माइंड आपका आइज खुला रहता है तो माइंडफुली उसी काम को करिए। तो ये एक अभ्यास में अभ्यास जो ध्यान के मार्ग में मेरा अनुभव हुआ और मैंने करते भी गया। देन एक मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता था कि आप मास्टर बनेंगे, बट कैसे मास्टर बनेंगे? आपका साथ पत्री जी जैसे इतना बड़े मास्टर है। फिर पत्री जी एक बार हमारा घर पे आए थे, उनको पूछा, पत्री जी आप जो कहते हैं कि मास्टर आप बने ही हैं, मैं जो हूँ आप हो, ये कैसे संभव है? आप कितना ज्ञानी गुणी है, हम लोग को बार इतना नॉलेज भी नहीं है कि हम किसे कैसे गुणी बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपका जो जन्म है ये हो सकता है 28 जन्म है, मेरा 400 जन्म हुआ, तो उसी हिसाब से मैं 400 बार जन्म ले चुका हूँ। और इसमें मेरा ये एक उदाहरण उन्होंने दिया, तो हमें लगा कि ठीक है, इस जन्म में अगर हम ध्यान सीख लिए तो बहुत कुछ सीखे, आगे अगर प्रयास करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। अच्छा, ध्यान का ये जो मार्ग में मेरा ये कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को एक चीज में बहुत बेनिफिट हुआ है, जो कि ईगो और एंगर, ये दोनों का ऊपर मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैंने अपने आप को कंट्रोल भी कर पाया हूँ। बट मेरा मन में हमेशा एक रहता है ये जो डर, ये डर एक चीज, फियर को ये मैं अभी तक ओवरकम नहीं कर पाया हूँ। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ लाइक योर लव्ड वंस, फियर ऑफ एनीथिंग बिजनेस टर्मल, ये सब चीज में मैं ओवरकम नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये सोचता हूँ
ये जब अगर मैं पत्री जी को इसके बारे में पूछूंगा कि पत्री जी फियर क्या है और ये क्यों ह्यूमन को इतना ज्यादा सताता है, तो पत्री जी डेफिनेटली बोलेंगे कि आप ध्यान करो, उसका ऊपर ओवरकम करो। मेरा शायद इनका आंसर भी वही होगा। तो उसी हिसाब से मैं ध्यान का में पता नहीं कितना दूर तक आगे बढ़ा हूं, बट कोशिश मेरा जारी है और मैं उसी हिसाब से अपना लाइफ को आगे मूव कर रहा हूं। धन्यवाद PSSM, धन्यवाद मैं अपना साहिल भैया को एंड नीलम जी को, इन्होंने मैंने अपॉर्चुनिटी दिया। मैंने आज कुछ बोला पत्री जी के सामने, शायद पत्री जी को ये चीज मेरा एक्सपीरियंस पत्री जी को शायद सुन के कुछ ये लगा होगा कि हाँ मैं सही में ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्यान में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप तो मास्टर है बाबा, आप तो मास्टर है। मास्टर जो कोई ध्यान को अपनाया वो मास्टर बन गया। हाँ, ये तो बात आपने हमेशा बोलते हैं कि जो अपनाया वो मास्टर बन गया। वो तरीका आपका ही था, वो तरीका हमने सीख लिया और उसको अपना रहे हैं अभी पत्री जी। ये अपनाने में बहुत देरी होती है, उसमें कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं है, परंतु जो नहीं अपनाए वो मिस्टर है, जो अपनाया वो मास्टर है। हाँ, ये बात भी सही है पत्री जी। तो आप तो मास्टर है। धन्यवाद पत्री जी, आपने हमारा ये, बट पत्री जी आपका साथ जो मुलाकात 2012 से हुआ उसी से मैं कंटिन्यू हूँ, कहीं ध्यान भटका नहीं, ध्यान चलता रहा और संघ में मैं जुड़ा हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा मदर इंडिया है क्या उधर? मदर इंडिया आइए। थैंक यू बाबा। नमस्ते सर। थैंक यू। आपको मैं थैंक यू करना भूल गया मैं। आपको थैंक यू सर बोलना। मैं मदर इंडिया बोल रही हूँ। मैं आपसे बात करना था मुझे। आपका पूरा सुना मैं। आपका पूरा सुना मैं। सुना? हाँ सर बोलिए। बस थैंक यू। और क्या बोलूं मैं, बस थैंक यू सर। आप ऐसे ही हम लोगों के साथ रहिए। वेरी गुड। आई वांट डॉटर इन लॉ ऑफ इंडिया। आवर डॉटर ऑफ इंडिया। गुड आफ्टरनून सर। कैसा हुआ सुबह से? अच्छा हुआ? सब अच्छा हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, आपका संदेशा दीजिए सभी लोगों को। संदेशा तो सर खाली ये है कि खाली मेडिटेशन करो और अपना दिमाग इधर उधर कहीं नहीं लगाओ, बस दैट्स द एंड ऑफ इट। You will get all the answers, every question, every answer will be answered. हा। आज खाने में क्या बनाया आप? सर दाल भात सब्जी रोटी। आज सुबह से इतना बिजी है, खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए दाल चावल। ठीक है बाबा। और सर कुछ बोलिए, संदेशा दीजिए। अरे आप होते हैं संदेशा देने वाले, हम क्या होते हैं? हम संदेशा सुनते हैं आपसे, मदर इंडिया से। सर मुझे एक बात मन में आई कि नेचर को हमने बहुत पॉल्यूशन दिया था, इसलिए नेचर ने कहा कि तुम लोग अपने घर में बैठो, मुझे भी अपनी सफाई करने दो। तो सब गाड़ियां और सारे इतने, अभी इतनी हवा अच्छी चल रही है सर, दिन में एसी की जरूरत नहीं है, तो हमने उसको दिया, तो वो मुझे घर में बैठा दिया, बोला घर में बैठो, और वो अपनी सफाई कर लिया। पूरा घर में बैठो बस घर में बैठो। ये साल पूरा 2020 पूरा, द होल ईयर। सर अच्छा है, घर में परिवार बैठो। के साथ रहते हैं, ऐसे कोई को टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल कॉलेज, बच्चा अपने काम में, अभी सब घर में रहते हैं, अच्छा लगता है सर।
नो स्कूल नो आपको कॉलेज। मैं रोज देखती हूँ कलकत्ता वाले प्रोग्राम में। अच्छा, हाँ, मैं देखती हूँ, आप मुझे बहुत रहते हो अच्छा उधर? सर मैं आपको देखती हूँ ना, बैठे बैठे देखते देखते वाइब्रेशन होने लगता है। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next master. Yes, next we would like to invite Vijita Kothari ji. Please come on stage and share your experience, our great master from Odisha. हेलो, नमस्कार। नमस्ते पति सर, आपके चरण कमलों में आत्मीय वंदन। बहुत 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 अंतर से धन्यवाद। इतना ब्यूटीफुल, इतना सरल, इतना अच्छा, जिसमें सारे सवाल का जवाब मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके। लेकिन मेरी शुरुआत की गुरु मेरी माँ रही, जो मुझे ध्यान सिखाना चाहती थी, और मैं बोलती थी भैया ध्यान नहीं करना है हमको, अभी ध्यान नहीं करूंगी, ध्यान नहीं करूंगी, पूरे विश्वास के साथ बोलती थी। लेकिन थोड़े दिन बाद बोली अरे हाँ करती हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पूरे विश्वास के साथ उनको खुश करती थी, और उनको खुश करने से ये हुआ कि अब मैं प्योर ध्यानी बन गई। बहुत अच्छा लगता है। ध्यान के पहले ही दिन लगा कि जैसे मैं कोई गुफा से गुजर रही हूँ, और मैं डर से दौड़ने लगी, और वो गुफा खत्म हुई और मैं गिर गई। डर लग रहा है अब मैं मर जाऊंगी। फिर अंदर से आवाज दी, इसका आनंद लो, क्या तुम मर सकती हो? तो फिर मैं खुद से बोल रही हूँ नहीं, शायद मैं तो नहीं मर सकती। तो तुम तो मर ही नहीं सकती हो, क्या डरने का डर है तुम्हें? बहुत दिन माँ को खुश करने के लिए बोलती थी ध्यान करूंगी, और जिस दिन ध्यान किया उसी दिन मृत्यु के भय से मुक्त हो गई। बहुत अच्छा लगा। ध्यान करती थी। मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2 घंटे बैठी हूँ, 3 घंटे बैठी हूँ, वो देखता मम्मी ध्यान कर रही है। वो 3 साल का बच्चा कभी मुझे जगाता नहीं था कि मम्मी उठ जाओ। मुझे आश्चर्य होता था कि कैसे हो रहा है सब। तब मैं बस आगे बढ़ती गई। ध्यान एक जो चीज जो मैंने देखा कि हम ध्यान में ज्यादा आगे तब बढ़ते हैं जब हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं। मैं विश्वास के साथ माँ को बोलती थी कि मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन करती तो नहीं थी। लेकिन जो विश्वास था कि मैं करती हूँ, वो मेरा वर्तमान बन गया। ध्यान मेरा जीवन बन गया। आगे चलता रहा, फिर हर चीज में मुझे वही आता रहा, विश्वास। अब मेरा एक रिश्ता मेरे खुद से भी है। अगर मैं विश्वास करूं कि यस मेरा रिश्ता खुद से है, मैं इस विश्वास के साथ अगर ध्यान करूं कि मैं ईश्वर हूं, तो ईश्वरीय चेतना की ऊर्जा हम तुरंत उसका अनुभव करते हैं। मुझे पता था कि ज्ञान अंदर है, बस पता था। मैं बैंगलोर गई थी स्पिरिचुअल टीचरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। क्लासेस हुई, शिवरापा सर ने क्लास लिया, तब विश्वास हुआ कि सच में ज्ञान अंदर है। तब विश्वास हुआ कि मैं ईश्वर हूँ। पहले सिर्फ पता था, और उसके बाद उसी दौरान पूर्णिमा थी, क्लासेस के दौरान रात को ध्यान कर रही थी। ईश्वरीय ऊर्जा क्या होती है, जब वो क्लास उस दिन हुई, रात को जब मैंने ध्यान में बैठा तो ऊर्जा को मैंने महसूस किया। तब मालूम पड़ा कि आज मैंने जब उस पर विश्वास किया तो आज मैं उसका अनुभव कर पा रही हूँ कि दिव्य ऊर्जा क्या होती है। आने के बाद सर्जन संगति होने लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा कि कोई टीचरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर आया है। तो उसी दौरान देखी कि कुछ नया ज्ञान निकल रहा है जो किताबों से परे था। तब मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे पता था, और इस ट्रेनिंग के दौरान जिस पर मुझे विश्वास हुआ कि ज्ञान अंदर है, वो चीज झलकने लगा।
तो मुझे लगा कि हाँ, पता होना अलग है, उस पर विश्वास कर कर ध्यान करना ही उसको अनुभव में लाता है। थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर से वो झलक आने लगी कि जो अंदर का ज्ञान है थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा। फिर बहुत दिन थोड़ा जब कर्मों के ऊपर मैंने सोचा कि ये क्या है, ये क्यों है, क्या ये सही है, गलत है, क्या है। तब कुछ पढ़ते पढ़ते देखा कि ये तो सिर्फ अनुभव है हमारा। तो इसके ऊपर मैंने मेरा शुरू किया कार्य करना। मैंने इस विश्वास के साथ ध्यान किया कि ये सिर्फ मेरे अनुभव है, जो मैं अनुभव लेना चाहती हूँ, इसीलिए तो शरीर में आई हूँ, तो ये मेरा अनुभव है। जब उस विश्वास के साथ जब मैं ध्यान करने लगी, तो जो जहां पर मुझे तनाव हो रहा था, जो रिश्तों को मैं नहीं अपना पा रही थी, वो सब एक नाटक की तरह लग रहा था, जिसमें हम सब पात्र हैं और हम एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं, सीखने जानने के लिए आए हैं। जीवन में एक सरलता आ गई कि हर चीज कितना सरल है। अब माया से ऊपर उठकर उसको समझने की ये सत्य क्या है, उसका एहसास होने लगा। तब लगा कि अरे इसमें भी विश्वास काम करता है। तब फिर आगे बढ़ने लगा जिंदगी में, ध्यान के साथ और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा हुई। अब संकल्प, फिर देखे बहुत लोग बोलते हैं संकल्प करो संकल्प करो। अच्छा संकल्प ठीक है, तो क्या चीज का संकल्प करें। तो फिर आया कि भाई अच्छा ये संकल्प करते हैं कि सक्सेसफुल बनना है। अच्छा अगर मेरा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सफल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा सफल हो रहा है, सफल हो रहा है। फिर मेरे संकल्प पे जब मैंने विश्वास डाला कि यस मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, तब मैंने देखा कि जो भय, जो थोड़ी जो दूसरे जो भय थे वो मेरे से दूर होने लगे। मैं हर चीजों को और सरलता से अपनाने लगी, मैं बेहतर खुलकर सबके सामने आने लगी। फिर देखा ध्यान कर रही हूँ और जहां संकल्प डाल देती, जहां विश्वास डाल देती हूँ, ये तो स्पीड डबल हो जा रही है। ऐसे ही जब फिर जब इतने एक्सपेरिमेंट हो गए तो लगा और भी आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन आगे चलता रहा। एक दिन महावतार बाबा जी की तस्वीर देखी, सिर्फ तस्वीर देखी, पता नहीं कौन है क्या है, देखते ही बहुत आकर्षित हुई। पूछा मम्मी से कौन है, ये महावतार बाबा जी है। देखा एक आंखों में एक अलग खिंचाव आ रहा था। मैंने सोचा बाबा जी आपसे मिलना है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी वो तस्वीर देखकर। उस 5-6 साल निकल गए, उसके बाद अचानक ही पिछले साल ऋषिकेश में जो ध्यान महाकुंभ होने वाला था आयोजित, मेरा जाने का विचार नहीं था, मैं जाना नहीं चाहता, मन भी है और जाना भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने देखा जैसे मेरा पूरा कार्यक्रम बाबा जी ने अपने हाथ में ले लिया। मैं ऋषिकेश, मैं पहले महात्मा बाबा जी की गुफा भी गई, ऋषिकेश आई। ये पूरे दौरान में जैसे लग रहा था कि जैसे मेरे भावों के जरिए बाबा जी से बातें कर रहे हैं मेरे से, कि तुम बस इस भाव में बहती जाओ, बस यही तुम्हारा काम है, तुम बस इसके भाव में बहती जाओ बस। बहुत अच्छा लगा। हर पल लगता था जैसे वो खुद आए, मुझे लेकर गए, पूरा प्रोग्राम हुआ और मैं वापस घर आई। मैं देखा कि एक विश्वास, एक पल के लिए कि विश्वास बाबा जी आपसे मिलना ही है, और वो भी मेरा सच हो गया। आज इतना कहना चाहूंगी, आज आप सामने खड़े हुए, मुझे पता है कि आपका विश्वास है कि ये पूरा सृष्टि साकार होगा, ध्यान जगत होगा, पिरामिड जगत होगा, और ये होगा क्योंकि ये आपका विश्वास है। आपका विश्वास है कि हम अपने ईश्वरीय तत्व को जानेंगे।
और हम जिस दिन विश्वास कर लेंगे तो वो बाहर आएगा ही आएगा। और मुझे विश्वास है कि ये तो मेरा विश्वास है कि आनापानसती सबका जीवन बदलेगा, ये जरूर बदलेगा, ये दिन बहुत जल्दी आएगा। और हम सब, आपका संकल्प हम सबका संकल्प है, आपका सपना हम सबका सपना है, ये बहुत जल्दी हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आप मार्गदर्शी के रूप में हो, प्रेरणा के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, मुझे गुरु के रूप में नहीं लगते, मुझे आप सखा लगते हो ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है, आपका मार्गदर्शन मिला, सबसे ज्यादा बड़ा खुशी की बात लगती है कि इस जीवन में आप जैसा मार्गदर्शक मिलना, ये जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इस सृष्टि को धन्यवाद। मुझे ये पात्रता मिली कि मैं माता बाबा जी से कनेक्ट हुई, आपसे कनेक्ट हुई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद पत्री सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Baba. Thank you, thank you, thank you. You are such a sweet girl. थैंक यू सर। ये फूल खिला है क्योंकि आपने सींचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. मैं ओडिशा माता को आमंत्रित करना चाहूंगी, श्रीमती भारती राठौर जी को। Start your video. नमस्ते सर। नमस्कार बाबा। सर आपको सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। Thank you so much for being for this program for Odisha Master. So first of all, I start with pranams to you, Brahmarshi Pitama Patriji, and pranams to all the viewers of PMC channels around the world. My name is Bharti Rathod and I am from Cuttack, Odisha. I came into meditation 10 years back after reading a book called An Autobiography of a Yogi by Yoganand ji. I was searching for meditation, and I met Patri sir, and I got a easy and a simple technique which is known as Anapanasati Dhyaan. He said, just observe your in-breath and out-breath without going behind the thoughts. I started doing this meditation, and slowly my mind started becoming quieter, calmer. I started losing my anger, my relationships were getting better, and I was very happy with myself. But my soul was looking for what is the purpose of my life? I was looking for it. So I got the answer. One day we had a workshop in Bhubaneswar on Seth Wisdom by Balkrishna sir and P.V. Ramaraju sir. Towards the end of the session, that workshop, we had a meditation. In that meditation, my body became very warm and very heavy, and I could feel the divine energies. And so afterwards, P.V. Ramaraju sir asked me, okay, Madam, what would you like to do in service? I said, sir, without waiting, intuitively instantly I said, sir, I will organize vegetarian rallies in Cuttack and all over Odisha. So now that I got the purpose of my life, I was very happy and contented. After that, we had a Dhyaan Chalisa program in Cuttack for 40 days. We went to different houses and different people, and we taught them meditation, and they were sharing their experiences, which also helped us to grow. And in this meditation, I dropped a very bad habit of mine, which was eating jarda pan. So after this Dhyaan Chalisa, I stopped eating jarda pan, and I was very, very happy that
इतनी बुरी आदत मेरी एक छूट गई। उसके बाद सर मेरा ध्यान चलता गया, मैं उसमें बढ़ती रही। Different experiences and new experience started happening with me. So later, after that, in Puri, we had a Dhyaan Mahachakram, and in that we had Premnath sir's workshop, which was on astral surgery and healing. Sir, in that program, I had a back pain for so many years, but in that workshop, mera back pain chala gaya, which was 20 years old, and I was so happy and so just very happy. My meditation was taking me further deeply, and very nicely I was doing my meditation. Then I took a vow कि मैं 3 घंटों वाला ध्यान करूंगी for 200 days. तो उसमें भी मुझे बहुत आनंद मिला. I was very happy. And I started dropping my dark layers, my negative emotions like anger, fear, sadness, hopelessness, jealousy, and all those dark emotions. Slowly they were all dropping down. And मैं एक स्थितप्रज्ञता की स्थिति में अपने आप को पाने लगी. Everything was very smooth and nice. उसके बाद आप के साथ मैंने कलकत्ता टीम के साथ आप वहाँ समझा रहे थे कि मौन का बड़ा महत्व है. सो आई टुक अ वाव दैट मैं 7 दिन का ध्यान करूंगी, मौन करूंगी, और मैंने फल और दूध के साथ 7 दिन का मौन किया. तो छठे दिन जैसे ही मैं ध्यान में बैठी तो मैंने पूछा to my higher self, I got connected to my higher self and I asked कि what should I do more to accelerate my progression in spiritual line. So it started laughing and told me, what was your tagline in your WhatsApp? I said previously it was I'm the creator of my own reality. That was what I had given after my 6th workshop. The higher self laughed and said, what is your tagline now? So I said, my tagline now is I'm the embodiment of love and compassion. So then why are you asking me? Your soul is guiding you so nicely. I am guiding you. I am connected to you. And we are connected to higher consciousness, oneness. So that was a very great experience, and it was so nice. Love and compassion are the highest principles of life, and on that the universe operates. The present corona situation teaches us to love and be compassionate to all living beings on planet Earth. They have a right to live. They are the cohabitants of the planet Earth. We must protect the animal kingdom, the plant kingdom, and the mineral kingdom. Love and compassion is the fulcrum on which the universe is balanced. So, the receiving that knowledge and wisdom, I drowned into the ocean of happiness and joy. Really, it was amazing experience. After I opened my mauna, my silence, I did Dhyaan, Hanuman Chalisa, because he is my guru, first guru. And then my husband came, so I touched his feet. My maid was standing there, तो मैंने उसके भी पैर छुए मेड के, तो बड़ा अच्छा लगा. And I expressed my gratitude to them for helping me out in these 7 days of Mauna. So that night again, when I sat down for my meditation, I got connected to my higher self. And it was very happy and smiling, and it was full of love towards me. So I asked him what happened. So he said, today you have not only shown a deep gratitude towards other people, but also you have overcome your ego, which is a very, very big thing.
क्योंकि तुमने पैर छुए, gratitude towards other people, but also you have overcome your ego, which is a very very big thing. क्योंकि तुमने पैर छुए, वो हस्बैंड तो थे मगर मेरे मेड को भी मेरे पैर छुए, so you have overcome your ego, and that is a very big thing. I was very happy after listening to my higher self, and I expressed my gratitude to him. So now I want to just be the spiritual warrior of Patri sir, of you sir, to spread the message of meditation, vegetarianism, pyramid power, and spiritualism. Sir, I would like to thank all. I would first like to thank you, sir, for giving us this meditation, and all the Andhra masters, spiritual masters, Hitesh ji and Shubhangi ji, Suresh sir, Balkrishna sir, PV Ramaraju sir, Ragini madam, and all my pyramid masters. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Baba. Thank you, sir. Thank you. That was wonderful. Yes. Yes, sir. Thank you, Bharti aunty. I would request all the Odisha masters now to please summarize it in as less time as possible, because we have a session to start at 3. It's already 3:07. So whoever is coming, we have Madan Mahanti from Germany, who is joining us. He's an Odia master. We did not know, and after seeing this live session, Patriji, he has approached us and he says he wants to share, because he's from Odisha and he's from Germany and he wants to share his experience in meditation. So we love to have him, but we would request everybody to please be very precise. We have 3 more or 2 more speakers who's going to be coming ahead. So you get maximum 3 minutes. So each one of you, please try to summarize in 3 minutes, because the master is already waiting for the next session. Please. Thank you so much. Madan Mahanti, please, would love to have you here. Okay. Namaste, Patri sir. Namaste, everyone. Nice to see you, Baba. Thank you. So, मैं मदन जर्मनी से, अभी मैं जर्मनी में रहता हूँ, मगर मैं मेडिटेशन 2012 में स्टार्ट किया with the guidance of मास्टर राम एंड मधु. उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि पत्री सर से मिलने का, और गीजा पिरामिड में मेडिटेशन करने का. तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और वो मेडिटेशन इनिशियली थोड़ा माइंड को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो रहा था, मगर प्रैक्टिस से धीरे धीरे मैं अपना माइंड को कंट्रोल कर पाया और बहुत सारा एक्सपीरियंस आया, जैसे कि इनर सेल्फ जर्नी. धीरे धीरे मैं अपने आप को started to love myself and started to be compassion about other beings, not only the human beings. तो धीरे धीरे मैं वेजिटेरियन भी बन गया, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सब धीरे धीरे हम चेंज होना चाहिए, कि वो एनिमल्स और अदर बींग्स को अच्छे से ट्रीट, रेस्पेक्ट देना है. तो उसके बाद मैं बहुत सारे मास्टर्स से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला, और धीरे धीरे जैसे अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब लाइफ में धीरे धीरे चेंज आया. और अभी हम लोग जर्मनी में भी विद द हेल्प ऑफ मास्टर मधु एंड राम, हम लोग अभी ये लॉकडाउन के वजह से एवरीडे जूम माध्यम से मेडिटेशन कर रहे हैं, और इधर भी हम स्प्रेड कर रहे हैं मेडिटेशन और वेजिटेरियनिज्म. तो ऐसे ही मेरा लाइफ धीरे धीरे चेंज होता रहा, और आई स्टार्टेड टू लव and doing meditation and enjoying being into meditation. So thank you so much for PMC and also Patriji, Sahil
and Madhu and Ram to give this opportunity to be into meditation and guide us in the right path. मैडम को दिखाना बाबा एक बार. मैडम ज्योति, come. थोड़ा ओडिया में बात करो आप. हाँ, आपण केमती अछंती सर? Namaste, sir ji. नमस्कार मैडम. How are you? I'm fine, sir. You give your message in Odia. Odia देखो. Experience? हाँ, experience. Yeah, it's Odia रे. Actually ମୁଁ meditation start kali 2015 रे after I got married, and tapare like बहुत beautiful journey thila meditation, and also I started becoming vegetarian, and it was nice experience actually into meditation, and yeah in ODI. Yes, actually I don't know everybody will understand if I say in ODI. I don't. So yeah बहुत भला experience thila, and actually I want to share my pregnancy story actually. Now I'm pregnant, and I do meditation regularly, and I feel so good, that I don't have any fear, like I don't get any fear of delivery, or when I listen to other people, they tell like you should go through this pain and everything, but now I feel so relaxed after doing meditation that I recommend everyone to do it, so it's good really actually. I don't have any anxiety problem or any kind of, so I feel so relaxed. So yeah it's so good, and बहुत भलो. In Odia I will say like बहुत भलो if we do it regular and we practice, and yeah it's really beautiful journey to get into Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you so much, sir. Nice Thank to see you, sir. Nice to see you all the way from Germany. Yeah. Thank you, sir. Nice to see you, sir. Thank you, We sir. too. Happy to see you. Are you learning German? Yeah I know like basic. I know I can speak. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So Thank you so much for the Thank you, beautiful sir. sharing, Madanji. It was a great sharing from you, and we're really happy to have you all the way from Germany. Next time you come to Odisha, make sure you connect with us. Yes. So now we'll invite Mrs. Sujata Dhanuka auntie to come and share her experience. Sujata auntie, you are next. Yes. नमस्कार सर, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. ब्रह्म ऋषि सर को हमारे कोटि कोटि प्रणाम, और सभी मास्टर्स को मेरा नमस्ते. मैं हमारे ऋषिकेश का 2017 में ऋषिकेश गई थी ध्यान महाकुंभ में. वहां मैं फियर को कैसे ओवरकम कर पाई थी, मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. सर वहां हम लोग सुबह आपका फ्लूट मेडिटेशन जो सुबह गंगा नदी के किनारे होता था सुबह 5 से 7, वो सर याद आते ही अभी भी पूरे गुजबम्स होने लगते हैं. इतना मजा आता था पवित्र नदी के किनारे आपका फ्लूट मेडिटेशन पूरा म्यूजिक के साथ. वो मुझे लगता था जैसे कोई स्वर्ग ही धरती पे उतर आया है. और एक दिन साहिल के कहने पे हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग का प्रोग्राम बना लिया, और 18 किलोमीटर का ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग करने अपने चल दिए. और ऊपर जाके पहाड़ से जब हम लोग बोट में बैठे, 3 बोट हम लोग की थी, और जैसे हम लोग बोट में बैठे तो गाइड ने सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया, और लाइफ जैकेट था, बस गाइड ने इंस्ट्रक्शन दिया और हम लोग चल दिए. और वहां का जो वातावरण था इतना ट्रैंक्विल वातावरण था, इतना प्योरिटी था कि हम लोग इतने खुश होके सब खुश थे और देख रहे थे. तो रैपिड्स आने लगे, छोटे मोटे रैपिड्स आए. जैसे ही माउंटेन रैपिड आया तो सर जब तक मैं रियलाइज करती मैं नदी में गिर चुकी थी.
एंड पूरा नदी के अंदर गिर चुकी थी। और मैं जैसे ही सर निकाल के ऊपर देखी तो मेरे को कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। गंगा नदी के अथाह सागर में पूरी अंदर थी, मेरे सर पे पानी, चारों तरफ पानी, पानी ही पानी था। और गरजती हुई वो एकदम दौड़ती हुई गंगा नदी में मैं बहते चली जा रही थी। साथ साथ मैंने सुबह के ध्यान में मेरा स्मृति बनाया, तो मैंने अपने आप को पाया कि मुझे गंगा नदी ने गोद में ले लिया है और मैं उसके प्यार में, उसके ब्लेसिंग्स और उसके कंपैशन, लव में मैं बहते चली जा रही हूँ। सर, आई वाज नॉट in my body, I was beyond myself. I was feeling like I am just getting the blessings of Prakriti. And after, sir, this was the reality. After 8 to 10 minutes, मैंने दूर से बोट को देखा और जैसे ही बोट में मुझे खींचा, गाइड ने खींचा, तो मैं खुश थी एकदम। तो सबने कहा, अरे ये तो खुश है, ये तो हंस रही है, इसको डर ही नहीं लगा क्या? तब मुझे स्ट्राइक किया कि कैसे मुझे, अच्छा डर भी लगना चाहिए था, मुझे तो डर ही नहीं लगा। तो 8 से 10 मिनट तक मैं नदी में थी एंड सबने कहा इतना बड़ा टाइड्स में, इतने रैपिड्स में आपको डर ही नहीं लगा। और मैं भूल ही गई थी कि डर भी कुछ होता है। सर, ये ध्यान ने ही मुझे डर को ओवरकम किया। मैंने डर के ऊपर जीत पा ली थी और पूरे इतना ब्लिसफुल आई वाज फीलिंग एंड माय लाइफ हैज चेंज। तो ध्यान ने मेरा लाइफ को ऐसा चेंज किया है सर। तो इतना मतलब ब्लिसफुल, मतलब ये डर क्या है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये फियर ही देता है, सफरिंग ही देता है। और मैंने डर के ऊपर जीत पा ली थी। तो यही कहना चाहूंगी सर, ध्यान करिए, ध्यान करिए, जो कि कुछ भी है सब कुछ मिलेगा। डर के ऊपर जीत है और जो डर गया सो मर गया। तो मैं अभी भी अपने आप को सोच नहीं पा रही कि मैंने उस एक्सपीरियंस से गुजरा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल मैम। बहुत अच्छा लगा था। Thank you, Auntie. That was really a fearful experience. Patriji, I was there when she was under the water, and I was watching it, and it was a fearless experience. मतलब हम लोग, मैं भी, I was there and I saw the auntie, and she had no fear. She had no fear in her eyes, even after falling in one of the most dangerous rapids. It was actually dangerous, but she came out shining as if it was a beautiful experience. So hats off to her. So it was amazing, Auntie, for that fearless experience. Thank you, sir. Because of your blessings and Dhyaan. When you fall in water, any accessory you have? No, sir, no accessories. We have life jacket and वो जो चप्पू था हाथ में, वो मैंने पकड़ रखा था, छोड़ा नहीं। कि मेरे मन में था कि कहीं से कुछ कोई सेव करने आएगा तो मैं चप्पू को ऊपर उठा के अपने आप को और चप्पू के सहारे मैंने अपने आप को फ्लो ऑफ वाटर में डाल रही थी। क्यों ना साइड में पत्थर बहुत थे, तो लगा था कि सर टकरा जाएगा तो कहीं बेहोश हो गई तो काम खत्म। सर, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए फियर नहीं आया। अरे वाह, वंडरफुल सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उस दिन सुबह ध्यान में मैंने देखा था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ शिव जी की तरह, और चारों तरफ स्प्रिंग्स ऑफ वाटर मेरे पे गिर रहे थे। तो वो जो भरोसा था, वो जो आत्मबल था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे सुबह ध्यान और आपका ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। थैंक यू बाबा। Thank you, Auntie. Thank you so much for this beautiful sharing. It was indeed one of the moments. बहुत ही अच्छा था, मैं देखा हूँ आपको। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे एक और मास्टर को, ओडिशा मास्टर विनीता बगड़िया जी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। नमस्कार आप सभी को। हाँ, नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सभी मास्टर्स को। सर तो आगे बढ़ो। हाँ सर, करीब 2009 में मैंने आपका पहली बार फ्लूट मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था। तो ध्यान किया पहली बार, बहुत अच्छा लगा ध्यान करके, और लेकिन रेगुलर नहीं हुई, कभी कभी ध्यान कर रही थी। फिर उसके कुछ सालों के बाद कविता भाभी के साथ 40 डेज का ध्यान किया। उसके कुछ समय के बाद मैंने विशाल सर का एक वर्कशॉप अटेंड किया, और उसके बाद जो फुल डिटर्मिनेशन के साथ मैं ध्यान के साथ जुड़ी हूँ, तो आज तक लगी हुई हूँ। फिर तो मुझे सभी मास्टर्स का साथ मिला, पत्री सर, विशाल सर, कविता भाभी और बहुत सारे मास्टर्स, उन सभी के साथ मैंने ध्यान किया। जैसा कि आप सभी मास्टर्स बताए, पत्री सर एंड और सब, कि दिल्ली का ध्यान प्रचार, स्पिरिचुअल किताबें, इन सज्जन सानियत, उसको मैंने डेली लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट किया।
रेगुलरली ध्यान के किताबें पढ़ती, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती रही, जिससे लाइफ में धीरे धीरे इस तरह से बदलाव आने लगे कि मुझे पता ही नहीं चला, इतने सॉफ्टली और इतने स्वीटली लाइफ में जैसे अमृत की वर्षा होने लगी। और ये अमृत हम अपने तक ही तो सीमित नहीं रख सकते थे, तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार भी पूरा जुड़ गया, साथ में मेरे नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब एक साथ मेरे जुड़ने लगे और हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। पत्री सर का वर्कशॉप मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरे मैके वालों ने जमशेदपुर में भी ऑर्गेनाइज किया था। बहुत मज़ा आया सर आपके साथ जमशेदपुर में वर्कशॉप करके। सर के साथ मैं लद्दाख भी घूमने गई, वहाँ भी सर का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। ध्यान के अनुभव तो और क्या कहूँ मैं, जिंदगी से जैसे डर, भय, चिंता, ये सब कुछ कैसे गायब हुआ पता ही नहीं चला। हर किसी के साथ, हर प्राणी के साथ एक महसूस होना, वननेस क्या होता है, ये ध्यान के द्वारा जाना। और तो सर अभी समय का अभाव है तो इतना ही। नमस्कार। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। आप बहुत काम किए जमशेदपुर में वगैरह वगैरह। थैंक यू सर, आपका बहुत सपोर्ट और साथ था सर। और कहाँ कहाँ गए थे अपन? जमशेदपुर और जमशेदपुर गए सर आपके साथ, में लद्दाख गई, ऋषिकेश, जीसीएसएस तो कई बार गई। अच्छा जी सर। बेंगलुरु गए थे आप? हाँ बेंगलोर गई हूँ। हैदराबाद? नहीं हैदराबाद नहीं गई। अच्छा ठीक, आइए हैदराबाद आइए बाबा। श्योर सर। इस साल आइए आप। हाँ दिसंबर में। मैं भी आऊंगी, अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी। राइट बाबा। थैंक यू सर। Thank you so much, Auntie. It was a great experience, and thank you very much. So now we'll move to the next and the last but not the least, Kavita Gupta, Kavita Auntie ji. So please, Auntie, share your experience. Share your experience. Share your lifestyle. Hello. Hello. My video is off. My video is off. My video is off. My video is off. Hello. Hello. So there seems to be some problem with her video or audio. So we can wait for some time before she comes. And till then, it was great experience sharing by all the Odisha masters. We are very happy to hear from everyone. बहुत 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 अच्छा रहा आप लोग सबका sharing. It was really significant. So we will try to log in with her once again if she is there. Otherwise, we'll move to the next session. The next session is also very significant. Yes. Hi, Kavita Auntie. Hello. Hello. क्या हो रहा है? Sir, yes. Ji sir, all well, all very good. And there's a wonderful effort of PMC, जिसके through हम सब all over India, worldwide connect हो पा रहे हैं lockdown में भी. So all the gratitude to universe, to the masters and your tireless efforts. So सर मेरे को सर जी सर, तो मेरे को जब इसके लिए मैसेज देने के लिए बताया गया तो मन में एक टॉपिक जो मेरे मन में आया वो था अहम ब्रह्मास्मि। और मन में जब सोचा क्या मैसेज, तो एक कविता बन गई। तो कविता की कविता अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, आज मैं ये उद्घोषणा करती हूँ कि मैं शिव हूँ मैं ब्रह्मा, हूँ मैं उसी प्रजापति की संतान, उनकी उत्तराधिकारी, उनकी गोद में बैठने की अधिकारी। हाँ, है मुझ में वो बात, है वो सच्चित आनंद जो हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं के साथ जोड़ कर रखता है। हूँ मैं वो चेतना जो चेतन स्वरूप परम दिव्य का ही है रूप। नहीं हूँ मैं अलग, नहीं हूँ मैं दूर, ये तन मन धन जीवन सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित है। हाँ, मैं हूँ उसी असीम प्रेम के भंडार का एक बिंदु। हाँ, मैं हूँ उसी प्रकाश की एक आशा किरण, सूर्य की आभा में मंजूषा। हाँ, मैं हूँ उसी महाकाव्य का संगीत,
उसी की कविता, हाँ मैं हूँ उसी महासागर की एक छोटी सी लहर जो उसी में उठती उसी में समा जाती है। फिर कैसा दुख आने का और जाने का, फिर कैसा गम उसमें विलय हो जाने का। आज हूँ, अभी हूँ, अगले क्षण नहीं हूँ, पर जो अब हूँ वो महाशिव हूँ, महाशक्ति हूँ, क्योंकि जान चुकी हूँ स्वयं को, देख लिया निज स्वरूप सत्य का, महातिमिर घनों का, असीम प्रेम की अलख ज्योत जगाकर करती हूँ निज स्वाध्याय व ध्यान। है वो ब्रह्म मुझ में और मैं उनमें, नहीं कोई भेद उनमें और मुझ में। तो जब मैंने पहली बार सर आपसे सुना था, आपने कहा था यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, तो ये बात मुझे डाइजेस्ट करने में टाइम लगा। मुझे समझ में नहीं आया था हाउ आई कैन क्रिएट माई प्रेजेंट, माई फ्यूचर। बट इस बात को समझने में, क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक ब्रह्म वाक्य है, महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, जो यही कहता है कि हमारे इस वर्तमान को, जो जीवन जो प्रेजेंट हम जी रहे हैं, उसके निर्माता हम स्वयं ही हैं। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारा ही करा धरा है, और ये कोई एक नोशन नहीं है जिसको हम अप्लाई कर लें। ये किसी और का थॉट या किसी और का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जब तक हम स्वयं इसको रियलाइज नहीं करते लाइफ में। सो इट वॉज रियली वंडरफुल। मैं पिछले 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ, सिखा रही हूँ लगातार, और मुझे मेडिटेशन के बाद एक सेल्फ एक्सप्रेशन, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कविताएं लिख सकती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किताब लिख पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर आप मुझे फोन कर कर लॉकडाउन का सबसे सुंदर गिफ्ट देंगे, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। दैट्स रियली रियली वंडरफुल। माय वर्क इज ऑन। और ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, ये जब इंसान में ये आ जाता है कि हाँ मैं उन सब में हूँ जो ये गॉड इज इन एवरीबडी, गॉड इज एवरीवेयर, जैसा वो भाव रमन महर्षि ने देखा, जैसा मीराबाई ने देखा, जैसा नामदेव जी ने देखा, जैसा कबीर जी ने देखा, वो भाव यदि हमारे अंदर आ जाए, तो जब ये समझ में आए कि हाँ इस पहाड़ में भी, जड़ चेतन में भी, मेरी हर चेतना में, हर पल, हर श्वास के साथ वो मुझसे जुड़ा हुआ है, तो जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है। और मैं उस आनंद को जी रही हूँ, इसलिए ध्यान के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत आभारी हूँ, और पूरे यूनिवर्स की इस लाइफ की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और जी सर, घर में कैसा है? घर में सब बहुत अच्छे हैं सर। स्वामी जी कैसे हैं? स्वामी जी भी अच्छे हैं, जोर शोर से ध्यान कर रहे हैं। और हमारी जानवी, मेरी डॉटर इन लॉ सर, 9 महीने की हो गई है, उसको पिरामिड में जब लेके जाती हूँ, छोटी महावतार बाबा जी की फोटो लगाई हुई है, उसको पूछो बाबा कहाँ है, तो वो उंगली से इशारा करके बता देती है यहाँ बाबा है। और जी, तो वो बैठती आंख बंद कर करके, उसको बोला आंख बंद करो, अपनी आंख भी बंद करती है। तो दैट्स वंडरफुल। तो आप नानी बन गई? दादी, दादी सर। दादी 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 बोलते हैं। दादी, यस। अच्छा बाबा, चलो, थैंक यू सो मच आंटी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल कविता। आप कविता आंटी से कविता सुनने का मौका हर समय नहीं मिलता है, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लिसन टू दिस ब्यूटीफुल कविता ऑफ अहम ब्रह्मास्मि। So beautiful. Now we have an amazing session by an amazing walk-in master. This is the end of all the Dhyaanolisa masters. So एक बार सारे Dhyaanolisa masters के लिए एक बार बहुत तालियां हो जाए, because everybody was very beautiful and everybody were amazing with their experience sharing. So now over to Sarika to introduce our next master. Thank you so much, guys. Wow, it was amazing to listen to all the Odisha masters spread their wisdom. And the best session that touched me was Dr. Sangeeta Nehra. It really touched me. Thank you so much. So myself, Sarika Saraf, namaskar to all of you. And हमारे गुरु पितामह पत्री जी और सभी एस्ट्रल एंड फिजिकल मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही पेचीदा है, तो इसको मैं किस तरह से समझाऊं? अच्छा ठीक है दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन सिर्फ खाना पीना सोना पैसे कमाना सिर्फ ये नहीं है,
इससे बहुत गहरा है, इससे बहुत आगे कुछ है। और क्या आपको कभी ऐसा भी लगता है कि काश एक बहुत खूबसूरत दुनिया हो जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि इस खूबसूरत दुनिया को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो? और क्या आप अपने आप को इस खूबसूरत दुनिया की रचना करने में हमेशा व्यस्त पाते हैं? और अगर आपकी इन जज्बातों को कोई नहीं समझ पाता तो प्लीज़ डोंट वरी फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। मुझे भी ऐसा ही लगता है और इसी खूबसूरत दुनिया को साकार करने में, इसको सच बनाने में मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया है। और अगर ये अनुभव आपके साथ भी हो रहे हैं तो हो सकता है आप वॉक इन है, हो सकता है मैं वॉक इन हूँ। जैसे कि पत्री सर बोलते हैं ना कि 70 to 80% ऑफ पिरामिड मास्टर्स वॉक इन्स होते हैं। तो ये वॉक इन होता क्या है एक्चुअली, तो जानना चाहेंगे? आई एम तो रियली एक्साइटेड टू नो। तो दैट्स वाई आइए जानते हैं हमारे इस अनोनिमस वॉक इन मास्टर से, जो कि गुमनाम हैं, जिनका नाम पता नहीं है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट वॉक-इन्स, सो I take my honored privilege to warmly welcome this anonymous Gumnam master on our digital stage. So over to the master. Have some friends, if you have some questions, you can put them up. We will take them up after the session. Right? So over to Master. थैंक यू सारिका जी। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम। नमस्कार बाबा। Greetings to all the masters present here physically and astrally. Greetings to those all souls and gods who will be accessing this beautiful sessions, what this PSSM and we all are making. It has been wonderful day long. It was a beautiful morning when our Patri ji gave us this information that we are just being an information desk. It nullifies each and everything, attachment from the soul experiences also. We are just being information desk for all the persons, all the masters who are coming to us for information. Other masters sharing of the information was really beautiful. Now let's start this information desk on walk-in. Simply said, what can be walk-in? An exchange of soul, or a soul leaving one body and another soul coming in. Why does the walk-in happen? Then the question of who decides the time and place and the body even. How does the body or the family cope up with this new soul or the new walk-in? Many such questions would be there. And all these questions can be answered when we become the part of the system, when we become part of our breath, when we become part of that universal consciousness. Oh, knowing the system seems to be a very big thing. Knowing the universal consciousness. Let us start from a very small thing. I'll say we all are walk-ins in our everyday life. Right from the moment we get up, doing meditation, we be our own higher self, our own God. While getting ready, we take care of our body. We be a doctor. We be a person who takes care of our own body.
getting ready for work or for house even. We become a businessman, we become a teacher, a guide, a cook, a writer. Again, interacting with the family person. Again, we change ourselves to a family person. And so on, the list goes on and on. Now, in each and every aspect, we get ready physically and mentally for the role we have to play. Sometimes we need to change our dress, our looks, or just our mental state. Similarly, in walk-ins, the soul changes as per the system requirement and progression. If a soul can take multiple bodies in its course of learning, so can the body take multiple souls in its process of learning. Here, I'll really thank Madam Sangeeta for her beautiful morning session, in which she has beautifully explained the concept of wisdom, surrender, bliss. When we are above the roles of our three chakras, all our physical attachments of this physical realm get dissolved. In this process, our body starts getting prepared for that oneness, wholeness, which was explained by her. It was a beautiful thing, and half of my job was done. The feeling of wholeness is the preparedness, preparing the body for the walkout, to hand over its body and its task to a new soul. This process is again the form of the system. And it can easily explain why the walk-in doesn't want to get birth, because simply it doesn't want to register all the programs which our society feeds in a child. You are a man, you are a girl, you are of Hindu religion, you have to follow these principles. The walk-in doesn't want those programs to be fed in its system. So a body or a person who has come out of his three chakras are activated, who has come out of the physical realm and is ready for the walk-in. She explained the word of surrender, the most powerful word. Surrender is being a entirety wherein you give everything you have, each and everything, your knowledge, your possession, whatever you have. That was her word of surrender, surrender to the universal consciousness. A surrender wherein we give everything to be complete and to be what we really are. Just Shivoham. Doesn't it sound strange of giving away things or surrendering to be complete? From our birth, we have been learning how to acquire things to get that feeling of being complete. We have to acquire wealth, we have to acquire money, we have to acquire name. But giving up everything and surrendering to the system, to the universal consciousness, gives us to access what we really are. Surrendering
is the first process of being what we have surrendered to. If we surrender to Buddha's energy, we become Buddha. If we surrender to Kabir's energy, to wisdom, we become Kabir. If we surrender to the universal consciousness, we become that. We become nothing. Before sitting on meditation, a simple way to be free is to say that I am ready to receive whatever is in store for me. And the system, the universal consciousness finds me worthy enough. Let the wisdom flow. These are the words of surrendering. The system starts its process of making us what it is, the universal consciousness. So, my dear masters, whenever a walk-in happens, it brings in new energy, new wisdom, which gives an instant boost to our journey, to our understanding, each and everything which is happening. These walk-ins come usually from a higher dimension, sixth dimension, or some higher realms. We start seeing which has not been in our sight. We start hearing the things which is not as a sound. Like Madam has said, there's a particular sound of silence. These all can be simply explained like having different class teachers of different standards. It is up to us to get stuck in the same class with the same class teacher, or keep on getting that knowledge, that wisdom, keep on being with our own breath, keep having the trust, and be prepared for another teacher. Walk-ins and walkouts. Why does a person say or want to leave a body? There are certain goals which each and every one of us thinks that, okay, we are supposed to do this thing. Or we find pleasure in doing it, bliss in doing it. That what we find pleasure in doing is the soul goal, which is a betterment for the society. Once any person who feels like that, okay, I am done with my soul goal, or what is next in store for me? I'm done with everything. Like, I have read all the books. No, let me experience something which is not there in the books even. Let me be open for that. And when we surrender, then the system makes a walk-in and a walk-out meet each other. They both meet each other. They feel each other for quite a few sessions. They understand each other. The walkout even understand that whatever my tasks which are unfulfilled can be taken care by this new walk-in. And the walk-in also understands that this particular body which I had be taking, these are the tasks which I have to complete for him. This is the family
which would be there for me, and I can move ahead with my journey. Something like a contract is being done when both of them approve. Approval of walk-in, taking care of all the tasks and everything what the walkout is concerned for. After the exchange, the walk-in might take some time to adjust in the new role of the walkout. It finds the relationships a bit strange, the affection and the love for the family members. It takes time, a little time to develop that. It takes time to get into the professional world of what the walkout was. But there's always a trust on our own self, trust on the system which we are part of, that we will be sailing through it. Once these things get adjusted, the walk-in starts doing everything with a new concept, with a new wisdom, which it brings along with it. As if before that body might be having food, but now the new walk-in can think, why should and when should I have this food? Does my energy system require this energy? The concept and everything is new wisdom. It's like a new filter which comes in. Understanding of the relationship, understanding of the emotions, connecting with the animals, with the tree. As if they are connected in two planes. Firstly, doing the task physically, and secondly, staying connected with the Akashic records and the universal consciousness. These all changes can be noticed by the being. At that time, the body even comes to know that yes, I am not that same person who was there about a year ago or about 2 years ago. I am something else. I have changed in each and every sphere. My form of entertainment, my form of eating or meeting people, everything has changed. Basically, the whole living pattern changes. This whole process, the basic principle is staying connected. Let us all remember this thing. The connection with the universal consciousness, let that being do the task as per the system requires. His intuition of working, of doing the things, the intuition becomes so powerful that the being just follows it. And it can't take out any reasons for doing most of the task because the trust and surrender is there. If someone asks, why are you doing this? There's no answer to it. The simple answer is because I feel like doing it. The reasoning and every reasoning is connected with a program. But when
It is with the whole system, with the whole consciousness. The program ceases. It just wants to flow with the flow and finds bliss in doing it. One of the tasks of the walk-in is to assist other walk-ins in getting adjusted in this plane. Maybe this session is for few of the walk-ins who are there. As the beings start living in the principle of just being a medium, just being a co-creator, creation as per the system desires, this thing develops a feeling that it is away from the result or the outcome. This state of being away and not connected with the result. I am doing this thing because my inner self is telling me to do. This state itself is the nirvana. And this surrendering to the system is the samadhi. When we all are the living samadhis when we work with the system. The pain in any animal, that pain can be felt in us. The beautiful book of Untold Story of Sita. It's a beautiful way of saying this thing, of becoming oneness, of becoming wholeness. The walk-ins collaborate with other walk-ins to spread these wisdom and eventually raise the energy of other beings. It is our duty to help the other people also and bring them in bliss. And this is the reason why our Guruji Patriji says that 80% of the PSSM masters are walk-ins. And it is at this beautiful organization of PSSM only that we all masters can share our wisdom openly. We all have been having so much of knowledge and so much of questions crop up. We all talk about past life, soul baggages, soul plans, soul learning, and the list goes on. But what if the soul changes? What happens to these things when the soul itself changes? This is the other side of the walk-in, which teaches us not to get attached with the soul learnings also. These learnings, these wisdoms were there earlier and will always be there. We cannot own it. We cannot name it. So we cannot get attached to it. We can just be at the information desk and tell them whatever information is there with us. All these learnings and wisdoms are just pathways, are just the routes which we all masters have traveled through. And it takes us to that universal consciousness, the system itself. These learnings are just road to the system and not the system itself.
So, my dear masters, we have known why does a new soul come in for the new energy, for the new wisdom. In the years to come by, the walk-ins would be more here to raise the energy, to let the people know the truth of their fear, their sadness, and what they really are. The family of the walk-in also gets prepared. They are the immediate ones who notice the changes. But these changes are not new. From the time we all start doing meditation, maybe 10 years ago, maybe 15 years ago, this particular change was also noticed by the family. How we all are sitting in the meditation for hours and hours. Our children know us, how we have stopped taking medication, stopped going to the doctors. So the changes become a part of our life. The family takes this as a change also. My dear masters, walk-ins are just one of the process of being that universal consciousness. It is like when we come out of our mind and body, we know that we are a soul. But we know, when we come to know that we are not, the soul can also be changed. We become the part of the universal consciousness. We just become a Shivoham. Let us all do a small meditation on this before taking up the questions. I'll request the moderator to start the music.
नित्यशुद्ध विमुक्तोऽहं निराकारोऽहम् अव्ययः भूमानन्द स्वरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः शुद्ध चैतन्य आत्मा रामोऽहमेव च अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः from all attachment. I am the nature of existence, consciousness, bliss. I am ever liberated. I am formless. चैतन्यरूपोऽहम् शान्तोऽहं प्रकृतेः परः शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः तत्त्वातीतः परात्मा मायातीतः परः शिवः मायातीतः परं ज्योतिः I am beyond all the Maya, the Prakriti. I am my very own self. I am the supreme auspicious one. नानारूप व्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः
I am beyond all the different forms. I am the nature of pure consciousness. I am never subject to decline. I am the very self, indestructible and changeless. अन्तर्यामि स्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् सर्वसाक्षि स्वरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः I am the inner controller. I am all what is pervading. I am being myself, the supreme self I can be. I am the very self, indestructible and changeless. निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च आप्तकामस्वरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः I am without any support, and I am the support of all. I have no desires to be fulfilled. As I find bliss to be with universal consciousness. तापत्रय विनिर्मुक्तो देहत्रय विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षस्मि अहमेवाहम् अव्ययः I am free from the three kinds of affections, those in the body, those from other beings, and those from the higher processes. I am different from gross, subtle, or casual bodies. I am the witness of the three states of walking, dream, and deep sleep. I am the very self, indestructible and changeless. असङ्गोऽहं पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः अहमेवाहम्
unattached I am, ever free from the attachment of any kind. I am the bliss. There isn't any sort of Maya which affects, such as the body for me. I am beyond the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas. I am the witness of even Brahma and others. Everything what we say, like pot, wall, everything is nothing but clay. The entire universe is nothing but Brahma. I am the auspicious one, the inner light, higher than the highest. I am self-luminous. I am the bliss in the universal consciousness. Thank you, my masters, to give me this opportunity to just be what I am. So it was an awesome, amazing session. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, और इतने सारे आंसर्स मुझे मिले और इतना अद्भुत लग रहा है. शायद अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों मैंने आपको होस्ट करने के लिए चुना. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और क्योंकि आपका कोई चेहरा नहीं है, मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है, एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मन की आंखों से आपको देख पा रही हूँ और आपको अनुभव कर पा रही हूँ. So, shall we start the questions now? Yeah, please, Sarika ji. Okay. So the first question comes from Shipra Agarwal. She wants to know that we all know that a soul is born to the earth plane for learning lessons. What if he leaves the body in half of his journey or learning and walk-in takes his place? What about the original soul? The original soul and the walk-in both have a particular contract. Even the learnings, the soul is not going to go anywhere without the learning, and the soul is not going to get dissolved. There's no time in the quantum plane where the soul goes. So there's nothing which is partially left and which the soul has missed out. The walkout soul has missed something. It is only after the affirmation and after the clearance of the walkout soul that the walk-in takes place. And the walkout soul, it depends on itself. It wants to take the learning again, then it will wait at the soul plan to come over to the earth again. Or it has evolved so much that it can go to the higher dimensions. So there's no fixed that what the walkout soul would be doing. Yes, thank you so much. This has answered the question very well. And her next question is that are all walk-in
are all walking souls able to adjust the body as both soul frequencies will be different? Did you get my question, The sir? walk-ins, the preparation of the body. Yeah, I got your question. The preparation of the body, which the system takes place, like sitting in the meditation, understanding of the things, the initial things, what we all go through, we all understand that, okay, we are not the body, we are not the mind. So when we all go through this process of understanding and taking in the wisdom, it prepares our body. For example, I'll tell you I'll just give you my example how my body prepared itself. After a particular session, the system was like that I didn't wanted to eat anything. No, there wasn't any reason. I want to be on prana, how long I want to be, when it will end. There were no answers. The family was also concerned, why am I not eating? But I wasn't having any answers. When the food was served, I just felt like from the inner calling, I don't want to have this food. I just don't want to have. And there were many days has passed, about 40 or 45 days that I was without a food. So this is a way my body was prepared each and every cell. When we are on a prana, each and every cell of our body gets prepared to take the prana directly from the atmosphere. It was a way of purifying the body. So the walk-in knows that, okay, this is the body and it is prepared at this level and this is perfect for me. Like we all choose our parents before getting birth. It is the same way the walk-in also chooses the body. I hope it answers your question. The questions perfectly. So walk-ins also choose the body before birth? Yes. Walk-ins also chooses the body and the walkout also chooses that, okay, this walk-in is okay for me to hand over my body to them. That is why those sessions happen in a dream, during a meditation. When we connect with higher bodies, like Mahavatar Babaji, when we connect with any other great souls, so those are the process wherein those exchange of information does happen. When we are asleep in an unconscious state, many a times the walkout leaves the body at the night and the walk-in sleeps in the body to get accustomed to it, with the principle that, okay, in the morning, the walk-in will again move away and the walkout will come in. So it is a gradual shift. In both of them decide that, okay, this soul is okay to hand over the body and this body is okay to take for me to take over. And so what about, like I've heard in case of accidents or long illnesses, when the walk-in comes in, what about that? I mean, how will he adjust? How will that soul adjust with this body in that case? It never happens that a walk-in has come in and an accident has happened, because the walk-ins are from very much higher dimensions. They know the course of the life or the journey this body would be going through. Like we all tell each and every other person that we decide our course of journey and then we take our birth, then we decide our parents. The same way is the walk-in. The walk-in decide, it knows that, okay, this would be the journey and this body is okay for me. It very, very seldom happens any kind of accident, because the walk-in is always connected with the universal consciousness. This is the base principle. And when we are connected with the universal consciousness, everything will happen as per its own path, as per its own flow. The walk-in knows that when it has been given the body, it is going to stay with the body. Thank
you so much, sir. I hope, Shipra, your question is perfectly answered. Now have another question. Does a walk-in know all the memories and have attachment of walkout? Memory, yes. All the walk-in has the memory of the past body, past soul, which it needs to carry out the unfulfilled task. There are many memories which it doesn't remember from the very beginning, but the family and the other partners are there, the other walk-ins are there to help them. So that is why the walk-in takes some time to adjust. It's just like a child or a boy who has entered into a hostel life. There would be teacher, there would be everyone to take care of him, how he has to sleep, where he has to sleep, to get into the routine. So the same way the walk-in has their own partners, and the walk-in knows this thing also. If this kind of psychological thing or emotional thing will happen, whom should I refer to? Wonderful. I hope your questions are being answered. So I have another question from Shashank. After leaving the physical body once, why the walk-in souls choose to move into a physical body again? And how do they choose the physical body in which they want to walk in? See, these circumstances, like if I'll take an example of Kabir. When Kabir was here on the earth plane, the earth energy was different. Now the earth energy is different. We all know about it. Its frequency has also changed. So maybe the learnings, what the Kabir soul couldn't have been possible at those times. So this time again, with the higher energies, the soul can come in and it knows that, okay, at this frequency, this plane, I can come in and take that learning. So it depends on the energy and the system of Earth, the whole planet system. Thank you so much, sir. Really, so many questions being answered. Now I have another question from Sashank. Why walk-ins want to come to the other person's body? Why don't they start their own journey in spite of all the freedom given by the universe? And why didn't they complete their own journey when they were on earth? I think this question has been answered, Sashank, but won't it again create a new karma, and how that will be balanced? See, we have to understand how a karma is created. Whatever we do, if we get attached with the result or with the outcome, that is the only time when the karma is created. When we keep ourselves detached from any kind of, when we are part of the universal consciousness and when we are part of the flow, like just now, a ma'am has told that she has fallen in the Ganga river. Yes. No, she wasn't controlling her where she is going and how she is going. She wasn't the controller. So the beautiful thing is here, we are in the flow. We can only and only do one thing, and that is to allow ourselves to surrender. So I think the questions for today are over, and I'm really heartfelt gratitude to Master to answer so many questions. It was an amazing session, and I would like, if he wants to say something, I would like him to come on our digital stage. Well, you must read the book Strangers Amongst Us by Ruth Montgomery to understand about walk-ins. I advise everybody to read that book. Strangers Among Us. By Ruth Montgomery. That is when I learnt about walk-ins in the year 1985. Then I knew that I was a walk-in because everything was tallying.
80% of our period masters, they are all walk-ins. If they analyze a little, they will understand when they walk into the body. All walk-ins are one big family, particular family. As he said, every walk-in comes for helping every other walk-in. Born-ins are different, walk-ins are different. And I'm very happy this topic has been given a place in this digital Dhyana Yagna. Yes. Thanks to the speaker, anonymous speaker. Yes. Thank you to the anonymous speaker. प्रणाम पत्री जी, प्रणाम. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ऐसे हूबहू ऐसे सामने सामने बात करने में. तो आपको बहुत बहुत प्रणाम. और आप ही की मतलब इंस्पिरेशन से अभी एकदम जी जान से एक आग लगा हुआ है अंदर में कि हम एकदम दिन रात अपने आप को व्यस्त रख रखे हैं. और बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशियाँ फैलाने में, इतने लोगों को ध्यान सिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है. और हमेशा आपका हाथ हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे. आप कहाँ से हैं? मैं भुवनेश्वर से हूँ सर, भुवनेश्वर से. सारिका. अच्छा, ठीक है. जब 5 साल से ध्यान सिखा रही हूँ. और ये वॉकिंग्स में मुझे इसलिए इंटरेस्ट था कि मतलब ये मास्टर्स का मैसेज ही अंदर से आता है कि अभी अपने घर में 40 दिन का ध्यान रखो. तो फिर मैं रखती हूँ तो बहुत काम रहता है, लेकिन मास्टर्स जब बोलते हैं कि ये 40 दिन का ध्यान रखो, दिमाग में आता है तो फिर मुझे रखना ही पड़ता है घर में. और फिर जब रखते हैं घर पे तो पूरा अपार्टमेंट से सब लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं, एकदम भर जाते हैं और अपने आप ही सब कुछ होने लगता है. तो 5 साल से ऐसे 40 दिन के ध्यान करते करते अब हमारे पास 80-90 मास्टर्स हो गए हैं जो कि रेगुलर ध्यान कर रहे हैं. उसमें से हमारे पास थर्ड आई मास्टर्स हैं, हमारे पास एक मास्टर है जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का ट्रांसलेशन कर रही है और हम उसको सभी ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं. हमारे पास एक मास्टर है जो लॉ ऑफ कर्मा का ट्रांसलेशन कर रही है, टॉर्कम सारदारिया का, उसको भी हम सब ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं. हमारे पास एक मास्टर है निर्मल जी जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और हमारे जितने भी 5 साल के कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस पर एक किताब लिख रहे हैं कि जो कि सितंबर में रिलीज़ होने वाला है. और उसके लिए वो पिरामिड्स का भी सारे सब तरह से हर तरह के पिरामिड्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं. और आप ही के मतलब मार्गदर्शन से यहाँ पे हम लोग चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं. हम लोग को मतलब वो आग लगी हुई है कि बस खुशी फैलानी है. रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन हमारे किसी भी मास्टर के अंदर में वो इतना नहीं है. हम चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं. हमको एक मैजिक स्विच मिल गया है कि कोई भी दुखी हो तो बस उसको ध्यान सिखा दो और उसको ब्लेसिंग्स टीम में ऐड कर दो. और ये ब्लेसिंग्स टीम का नाम भी मास्टर्स ने ही मेडिटेशन में दिया था 5 साल पहले कि इस टीम का नाम ब्लेसिंग्स रखो. और हमारा एक फ्री लाइब्रेरी है जहाँ की हम स्वाध्याय करते हैं और रोज़ एक बुक का ट्रांसलेशन करके हम रोज़ योगा करते हैं, फिर ध्यान करते हैं और फिर स्वाध्याय करते हैं. और बहुत खूबसूरत जर्नी चल रहा है हमारा. वाओ वाओ वाओ, ये तो बहुत बड़ा लिस्ट हो गया आपका, बहुत बड़ा हो गया था सब मास्टर्स लोग का कृपा से. और एक नया चैनल भी हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम जितने भी ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको अपलोड करेंगे. रायपुर के एक मास्टर के कोलैबोरेशन, मनीष जी हैं उनका नाम, उनके कोलैबोरेशन में हम ये चैनल खोल रहे हैं PSSM ऑडियोज एंड वीडियोज, जिसमें कि हम ये सीतायान और लॉ ऑफ कर्मा और तुलसी दल भी हम कर रहे हैं. तो ये सबको हम अपलोड करना नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में हमको बहुत टाइम मिल गया ये सब काम करने के लिए. तो हम लोग ये नेक्स्ट वीक ही इसको लॉन्च कर रहे हैं. तो इतना अच्छा लग रहा है कि इस दौरान आपका आशीर्वाद मिल गया, आपके दर्शन हो गए. ब्लेसिंग्स टीम में सब बहुत खुश है और सब आपको देख रहे हैं और सब चाहते कि आप जल्दी से भुवनेश्वर आए और हम लोग को एकदम साक्षात दर्शन दें. Sarika ji, I would like to thank people. हमारे गुरु जी ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उनके बिना ये सब कुछ पॉसिबल कुछ भी नहीं था. वो ही एक वॉक इन है जो हम सबको का एक हिम्मत दिए हैं कि जाओ आगे, कुछ नहीं है, बस अपने सांस के साथ जुड़े रहो. उन्हीं की इच्छा से ही ये सब कुछ हो. अगर 30 साल पहले ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो आज शायद ही कोई भी ऐसे मास्टर्स इतने सारे जो हैं वो कैसे अपने विजडम शेयर करते हैं. उनका दिखाया हुआ राह अपने सब कोई के लिए है, अपने सबके लिए एक लक्ष्य मिल गया है.
कि चलो अपने आप को जाने। थैंक्स टू ऑल दी PMC मास्टर्स जो पूरा एकदम देख रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हैंडल कर रहे हैं, टू ऑल दी उड़ीसा मास्टर्स टू मेक इट हैपन। एंड अगेन thanks just to let me for being myself. Thank you everyone. Right. To Sashank, our digital stage to Sashank. Yes. Thank you so much, Sarika. You hosted such a nice session, and it was really very a session full of wisdom. अभी कितना कुछ जानने को मिला हमें walk-ins के बारे में, that how they operate and कैसे क्या करते हैं. So it's been a long day now. सुबह से हम बहुत सारे सेशंस के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज को हमने जान लिया है, काफ़ी कुछ हमने अभी अपना लिया है. तो अभी इतना कुछ सब हमें भर गया है. So what say, it's time for a nice music healing session. So now we are having a sound healing session जिसमें we will have Mahesh Kanoje from Maharashtra. He is a super duper person. He plays different instruments like djembe, didgeridoo, singing bowl, and many other instruments and make people meditate on them. So म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो हमें एक ट्रांस स्टेट में आराम से लेके जा सकता है, बिकॉज म्यूजिक हैज इट्स ओन वाइब्रेशन दैट कनेक्ट्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. आपका कभी भी कुछ मूड थोड़ा सा खराब हो तो आप एक म्यूजिक सुन लीजिए, कैसे आपका मन एकदम बहुत प्रसन्न हो जाता है. सो म्यूजिक हैज सच पावर टू जनरेट आवर सेल्स. So for this beautiful sound healing session, I would like to invite Mahesh Kanoje, who is the founder of Sound of Emptiness and the founder of Elements of Nature. In Elements of Nature, he is dealing in crystals and pyramids, जो वो सबके साथ बांटते हैं, and he shares the knowledge of crystals, pyramids, and other materials, substances that has their own energy, and जिसको आप अगर अपने साथ रखेंगे तो you'll feel very energetic. So with all my heart and heartfelt gratitude, I invite Mahesh Kanoje to take over the sound healing session. नमस्कार स्वामी जी. नमस्कार. पहले आपके बारे में सब कुछ बताइए हमें. जी सर. पहले तो सर आपको नमस्कार, और जितने भी पिरामिड मास्टर से सभी को मेरा प्रणाम. मैं थोड़ा जर्नी के बारे में बताऊंगा. मैं मेडिटेशन कब से स्टार्ट किया हूँ. 2012 से मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया हूँ. मेरे फ्रेंड थे राहुल नागपुर से, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. काफ़ी बार बोला उन्होंने मुझे कि भाई ध्यान करने चलो, ध्यान करने चलो. बोला क्या ध्यान करते, क्या होता क्या. लाइक एक मीथ बना हुआ था कि ये मेडिटेशन बस ओल्ड एज पीपल के लिए है, तो बोला चलो इग्नोर कर रहा था. फिर एक चीज़ था कि चलो, फिर वो रिपीटेडली फोर्स कर रहा था. बोला चलो एक बार जाके देखते हैं. तो यहाँ से नागपुर से कुछ डिस्टेंस पे भंडारा पिरामिड है. उस दिन फुल मून था, तो हम लोग सारे गए थे यहाँ से. और मेरा जो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा मेडिटेशन का, मेरा फर्स्ट सिटिंग था कि 3 घंटे में मेडिटेशन के लिए बैठा था. 3 घंटे, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुए थे मुझे, क्योंकि फुल मून था. पिरामिड के अंदर हम लोग ध्यान कर रहे थे, सामूहिक ध्यान हो रहा था. तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट हो रहा था उस चीज़ का. तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए उस दिन. तो मुझे नयापन लगा, मतलब ये 3 घंटे में उठा नहीं, बोला है क्या ये सारी चीज़ें. तो मुझे क्यूरियोसिटी थी और कुछ जानने की. तो मैं और एक समझ, उससे मेरी समझ बढ़ती गई आगे. जैसी एक था कि हम चीज़ों को बाहर देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मतलब एक समझ पड़ी कि वो जो भी बाहर हो रहा है, जो मेरे अंदर ही मैं खुद देख रहा हूँ उस चीज़ को. मेरा एक परसेप्शन है उस चीज़ को देखने का. तो मेरे जैसे एक बैड परसेप्शन है, तो मुझे एक अवेयरनेस आया कि मैं उस परसेप्शन को खुद चेंज करूँ, कि भाई ये सारा चीज परसेप्शन मुझे ही चेंज करना है अगर मैं बाहर अच्छा देखना है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, चेंजेस आई है. और उसके थ्रू मैं म्यूजिक से जुड़ा, काफ़ी
ऑटोमेटिकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास आते गए। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिदम मेरे अंदर है, एक्चुअली मैं कहीं सीखा नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली वो रिदम आते गए, वो म्यूजिक से इंटरनली वो सब आते गया। और वही है कि जैसे आप बांट रहे सर मेडिटेशन, मैं भी वो ट्राई कर रहा हूँ कि ये सारे म्यूजिक के थ्रू मेडिटेशन में स्प्रेड करूँ। और ये लॉकडाउन जब से है, मैं किसी को भी रैंडमली कॉल कर रहा हूँ और कैसे हैं आप, कैसे नॉर्मली बात करके वो होने के बाद चलिए 10 मिनट ध्यान कीजिए, तो रैंडमली कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ के फिर वो प्ले करना और उनको मेडिटेशन करवाना। ये जस्ट यही सर, लॉकडाउन में बस आग डाउन करें और एंजॉय कर रहे हैं सर। ओके बाबा। जी सर, तो स्टार्ट करें सर? यस यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। चलो। जी सर, स्टार्टिंग में यही करना है कि जैसे नॉर्मल हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, बस वही करना है। बस स्टार्टिंग के जो ब्रीथ है, थोड़ा सा 2-3 ब्रीथ आपको डीप ब्रीथ लेना है, डीप ब्रीथ छोड़ना है। और बस अपने आप को पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। एंड ट्राई कीजिए कि हेडफोन यूज़ करें, अगर पॉसिबल है तो हेडफोन यूज़ करें। अच्छे साउंड के लिए, अच्छे साउंड को एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन यूज़ कर सकें। थैंक यू।
यहाँ पे करेंगे। Hello. Now, very slowly and gradually, come back to your normal senses. अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करें और आराम से सेटल हो जाए. We had a really great session, महेश भैया. जो म्यूजिक आप बजा रहे थे, we could totally feel vibrating within our body. जो डिजिरिडू आपने बजाया, जो सिंगिंग बॉल आपने बजाया, जो हैप्पी ड्रम आपने बजाया, वो सब कुछ बहुत बेहतरीन था. आई होप हमारे सभी दर्शकों को काफी मजा आया होगा इस सेशन में. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. बस एक बात बोलना था. एक्चुअली काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से मैं कभी कैसे सीखा नहीं हूँ, उतना कुछ. जो मेरा म्यूजिक से मेरे अंदर से आ रहा है, ठीक है. मतलब एक रिदम था मेरे अंदर, और यही रिदम सभी लोगों में है. कोई एक ट्यून स्टार्ट हो जाती है लाइक, तो हमारे हाथ ऐसे हम कुछ पैर थिरकना चालू हो जाते, लाइक हम अपने गर्दन को ऐसे करना चालू कर देते हैं. तो मतलब सभी में रिदम है. अपने रिदम के साथ जुड़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा डीप मेडिटेशन में जाने के लिए. आप एक बार ट्राई कीजिए. और वही एक जो हम बोलते हैं हैप्पीनेस, जॉय, आप इस रिदम के साथ जुड़ जाएंगे तो आप वही हैप्पीनेस और वही जॉय के साथ जुड़ जाएंगे. अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है कि हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ, मस्ती के साथ लाइफ को जीना ही है. तो बस रिदम आपको वहाँ तक भी ले जा सकती है. तो बस अपने रिदम के साथ कनेक्ट रहिए, अपने साथ कनेक्ट रहिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Mahesh Bhaiya. Thank you so much for coming here and giving us this blissful experience. मुझे बहुत मज़ा आया और काफ़ी बाकी लोगों को भी बहुत मज़ा आया. Thank you so much. So guys, with this now, I would like to call Anubhav Agarwal for the next session. Thank you. Thank you so much. A wonderful sound lead is Mr. Andrew Cohen, all the way from USA. Andrew is an internationally respected spiritual teacher and the founder of Evolutionary Enlightenment. At the age of 16, Andrew experienced a spontaneous revelation of cosmic consciousness, which marked the beginning of his spiritual journey. A fateful meeting with the revered master, Sri Harivansh Lal Ji Punja, in 1986 marked a life-changing awakening in him, and he quickly began developing a unique spiritual teaching. Today, he will be joining us to speak about the evolution of enlightenment. Welcome, Andrew. How are you? Happy to be with you. Hi, Andrew. Hi.
a very warm welcome to you, Andrew, for here. And without furthering any delay in this session, I would request you to please take over the session. So I was told that should I give a talk? Or I thought I was told that someone wanted to speak to me about the evolution of enlightenment. Swamiji, namaskar. Oh, nice. How are you, sir? Nice to see you. Namaste. We are all waiting for you. Thank you. So nice to see you, sir. Mm-hmm. Where are you now? I'm in Bangalore. Okay, sir. In Bangalore city, in our apartment. And where are you? I am in Hyderabad. You're in Hyderabad. Okay. Yeah. Very nice to see you again. Locked up in Hyderabad. The whole world is locked up. But still, we are able to see Andrew. So that's very sweet. I was listening to your, a few days ago, I was listening to you speak about the three selves. About the ego and the soul and the cosmic self. Yeah, that is from the book, Going Deeper. I very much appreciated and was agreeing with those distinctions. I took it from the book, Going Deeper. I also thought it must have been from your own direct experience. I don't have any experience like you. I don't believe you. You must believe me, Baba. I'm a good man. You must believe me. I don't think a man with no experience could attract thousands of people like you do. I am a good man. My goodness attracts. And but the goodness speaks of higher truth, cosmic truth, absolute truth. That I learn from others like you, and then repeat. Maybe so. I don't know. I listen to all the enlightened masters, and they absorb some of it, and then radiate it, retell it. Yes, sir, we are all waiting for you. So I was told that the host, I was told he wanted to interview me about the subject of the evolution of enlightenment. Please proceed, sir. I was told he had questions, so should I give a talk? Yes, sir, you should give a talk first, then answer the questions. Okay. So we're going to have a expression of yours in this topic for some time, and then we will have a Q&A after some time, after you're done with the expression. And how long?
happened 14 billion years ago. There was a great leap from nothing to something, from formlessness to form, from being to becoming. And this leap from nothing to something, from being to becoming, from formlessness to form, was the beginning of time, the beginning of the creative process, and the beginning of the evolutionary process. So in order to understand your question, we begin to understand that the evolving universe, the universe is not a static place. The universe is in a state of becoming, is in a state of constant creative evolutionary becoming. The universe is in a state of growth and infinite complexification and infinite emergence. So out of timeless, formless, beginningless, and endless emptiness or nothingness, a creative process was unleashed. And a creative process began about 14 billion years ago, and this creative process is still continuing. And in the midst of this creative process, human beings emerged. Apparently only about 200,000 years ago, human beings emerged. Out of this mysterious creative process, human beings emerged. And what made human beings so extraordinary was that human beings are the only forms of life that have this miraculous capacity for self-reflective awareness. In other words, in human consciousness exists the ability to be aware of awareness. Dogs and cats and birds and snakes have the experience of consciousness, but they don't have the capacity to be aware of consciousness. Human beings are the only forms of life that have the capacity to be aware of awareness or to be aware of consciousness. And this is what makes human beings so unique in the evolution of the universe and the evolution of life. So what's most miraculous about this evolutionary process is that in human consciousness and in human cognition, there's this miraculous capacity for self-reflective awareness, or for consciousness to become aware of itself. And within this miraculous capacity of self-reflective awareness or consciousness being aware of itself, the creative process that we've been speaking about, the creative process of infinite becoming, simultaneously gains the capacity to awaken to itself or to become aware of itself. So in human beings, evolution, or the creative process that is the universe in a state of constant becoming, becomes self-aware, which means that in human beings alone, in the unique consciousness of human beings, the universe gains the capacity to become self-conscious or to become aware of itself. So when the universe becomes self-aware, becomes aware of itself, in the self-reflective awareness of highly evolved human beings, the creative process becomes conscious, becomes self-aware. So human beings have the unique capacity to realize, awaken to, and become aware of the ground of being, the timeless, formless, beginningless, and endless womb of creation. So it's a place where time doesn't exist, and where space doesn't exist, and where mind doesn't exist, where no thing exists except a primordial transcendental mystery. So human beings have the capacity to realize this ultimate mystery. And this is what, for example, the Buddha realized, this ultimate mystery. And human beings also have this simultaneously the miraculous capacity to become aware of the creative process, of the evolutionary impulse, of the energy and intelligence that created the universe and that's creating the universe. And to be aware that out of this timeless and formless emptiness, this nothingness, this isness, this beingness, this creative unfolding is emerging and has been emerging. So the answer to your question is that the universe is both being, immortal and absolute, and becoming. The universe is still, the absolute is stillness and emptiness and timeless and formless, and free from becoming, and is becoming at the same time. Both are happening simultaneously, and both are the expression of Brahman or the expression of God. Are you still there, Mr. Arubhav? Is he still there, or should I continue to speak?
Yeah, hi. I'm still here, and I'm trying to absorb the wisdom that you've been sharing. So And, my answer to your question is that the universe is both the absolute, the nature of Brahman, the nature of God, is both timeless and formless and beginningless and endless, transcendental nothingness, that is absolutely static and unmoving and untouched by anything that ever happens in time. That is the absolute. And the absolute also gave rise to the creative process. This timeless, formless emptiness, which is the womb of creation, gave rise to time and space and form and life and mind. And all this, and the creative process that is the evolving universe, that is the manifest universe, is emerging from this timeless, formless emptiness. And both are Brahman. One is unmanifest Brahman, and the other is manifest Brahman, but both are Brahman. But manifest Brahman and unmanifest Brahman is a paradox. Because the unmanifest Brahman is uncreated, unborn, unbecome, timeless, formless, and empty. And manifest Brahman is the entire evolving universe that's in a state of becoming. The universe is on a journey of becoming. It's a journey of endless complexification and higher development. And because first there was light, then there was energy and matter, and from energy and matter there emerged life, and from life, mind. And this whole miraculous process is continuing, and it's going to continue eternally into the unimaginable future. So Brahman is both being and becoming. Brahman is both timeless, formless, beginningless, and endless, infinite, inconceivable, transcendental being. That's when in India when we chant Om, is the vibration of being, of timeless, formless. The freedom of being is Om. But Om, or timeless, formless freedom of being, is only half the picture of Brahman. Brahman also took a leap, and Brahman took form as the whole evolving universe. And you and I are part of Brahman in a state of evolution. And the most, as I was trying to explain a few minutes ago, the most extraordinary aspect of Brahman, who's in a state of becoming, is this miraculous capacity that's emerged in human beings, this capacity of self-reflective awareness. Because in human consciousness and human cognition, awareness gains the capacity to be aware of itself. Consciousness gains the capacity to be aware of itself. So God, or Brahman, can know himself and herself through human consciousness in a way he can't through the consciousness of a snake or a dog or a horse or a tree or an ecosystem. So in human consciousness, Brahman gains the capacity for self-knowing and self-cognition in a way that's not possible in other forms of life, which makes human beings which makes our presence in this universe so profound and so extraordinary. Andrew, that raises one more question in my mind. And so if we're saying that the cosmic consciousness is in a constant state of becoming, and it is also being, so it's both at rest and in a state of becoming at the same time. Yes, it's a paradox. Yes. On one side, there's no movement. There's infinite rest and infinite being. That's always perfect. Yeah. On one side. Yeah. And the other side is this infinite state of becoming and infinite creativity. Right. So in humans, we are all aware that in humans, there are some people who are more evolved than some other people. So is it that in the entire human race, we are seeing all the stages of evolution right now at this particular moment of time? No, we're not seeing all the stages of evolution. We're seeing evolution at a particular stage. We can see where we've come from. Where we can see where we've come from. But where we're going in the future is as yet unimaginable. Because there are higher states of consciousness and higher states of cognition and higher levels of complexity that we are not yet at the stage that we can actually even able to conceive of them. They will come into being in the future, but they don't exist yet.
So from where we are now, we can see where we've come from, and we can glimpse the immediate future, but we don't know where we're going to be in 1,000 years, and we don't know where we're going to be in 10,000 years, and we don't know where we're going to be in 100,000 years or 200,000 years or 1,000,000 years. It's inconceivable how consciousness is going to evolve and what consciousness is going to be capable of in its infinite creativity 1,000,000 years from now is beyond imagination. So the universe is in a state of constant innovation, and human beings are playing a very significant role in the capacity of consciousness to innovate and to create itself anew. Human beings are the only forms of life that are capable of innovation and creativity. Human beings are programmed to give rise to that which is new, that which has never existed before. So human beings are driven to give rise to that which is new, that which has never existed before. And all truly great geniuses, whether it's in art or music or science or politics, all geniuses give rise to something that never existed before. Great geniuses give rise to that which never existed before. So there's a force in the universe called the evolutionary impulse. The evolutionary impulse is the force of creativity in the universe that when it awakens to itself in human beings, those human beings become geniuses. And those geniuses give rise to something that never existed before. So the universe is trying to create itself anew through us. It's not Andrew or Patraji as individuals. It's the energy and intelligence that created the universe is trying to create itself anew at a higher and more complex level through creative geniuses. So that's why when Einstein realized his theory of relativity, the world was never the same, because this was a new idea. It was a new concept. It was a new way to understand things. When the Buddha had his enlightenment, his understanding of enlightenment was a revolution at that time. So he had a new unprecedented insight about the nature of moksha, about the nature of consciousness. So what's very fascinating is to see that the universe is constantly trying to reinvent itself at higher and more complex levels, and higher and more complex levels, and higher and more complex levels. But to do that, it needs to do it through the forms of life that it created. So you are and I am not merely the human beings we appear to be, but we are really the energy and intelligence that created the universe, realizing itself or awakening to itself through the human beings that we appear to be. But our human beingness, our maleness, our femaleness, and our relative egos are just vehicles. They're not really who we are, and they're not the reason that we're here. I believe, it's my understanding, that we're here to co-create the universe with the energy and intelligence that created in the first place that's creating it right now. But in order to do that, we have to become enlightened or evolutionarily enlightened. We have to realize who we really are. I'm not merely Andrew Cohen, who was born in New York City in 1955, but I'm the energy and intelligence that created the universe and that's creating the universe right now, awakening to itself through the body, mind, and personality of Andrew Cohen, who happened to be born in New York City in 1955, and who realized when he met his guru that his body, mind, and personality was just a vehicle, and it's not really who he is. It's a vehicle for what? A vehicle for consciousness. The body, the mind, and the personality is a vehicle through which consciousness can evolve. And so when I realize my body, my mind, and my personality is not who I am, but is merely a vehicle through which the energy and intelligence that created the universe can consciously create itself, we discover a completely different reason to exist, a completely different reason to be ourselves. And I think that's the whole point of moksha, the whole point of enlightenment. Thank you so much, Andrew. Thank you. That was like, I've been looking for this answer for quite a long time, and you've answered the question very well. So we want to, along this question, we want to understand that the universe is evolving, and the universe has an outside and an inside. And the outside of the universe is matter and energy, and the inside of the universe is consciousness and subjectivity. So the universe is evolving inwardly and outwardly. And when human beings experience the spiritual impulse, when we just experience the spiritual impulse as the
desire to become more conscious, when I awaken to a spiritual impulse and I feel a desire to become more conscious, what's really happening is the universe is trying to become more conscious through me. I think, my ego thinks this is my spiritual desire, my spiritual need, but in fact, it's really the universe trying to evolve through me, or the energy and intelligence that created the universe trying to evolve through me. Right. Andrew, we have a couple of more questions for you. Yeah. So what is your thought on the current pandemic that is going on around the world, that is the coronavirus? And how do you think that this lockdown will help in human evolution? Well, I hope. I have no big theories about this particular pandemic. I have no big theories about it, but I hope this will help us all to become more human, more loving, more compassionate, more caring about the environment. I hope this will help us to become less materialistic, less egotistical, more interested in inner development, being more interested in the source of the soul. And I hope this will help us to find deeper values and a deeper source of meaning in our own existence, because so many people are just we're running after security, running after materialistic desires, running after money, running after possessions. And hopefully this lockdown will help people to slow down and maybe to think more deeply about the big fundamental spiritual questions, which is, who am I and why do I exist? And it's my belief, if we don't know who we are and we don't know why we exist, how can we possibly know what we should do with the life we've been given? If we don't know who we are, we don't know why we exist, how can we possibly know what to do with the life we've been given? Right. So many people are just running around like programmed. I need to get a good education so I can get a good job, so I can get married, so I can have kids. So they can get a good education, so they can get a job, so they can get married, so they can have kids. And it goes on forever. So you say, very good, but why? Why do I want to do that? Yeah. Why do I want to do that? Who am I and why am I here? Why does the universe exist? What's the purpose of life? What's the purpose of existence? Why do I exist? Am I here just to make money and make babies and to eat good food? Or is there a deeper purpose in the fact that I exist? So I hope this crisis will help more people to think more deeply about the most important questions, which is, who am I and why am I here? As a matter of fact, Andrew, in fact, all of us who are a part of PSSM or who have been, attracted to meditation and who have been meditating for quite some time now, these are the pertinent questions which have arisen in people's minds. This is what has attracted all of us into meditation. What is the purpose of life and why are we here? And what happens after we die? These are the most pertinent questions that have been constantly, cropping up in all our minds. And meditation has helped us in, finding out the answers to these questions. And I'm sure as a collective consciousness, humanity is waking up to this pertinent question. We hope so. Yes. Because sometimes fear and great suffering can help people to wake up, but not always. Sometimes when the fear and the suffering goes away, people go back to sleep again. So sometimes fear and suffering can wake people up in a dramatic way. And let's hope that this terrible crisis will help more and more people to wake up and to want to wake up. Right. So Andrew, having said that, I would request you to please share your experience when you were all 16 years of age and you had that revelation of cosmic consciousness, and also your experience when you met your guru, Shri Harivansh Lalji Punja, and what changed in you? What was that awakening in you which sparked you onto this spiritual journey? We would all love to hear that. When I was at the big conference you guys had in Hyderabad, I spoke for a long time about that. So I'll just speak very briefly, that when I was 16, I had an experience where I suddenly realized
it just happened suddenly for no reason. I don't know the reason, but I realized that the whole universe was a cosmic being. The universe was a conscious, self-aware, intelligent being. And this cosmic being was experienced as a kind of impersonal, absolute love that was physically unbearable to experience because it was so intense. I realized when I was experiencing this love and that there was no such thing as death. The death has no meaning. There is no death and there is no birth. And I realized that all points in space are exactly the same place, that from the perspective of this cosmic being, which is the nature of everything. This cosmic being is the nature of everything. There's no here and there's no there. There's no here and there's no there. Everywhere we go, everywhere we possibly can go in time and space, we're always there or here. There's nowhere to go. There's nowhere to go and there's nowhere to go because we're always absolutely at the center of the universe. So this being was self-aware, and this being was a kind of love that crushes the mind into out of existence. The mind disappears and all there is love. And this is what I realized, and it was so powerful. It changed absolutely everything for me. That's when I decided I wanted to become an enlightened person. And when I met my guru, he reintroduced me to this same truth. It was he sitting in his presence. He reintroduced me to this absolute truth, to this ultimate truth about the nature of reality. He reawakened me to what I had already realized when I was a young man. And through his grace, that realization became stabilized in my soul. And that was about 35 years ago. Wow. That must have been one good experience, I'm sure. Well, when this happens to you, you can't go back to who you thought you were. Once you wake up to who you really are, you can't go back anymore. There's no way back to the dream of being a unique individual, because now you realize I am the creator. I'm the energy and intelligence that created the universe and is creating the universe. This is mine. I am everyone, and I am the whole universe. And this is all my responsibility, because there's only one creator. In Vedanta, we constantly hear that the ultimate truth is that there's only one. Vedanta tells us that there is only one. And when we understand that there is only one truth, and that there's only one I in the whole universe, in the entire universe, there's only one subject. And I am that. I am that one without a second, which also means I am the only one that could have chosen to create this whole universe, because there isn't anybody else except me. So when I realize I'm the only one who could have chosen to give rise to this entire creative process, this reorganizes one's thinking in a way that is very profound, because one realizes this is my creation. And therefore, this is an enormous responsibility to create the world in the most beautiful possible way I could imagine. And so when this happens to somebody, they give their life to creating heaven on earth. And all great realizers want to give rise to utopia. Or they want the perfection that they've realized in their own experience of higher states of consciousness. They want that vision to become actualized in a very loving, kind, and compassionate and infinitely creative human world. And all great realizers want to create utopia on earth, want to create heaven on earth. And that's why they help people to do that in the same way. For example, Patriji's helped people with meditation, so people can have that same vision and want to help co-create utopia, co-create heaven on earth with him. And then together, all of the practitioners gather together with their master in order to give rise to this unique spiritual vision of utopia or heaven. And that's what the disciples of Jesus did with Jesus. That's what the disciples of the Buddha did with the Buddha. And that's what the disciples of Patriji are doing with him. It happens as a universal manifest expression of enlightenment, that the realizer transmits his vision of utopia, his experience of utopia, to his disciples. And the disciples realize that vision, and then they want to give rise to that vision with their bodies and their minds and their souls. And together, all of the practitioners gather together
the Sangha, or the students of the great realizer, together they give rise to a vision of utopia in the kind of relationships they have with each other. The world becomes changed through the kind of relationships realized beings have with each other. And it's a vision of utopia, it's a vision of heaven on earth. And the spiritual vision, the vision that we experience in consciousness is a vision of perfection. It's an inner vision of perfection. And when we've experienced the inner vision of perfection, we want to do nothing but manifest that perfection in the world that we give rise to. So inwardly we experience perfection, and outwardly we want to manifest the perfection that we see within us. And when we can do that with other people, when people together try and create an expression of the perfection that they see inwardly in the world around them, they want heaven to exist on earth. And all the greatest realizers have had a vision of utopia, a vision of perfection, a vision of heaven. And I think ultimately that's what we're here to do, is to make earth into a true paradise. Andrew, since we're talking about evolution, there have been in the past a couple of masters who have gained that power, that spiritual power, but somehow, somewhere, that spiritual power has been misused. So, is this also a part of the evolution of enlightenment? Well, I think that all human beings are inherently imperfect. So human beings we can realize perfection. We can experience perfection. We can realize perfection. But inherent in being human is imperfection, because all human beings are works in progress. So this is also true for human beings who have powerful spiritual experiences. We can have powerful spiritual experiences and still be imperfect human beings. And imperfect human beings are capable of making mistakes. But it's also part of being human. Perfection is a state of consciousness. There's no human being that is perfect. Consciousness is perfect. And in the realization of consciousness, we can experience perfection. But human beings by nature are inherently imperfect. So we're allowed to make mistakes. It's not a matter of being allowed to make mistakes or not. Making mistakes is part of the learning process. It's how we learn, it's how we grow. And ideally, if we make mistakes and learn from them, then it's all for the good. But if we look at the evolution of human consciousness, we can see that there's been a learning process for the last 5,000 years, 4,000 years, 3,000 years, 2,000 years, 1,000 years, 500 years. The last 300 years, 200 years, 100 years, there's been a human consciousness has been in a process of evolution, development, and growth through different stages of consciousness, different stages of growth. And those different stages of consciousness and stages of growth are able to happen because there is an individual and collective learning process. And the collective learning process is the evolution of consciousness. And this is also learning how to live the human experience in a better way, in a way that is more wise, that is more compassionate, that is more loving, that's more inclusive. So I think the human experience is a learning process, and making mistakes is part of how human beings learn. And sometimes we make terrible mistakes. Sometimes as human beings, we make absolutely terrible mistakes. But we even need to see the worst mistakes, ideally, hopefully, as part of a larger process of learning. For example, the atomic bomb was dropped only twice. And so it seems that what we realized when those bombs were dropped was an energy that was so powerful. It seems that, looks like, we realized that this is a power that's too much. We don't ever want to do that again. And so far, knock on wood, we haven't, which is a miracle. It's a miracle. It's a miracle. We haven't destroyed we haven't destroyed ourselves. This is a great miracle, and you can see it's a great accomplishment. So we could see that as a part of learning. And in human beings, there's less war on the planet now than there's ever been. There's less fighting, there's less war, there's less genocide, there's less killing, there's less murder, there's less violence than there ever has been. There's a great psychologist from Harvard University called Steven Pinker, who wrote a book about the evolution of violence.
and he's done a lot of research. And this whole book is called The Better Angels of Our Nature. And The Better Angels of Our Nature, he explains how, and through many statistics, that violence has been decreasing as human consciousness has been evolving. And so it's a lot of human beings don't realize that, but the human world that we live in is a safer place to be in relationship to violence than it's ever been. The world is more peaceful than it's ever been, in spite of the fact that we're aware that there's so many problems that we're confronting with the environmental catastrophe that we're facing, and obviously this global pandemic, and there's so much inequality and there's so many problems. In spite of that, in so many ways, human life is so much better and so much more fair and so much more ethical than it's ever been. So as a species, we are learning and we're evolving, in spite of the fact that there's still many problems that we have to solve. Thank you so much. Thank you so much, Andrew, for your wonderful wisdom. And it was an absolute pleasure having you. And we would like to close the session here, where we have other masters waiting. And thank you so much, so much. And it was a pleasure listening to you. And you answered so many of our questions. And I'm sure there's a lot more that we can get from you. And I hope that we can get in touch with you some other time, and you can answer to many more of our questions. Thank you. It's been an honor, and thank you, Patrick. Thank you, sir. Abhinav, you have been great. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Keep it up. Keep up your spirit like this. Thank you, sir. Thank you. It's an honor very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. It's a paradox. Totally. It's all about a paradox. A huge paradox. Huge. Yeah. Mind-boggling paradox. Good. It is so, because we can't understand it. We can see it, but we'll never understand it. We can only recognize it. We can feel that it is a paradox. Yes. Indeed. Indeed. Thank you, sir. Thank you. It is our honor. Thank you. Honor is mine. Thank you so much. Thank you so much, Andrew. Thank you so much, Patriji. Now I would like to request Shrinita Auntie to please take over and invite the next master for our next session. नमस्ते सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते पत्री सर नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम मैं उड़ीसा से कटक से श्रीनीता बोल रही हूँ एंड मैं धन्य मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस यात्रा में हूँ on this beautiful forum today I take the opportunity and the pleasure to introduce to all of you a beautiful and a very great master, शुभांगी वशिष्ठ, जो कि गुड़गांव से है और हमारे साथ आज इस वंडरफुल जर्नी में जुड़ रही हैं। शुभांगी की स्पिरिचुअल जर्नी काफी कम उम्र से स्टार्ट हो गई थी और आज वो अपने हस्बैंड के साथ, हितेश के साथ ध्यान प्रचार कर रही है, ध्यान सिखा रही हैं, मेडिटेशन सिखा रही हैं, and she is spreading love. She has been helping people in their journey with the help of many spiritual tools
I now, without wasting any further more time, I invite Shubhangi to take over. देखें कि डिवाइन फेमिनाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अभी का समय नहीं है। अगर हम और पिछले अपने कहीं युगाज में 4000 साल पीछे, 5000 साल पीछे भी जाएं, तो जब जब धरती पर घृणा, डिस्ट्रक्शन, गुस्सा, हेट्रेड, नफरत, ग्रीडी, जब ये चीजें हमारे धरती पर बढ़ने लग जाती हैं, तो हमें डिवाइन फेमिनाइन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो पूरा आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, और हम अपने अंदर से, अपने भीतर के साथ जुड़ने से दूर होते जा रहे हैं। और हमारा फोकस बाहरी दुनिया पर है कि हम कंपटीशन में है, कि हमें भागना है, हमें ग्रोथ चाहिए। तो हम यूज कर रहे हैं चीजों को, लोगों को, अपने आसपास की चीजों को। तो हम क्या करें, ये सारी जो क्वालिटीज है, जो ये जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हो रहा है कि हम नष्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये बैलेंस है, प्रकृति का जो नियम है, वो है बैलेंस पे, संतुलन पे। तो जब तक ये संतुलन जब भी बिगड़ता है, जब भी एक्सेस ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी रहती है, तो हमें फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करना पड़ता है। तो अगर हम युगास की बात करें तो एक प्रोफेसर है, अमेरिकन प्रोफेसर है जो लिटरेचर पर लिखते हैं, और उनका नाम है जोसेफ कैम्बल। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है, द फंक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल सिंबल इज टू गिव यू a sense of aha. Yes, I know what it is. It is myself. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? वो बोल रहे हैं कि जो भी ये पुराण है, जो माइथोलॉजी, जो ये युगाज में हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आप उसको रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, कोई भी माइथोलॉजी को ले लीजिए, ये पुराण हमें बता रहे हैं उस एसेंस को कि हम क्या हैं, और वो हमें जीने का एक चीज, जीना कैसे जीना है हमें, वो सिखाते हैं हमें। तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है। माइथोलॉजी हम लेते हैं कि तो ये हिस्ट्री है, ये हमें बताती है, बट ये हिस्ट्री ना रहकर ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब कि एक रूपक है जो हमें मदद करता है जीने के लिए, कि हमें कैसे जीना है इसको, और कैसे बैलेंस, कैसे संतुलन बनाना है।
तो हमें दोनों ही एनर्जी को संतुलन में रखना है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो। बस इस समय जैसे कि हमारा सारा फोकस हेड पर है, तो हेड क्या है, हमारा मैस्कुलिन है, बट एक्सेस ऑफ हेड, हम हमेशा सिर्फ लॉजिक माइंड से सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने में सोच रहे हैं, बट वो कैसी ग्रोथ है कि किसी को मार कर, किसी से हम घृणा कर कर मदर अर्थ को, प्रकृति का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब जब हम ये डिसरिस्पेक्ट, जब हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये अवेकनिंग, जो ये डिवाइन फेमिनाइन है, उसका जन्म होता है, चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो। तो ये है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और इसीलिए ये जो समय है, और इस समय क्यों, जब ये लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज थी, हम उससे दूर हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो गए हैं, क्योंकि वो तत्व हमारे ही भीतर है, वो प्रकृति का तत्व हमारे ही भीतर है, हम उससे दूर हो चुके हैं। तो क्या है ऐसी क्वालिटीज जो हमें डिवाइन फेमिनाइन के करीब लेकर जाती हैं? तो हम उन क्वालिटीज को समझेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये अवेकन हो, दोबारा से हम अपने प्रकृति के तत्व से मिल पाए, जुड़ पाए। तो पहली क्या विशेषता है इस डिवाइन फेमिनाइन की? तो डिवाइन फेमिनाइन की पहली विशेषता है टू नर्चर। नर्चर कह सकते हैं हम, पोषण करना, पोषण करने की। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से सोचते हैं कि एक गार्डनर है, तो वो एक बीज लगाता है, तो जब वो धरती में बीज लगाता है तो उसका पोषण करता है। वो कैसे पोषण करता है? उसको रोज पानी देता है, उसको खाद देता है, उसको जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सब उसको देता है, सनलाइट देता है, सब कुछ दे रहा है। और जो आसपास के वीड भी होते हैं, जो जो जरूरी नहीं है उस पौधे की ग्रोथ के लिए, उसको भी उखाड़ता है। तो कोई भी नर्चरेंस, ये क्वालिटी, कोई भी मनुष्य, चाहे वो कोई भी गार्डनर बन सकता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो स्त्री हो। तो ये जो क्वालिटी है नर्चरेंस की, ये हमें अपने अंदर अवेकन करनी है। आप किसी भी चीज को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उसको नर्चर करना है। और नर्चर कैसे करना है? ग्रो, आप एक कॉन्शियसनेस को अपनी ग्रो कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो कैसे करना है? जैसे कि हम बोलते हैं कि ध्यान, ध्यान एक बीज है, हमें उसको नर्चर करना, उस ध्यान को नर्चर करना है। वो कैसे करेंगे हम? जो सर ने इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमें बताई हैं, स्वाध्याय और सज्जन संगति, कि हमें स्वाध्याय कर कर, हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहकर, और दूसरा हमें राइट बुक्स पढ़ के। तो जो ये जो पौधा लगा है ध्यान का, ये और बढ़ता है और फूलता है और खिलता है। तो ये है नर्चरेंस। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हम लॉजिकली सोचने लगते हैं, तो वो ग्रोथ नहीं होती, हमने उस ग्रोथ को मार दिया, खत्म कर दिया है, क्योंकि अपना लॉजिक लगाया है। तो उसके लिए हमें नर्चरेंस की विशेषता चाहिए अपने अंदर, तो हम नर्चर करें इस चीज को। तो ये है पहली विशेषता। तो दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी है टू फील, जो कि बहुत, मैं कहूंगी, इम्पॉर्टेंट विशेषता है एक फेमिनाइन एनर्जी की। टू फील, महसूस करना। तो मैं ये कहूंगी कि ये ना ही फीमेल और मेल की क्वालिटी है, ये एक ह्यूमन की क्वालिटी है। एक ह्यूमन की क्वालिटी है टू फील, उसको महसूस करने की क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल कंडीशनिंग, अगर आप बचपन में, अगर आप आदमी हैं, अगर आप तो आप देखेंगे, आप पुरुष हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बचपन में कहा गया है कि रोते क्यों हो, लड़की हो क्या जो रो रहे हो। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम फील करते हैं उसको दबाया गया है, सप्रेस किया गया है, खासकर आदमियों के साथ। और अगर हम यही महिलाओं के बारे में बात करें तो उसी का ही वो उल्टा है। और महिलाओं को हम कहते हैं कि वो वीक है अगर वो रोती हैं, अगर वो ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं, बोलती हैं।
तो दोनों में ही डिसबैलेंस हो रहा है इस समय। जो ये समय है, हमारा सारा फोकस, अगर आप फीमेल्स का भी देखें, आउटर वर्ल्ड पर है। वो compete कर रही है इस पुरुषा से। तो हमें compete नहीं करना, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को, क्योंकि हम compete उससे करते हैं जो हम एक जैसे हैं नहीं, क्योंकि हम दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है, तो हम compete कर ही नहीं सकते। हम यूनिक है, हमें उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना है इन दोनों एनर्जीज के साथ। तो हम फील करें, जो हमें महसूस होता है उसको पूरी तरह से देखें कि आपके दिल में कहीं ना कहीं हमने ये अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। हम समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, महसूस ही ना करना चाहते कि इसके अंदर है क्या। तो हम, जैसे अगर मैं अपने काम के बारे में बताऊं कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, तो हम बहुत, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लोगों के लिए होता है कि हाउ आर यू फीलिंग, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, हमारे पास 2-3 आंसर मिलते हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। पहला कि अच्छा लग रहा है, दूसरा ये होता है कि ठीक नहीं लग रहा, तीसरा होता है कुछ हो रहा है पर पता नहीं है कि क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अपनी ही फीलिंग से दूर हो चुके हैं। हमें अपने ही बारे में नहीं पता कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमने उस चीज को नम कर दिया है। और हम नम कैसे करते हैं? बहुत सारी चीजों से नम कर देते हैं। कोई नम करता है कि कोई ट्रॉमा है, कोई लाइफ में, हम उस चैप्टर को देखना ही नहीं चाहते कि ये क्यों आया है इस लाइफ में, मुझे उसको देखना ही नहीं है, पर वो फिर भी आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको भूत के जैसे आपके पीछे पड़ा हुआ है। वो क्यों है? कहीं ना कहीं हम वो देखना नहीं चाहते, उस दर्द को फील नहीं करना चाहते। तो हम उसको नम कैसे करते हैं? हम शॉपिंग चले जाते हैं, हम अल्कोहल लेने लग जाते हैं, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं हम मंच करते हैं, हम खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो भी जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसको महसूस नहीं करना, इसको दबाना है। तो सेकंड क्वालिटी जो डिवाइन फेमिनाइन की है, टू फील, महसूस करें। इट्स ओके टू फील योर फीलिंग्स। कि हम अपने आप को कहें, दिल पे हाथ रखें और कहें कि कोई बात नहीं, अगर ये टाइम है तो ये कुछ आया है मुझे सिखाने के लिए, इट्स ओके एंड वी कैन मूव ऑन। और ये टेम्परेरी फेस है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये दूसरी क्वालिटी है। तो हम तीसरी क्वालिटी पे जाते हैं। तीसरी क्वालिटी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की? वो है टू अंडरस्टैंड, समझने की। तो इस समझने को और गहरा समझते हैं। एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करती हूँ जिससे आप इसको और गहरा समझ पाएंगे। कि एक इंसान होता है, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता होता है। तो वो एक गांव में रह रहा होता है और उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो दूसरे गांव में रह रहा होता है। तो उसे मिलने के लिए घर से निकलता है, तो वो थोड़ा सा परेशान सा होता है। जब वो घर से निकलता है तो वो पैदल जा रहा होता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो गर्मी बहुत हो जाती है, दोपहर का टाइम हो जाता है, तो बड़ा इरिटेट फील करता है। वो बोलता है कि इतनी धूप हो रही है, ऊपर से क्या है, मैं कब पहुंचूंगा, इतना धूप, पसीना हो रहा है, बहुत इरिटेट हो जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर मैं पेड़ की छांव में थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। तो वो पेड़ की छांव में लेट जाता है, थोड़ा आराम करता है। तो जैसे ही वो लेटता है तो ऐसे सर अपना रखता है, तो ऊपर पेड़ को देखता है, उस पेड़ को, जिस पेड़ की छांव में वो बैठा होता है। तो वहां देखता है वो जो पेड़ होता है वो एक वॉलनट का पेड़ होता है। वॉलनट बोलते हैं जिसको, अखरोट का, कि अखरोट का पेड़ होता है। तो वो लेटता है, वो देखता है कि अच्छा अखरोट का पेड़ है। तो वो अपना टर्न लेता है, दूसरी तरफ देखता है, और वहां देखता है, उसकी जब नजर पड़ती है तो वहां पे एक बुश लगी होती है, एक बेल लगी होती है पंपकिन की, एक कद्दू की, बहुत बड़े कद्दू की। तो वो बोलता है कि वैसे ही वो इतना इरिटेट होता है और वो बोलता है भगवान को कि क्या भगवान, क्या आपने ये दुनिया, सृष्टि क्या बनाई है, इतना छोटा सा फल इतने बड़े पेड़ पर, और इतना बड़ा फल जो है वो एक धरती पर छू रहा है, एक बुश पे छू रहा है, ये कैसी सृष्टि है, ये क्या है। तो जैसे ही वो बोलता है, उसके धपाक से वॉलनट सिर पर गिरता है। और जब वो वॉलनट सिर पर गिरता है, वो रियलाइज करता है कि नहीं,
आपने बिल्कुल सही सृष्टि बनाई है। थैंक गॉड यहाँ पे पंपकिन नहीं था, तो मैं मर ही जाता। तो फ्रेंड्स, ये एक डीप मैसेज बता रही है नेचर की विजडम का, कि हम इसको समझें कि जो ये टाइम है, अगर हम इस टाइम इस लॉकडाउन को समझे तो एक डीपर मीनिंग हमें वो बता रहा है जो हमें समझने की जरूरत है। कि अगर ये कोरोना वायरस आया तो क्यों आया, क्या रीजन था, क्या ऐसा हमने गलत किया या संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये आया, और हमें ये क्या सिखाने आया है। जैसे हम बोले लॉकडाउन, लॉक ताला, कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर एक ताला बंद कर दिया है, हम अपने अंदर नहीं देखना चाहते, और उस लॉक को हमें डाउन करना है, उस लॉक को हमें खोलना है। तो ये है लॉकडाउन। एक बिगर पिक्चर समझाता है आपको ये क्वालिटी अंडरस्टैंड की, कि ये हो रहा है। अगर लाइफ में आपके कोई इंसान है तो वो ऐसा है, तो वो क्यों है, आप उसको समझ पाए अच्छे से। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप ग्रॉस लेवल पे मत देखिए, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा है और इससे मुझे क्या सीखना है। सीख बहुत जरूरी है, लेसन बहुत जरूरी है इस चीज का। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो इस टाइम में अंडरस्टैंड करें इस लॉकडाउन को, इस कोरोना वायरस को। और कोरोना वायरस हमें बता रहा है करुणा, कि कोरोना से ही हम कोरोना वायरस को फाइट कर सकते हैं। तो ये डिवाइन मैसेज है कि अपने भीतर लॉक को खोलने का, इनसाइड वर्ल्ड में जाने का, कि हम सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी एक रूपक है कि हमें अपने भीतर जाना है। तो ये है नेक्स्ट क्वालिटी डिवाइन फेमिनाइन की। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वालिटी जो है डिवाइन फेमिनाइन की, टू एम्पैथाइज। तो सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो सिंपैथी क्या है? सिंपैथी होती है कि जैसे कि एग्जाम्पल से बताओ कि अगर मेरी कोई फ्रेंड आई और वो मेरे से बात कर रही है और वो बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ट्रबल करते हैं, मेरे बॉस भी बहुत ट्रबल करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं भी कहूँ हाँ बिल्कुल सही स्टोरी है, इनफैक्ट सारे मर्द ही ऐसे होते हैं। मैंने ऐसे भी बोला कि मर्द ही ऐसे होते हैं कि आदमी लोग समझते ही नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक्ड रहते। तो क्या हुआ, ये सिंपैथी हुई, मैंने भी अपनी वाइब्रेशन नीचे कर ली और मैं उसके साथ आ गई जहां पे वो थी। तो मैंने उसको रिलीफ नहीं किया, मैं उसके साथ हो गई। तो ये क्या सिंपैथी है, कि मैं उसके पेन में मैंने अपना पेन भी ऐड करके, मैंने उसमें फ्यूल डाल के उसके साथ हो गई। बट एम्पैथी हमें क्या सिखाता है? एम्पैथी सिखाता है कि आपने समझा कि वो पेन में है, बट आपको उसको अपनी पीस में पुल करना है। आपको उसको अपनी वाइब्रेशन, जो हाई वाइब्रेशन में आप हो, आपको उसको वहां से उठाना है और उसको रियलाइज कराना है कि यू आर योर ओन क्रिएटर, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो जब आप उसको ये समझाएंगे कि तुम ध्यान करो, अपने भीतर जाओ और इन सवालों को पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये है एम्पैथी होना, कि आप एम्पैथी कर रहे हो उसके साथ, कि आप उसको समझा रहे हो, उसका ट्रू एसेंस बता रहे हो कि वो क्या है, उसकी पावर को जान पा रहे हो। तो ये है एम्पैथी करना। और एम्पैथी सिर्फ हम इंसानों के साथ ना रखें। अगर आप सोच रहे हैं आप ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस एम्पैथी को ग्रो करिए। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, हर एक जीव जंतु के साथ, हर एक पौधे के साथ आपको एम्पैथी होनी चाहिए। आप फील कीजिए कि वो कैसा फील करेगा। आप इस लॉकडाउन में बोल रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि ये कब खत्म होगा, मतलब इट इज वेरी अनोइंग एंड इट इज एक्सटेंडिंग, और बहुत ज्यादा मुझे बॉदर कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो अगर मैं कहूँ, आप अगर अब इस समय इस लॉकडाउन को आप ये समझ रहे हैं कि इतना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आपको, आप कभी पोल्ट्री फार्म में गए हैं जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है? आई टेल यू, अगर आप वहां चले गए और आपने वो देखा, तो आपको ये लॉकडाउन से प्यार हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि लॉकडाउन किसको कहते हैं।
वो 2x2 जो केज होता है उसमें 2 मुर्गियों को रखते हैं और सारी जिंदगी वो डार्कनेस में बिताते हैं. There is no light at all, friends. एक रोशनी की किरण नहीं होती. वो पूरी लाइफ उस डार्कनेस में, उस 2x2 केज में बिता देती है जस्ट टू गिव एग्स. इतनी गर्मी होती है वहां पर कि उस एग को भरने के लिए वो गर्मी पैदा करते हैं कि जिससे रोशनी ना आए, अंधेरा करके रखते हैं. तो आप फील कर पाएंगे, एम्पैथी कर पाएंगे उन जानवरों से. और आवाजें जो आती है, जब मैं छोटी थी तो मैं वहां से निकली थी और जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था मुझे लग रहा था कि वो रो रही हैं, कि उनको वहां से बाहर निकालो, उनको बंद करके रखा हुआ है. और उनको खाने को क्या दिया जाता है? सीमेंट दिया जाता है जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है. तो हम सोच रहे हैं कि हमें कैल्शियम मिल रहा है वहां से किसी को पेन देकर. ये एम्पैथी, ये फीलिंग, ये जो इनर हमारी डिवाइन क्वालिटीज है, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं. हम कैसे उस प्लेट में रखे उस जानवर को खा सकते हैं? क्योंकि आई थिंक खा सकते होंगे वो लोग जो अपने फीलिंग से दूर है, जो अपने आप से दूर है, तो वो दूसरों को कैसे समझेंगे? और अगर वो अंडा देना जब बंद कर देती है, उनको बुचर शॉप्स पे दे दिया जाता है कि कट करने के लिए. तो ऑब्वियसली ये लॉकडाउन तो बहुत अच्छी चीज है जो हमें एटलीस्ट एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, फोन है, खाने को मिल रहा है. आप उन जानवरों का सोचिए जिनको उस जेल में, उस 2x2 जेल में बंद करके रखा है फ्रेंड्स. तो प्लीज समझिए, एम्पैथी कीजिए, एम्पैथी को ग्रो कीजिए, हर एक लेवल पे ग्रो कीजिए. प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सब मनुष्य के साथ, जो भी इस धरती पर आया है, सबका राइट है जीने का. हम उस राइट को नहीं ले सकते. तो ये है क्वालिटीज डिवाइन फेमिनाइन की, टू अंडरस्टैंड, टू एम्पैथी. और ना एक और है जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, वो है इंट्यूटिवनेस. कि बहुत ज्यादा हम इंट्यूटिवनेस अपने, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कि हमें फीलिंग होती है. अभी हम जो एक्सपीरियंसेस भी लोगों के सुने हैं, हमने सुबह से जो ध्यान कर रहे हैं, उनकी जो इंट्यूटिवनेस, कि उनको आया अंदर से कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मेडिटेशन अटेंड करना है, और उनको वो सच की अनुभूति हुई. तो ये इंट्यूटिवनेस आपको गाइड करती है आपके सॉल्यूशन की तरफ, कि आप क्या करना चाहते हो. आप दिल की एक आवाज है जो सुनने को मिलती है. तो इस इंट्यूटिवनेस को सप्रेस ना करें, इस दिल की आवाज को सुने और उस पर काम करें. और ये दिल की आवाज हम सबसे बेस्ट कब सुन सकते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने साथ समय कुछ बिताते हैं शांति में, तो हम इस आवाज को और क्लियरली सुन पाते हैं दोस्तों. तो इसको और बढ़ाइए, ध्यान करिए और इस इंट्यूटिवनेस को सुनिए. ये गाइड है, ये एक ब्रेथ जो आपका गुरु है, वैसे ही ये गाइड करती है. आपके भीतर ही सारे उत्तर छुपे हैं. तो इस इंट्यूटिवनेस को और यूज कीजिए और ग्रो करिए. और नेक्स्ट है हमारी टू बी क्रिएटिव, कि क्रिएटिव होना. कि अगर आप देखिए कि कोई भी, जो भी इस टाइम पर हम कितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं. ये डिजिटल ध्यान यज्ञा कितनी अच्छा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है. जैसे सुबह सर ने कहा कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठा हूं और मैं कितने हजारों लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी बात हो पा रही है. तो मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ. ये एक क्रिएटिव पार्ट निकल कर आया है. तो ऐसे ही क्रिएटिविटी को अपने अंदर और क्रिएट कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए. आपको गाना गाना पसंद है, गाइए. नाचना पसंद है, नाचना करिए. खाना पकाना पसंद है, खाना पकाइए. और आप सर को भी देखेंगे, सर कितने क्रिएटिव हैं. सर वही ध्यान को समझाते हैं, बट आप जब भी मैं उनकी क्लास में जाती हूँ, मैं एक नया साइंटिफिक वे से, एक सिंपल वे से ध्यान को और समझ पाती हूँ. वो सिंपल एक ध्यान ही है कि आंखें बंद करो, 3 लॉक्स लगाओ, बट कितने डिफरेंट क्रिएटिव वे से सर समझाते हैं. तो ये है क्रिएटिविटी. ये ही डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, क्रिएट करना,
हमेशा रचना करना कुछ नई चीज की, जैसे सर कुक करते हैं, ये भी एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज है, कुक करना, बिकॉज वो नर्चर कर रहे हैं। तो ये करिए, क्रिएटिव कुछ क्रिएट करिए अपने लाइफ में, कोई थॉट नया क्रिएट करिए, कुछ ये समय आपको दिया गया है, इसको यूटिलाइज कीजिए और क्रिएट करिए कुछ अपने लिए। और लास्ट जो क्वालिटी आती है वो है टू लव। और ये जो वर्ड है दोस्तों, ये जो प्यार शब्द है, हम इसको बहुत ग्रॉस लेवल पे समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया हाँ आई लव माई सेल्फ और मैं आपसे प्यार करता हूँ तो बस प्यार हो गया। नहीं, प्यार वो एक एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है जिंदगी को देखने की एक डिवाइन की आंखों से। और उस आंख से देखने के लिए हमें इन दो आंखों की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो एक आंख है यही उसके लिए काफी है, जो हमारा तीसरा नेत्र। क्योंकि डिवाइन की क्या क्वालिटी है, वो निर्गुण है, ना ही वो तामस है ना ही वो रजस है, वो निर्गुण है जिसमें वो अटैच्ड ही नहीं है। जैसे हो वो वैसे ही आपको प्यार करता है। आप कोई भी मास्टर ले लीजिए, बुद्धा ले लीजिए, आप उंगली मारकर अगर हम स्टोरी सुने तो बुद्धा ने कितने प्यार से उसको भी प्यार से ही देखा, चाहे वो क्रिमिनल था चाहे वो डाकू था, पर कितने प्यार से। तो यही डिवाइन लव है कि जब आप किसी को देखें विदाउट जजिंग दैट पर्सन, एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज इट इज, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ उसको एक्सेप्ट करिए। ये है प्यार। कि अगर आप काली देखें, दुर्गा देखें, कोई भी गॉडेस देखें, वो हर एक अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करती है, चाहे वो सिनर हो चाहे वो सेंट हो, दोनों उसके लिए इक्वल है। माँ के लिए दोनों ही प्यारे हैं बच्चे। तो ये प्यार है, ये क्वालिटीज है डिवाइन फेमिनाइन की। और अगर हम गॉड और गॉडेसेस की बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटीज अगर आप देखें, अगर आप जीसस देखें, अगर आप कृष्णा देखें, राम देखें, आप बुद्धा देखें, आपके अंदर आप इन सारी क्वालिटीज जो जो मैंने अभी बताई हैं फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ आप ये सारी क्वालिटीज आप उनके अंदर देख सकते हैं। योगानंदा जी देखें, महाअवतार बाबा जी देखें, माँ तारा देखे, काली देखे, सबके अंदर ये क्वालिटीज है फ्रेंड्स। चाहे वो गॉड है, शिवा है, कोई भी है, चाहे, और लाइव एग्जांपल हमारे सामने पत्री सर है कि मैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज देखती हूँ कि नर्चर करने की, कि वो कैसे इस ध्यान को नर्चर करें। इंट्यूटिवनेस उनके अंदर आया इस पिरामिड के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, और उन्होंने वो पिरामिड्स बनाना शुरू करे क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और वो अंडरस्टैंड करते हैं बिग पिक्चर को। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे उनके अंदर लाइव दिखाई देती हैं। तो इन सब क्वालिटीज को हम एम्ब्रेस करें। जब हम ये एम्ब्रेस करते हैं तो हम बैलेंस क्रिएट करते हैं प्रकृति में, और बैलेंस पे ही सिस्टम थ्राइव करता है फ्रेंड्स। वो ही एक बैलेंस है जब ये सिस्टम उस पे थ्राइव करता है। तो इस बैलेंस को और इस सारी क्वालिटीज को, तो मेरे लिए व्यूवर्स के लिए ये क्वेश्चन है कि आप अपने आप को समझिए, जानिए कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आप कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करते हैं अपने अंदर, या आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने भीतर इस क्वेश्चन को पूछिए। और क्या आप तैयार हैं इन क्वालिटीज को एम्ब्रेस करने के लिए, इसको अपनाने के लिए? तो अगर आप तैयार हैं तो हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं इन क्वालिटीज के ऊपर, इनको एम्ब्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमें क्वालिटीज बताना चाह रही हैं हमें अपने आप के लिए। तो इस समय आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ सकते हैं और अपने उंगलियों के बीच में उंगलियों को डालिए और लेग्स को आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, या चौकड़ी मार सकते हैं, और आंखें बंद कर दीजिए। बहुत आराम से सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करें और 3 गहरे लंबे श्वास लीजिए। नाक के द्वारा लेते हुए
एक क्षण के लिए पॉज करें और उसे बाहर छोड़ें। एक और गहरा लंबा सांस नाक के द्वारा लेते हुए मुंह से उसे बाहर निकालें और एकदम रिलैक्स हो जाए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा रहे हैं, आप एकदम शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक कण एकदम शांत होता जा रहा है। सर से लेकर पांव की उंगलियां एकदम शांत, कोई भी तनाव नहीं। और इस समय अपने आप को विजुअलाइज करें एक प्रकृति के खूबसूरत दृश्य में। उस दृश्य में सब कुछ है जो आपको पसंद है। हर एक फूल, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, जो भी आपको पसंद है वो सब इस जगह पर है। और जैसे जैसे आप इस प्रकृति के दृश्य को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप और शांत होते जा रहे हैं। और इस समय आप जैसे जैसे इस प्रकृति के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, आपको दूर कहीं एक पेड़ दिखाई दे रहा है, खूब बहुत बड़ा पेड़। और आप उस पेड़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि कोई वहां आपका इंतजार कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में या फॉर्मलेस में, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज, डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज है। वो कोई भी गॉड, गॉडेसेस, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, काली, शिवा, बुद्धा, कोई भी हो सकता है। आप उस पेड़ की तरफ जाएं और जैसे जैसे आप उस पेड़ के पास पहुंच रहे हैं, आप उस ऊर्जा का, उस शक्ति का आभामंडल महसूस कर पा रहे हैं। और पास, बिल्कुल पास जाते हुए उस पेड़ के नीचे उस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से उसे महसूस करें। कैसा लग रहा है आपको जब वो आप उस ऊर्जा के सामने है? उस ऊर्जा को आप नमन कर सकते हैं। पूरी तरह से इस ऊर्जा को महसूस करें। कैसा दिखती है ये ऊर्जा? कोई फॉर्म है या फॉर्मलेस है? कोई कलर है?
पूरी तरह से महसूस करें। जैसे जैसे आप इसको, उस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्र, आपका अनाहता चक्र और खुलता जा रहा है। आप और एक्सपैंड होते जा रहे हैं और ये ऊर्जा एक माँ के रूप में जैसे एक बच्चे को सहलाती है, वो अपना हाथ आपके अनाहत चक्र पर रख रही है और बहुत प्यार से उसे सहला रही है। पूरी तरह से महसूस करें इस स्पर्श को, इस ऊर्जा को, इस प्यार को जो इस समय आप इससे रिसीव कर रहे हैं। और इन सारी क्वालिटीज को एम्ब्रेस कीजिए। नर्चरेंस की, फीलिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, एम्पैथी की, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, लव की एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए पूरी तरह। और ये ऊर्जा, अगर आपको कोई संदेश या आपका कोई सवाल है, आप इससे पूछ सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं उस विजडम को, उस मैसेज को। पूरी तरह महसूस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। इस प्यार को पूरी तरह महसूस करते हुए और जो ये ऊर्जा है, जो ये शक्ति है, अब ये एक ऊर्जा के रूप में बदलती हुई आपके अनाहत चक्र में जा रही है, एक लाइट के रूप में, एक रोशनी के रूप में। और जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके दिल में जगह बना रही है, आप पूरी तरह फील करें, इसे जगह दें अपने दिल में और अपने आप को कहें, आई एक्सेप्ट माई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और एक गहरा लंबा सांस ले, इस ऊर्जा को एंकर करें अपने अंदर, अपने हर एक कण, हर एक शरीर के पार्ट में। बहुत अच्छे। इस ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए, थैंक यू, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन इन मी। और एक गहरा लंबा सांस लेते हुए हम इस क्षण में वापस आते हुए धीरे धीरे उस प्रकृति के दृश्य से इस जगह आते हुए, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, और अपने साथ ये सारी क्वालिटीज, ये इनसाइट्स लेकर आते हुए, वो मैसेज लेकर आते हुए, जो भी आपको डिवाइन से मिला है, पूरी तरह से उसको वापस लेकर आते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को महसूस कीजिए। और उस एनर्जी को अपने दिल में आप हाथ रख सकते हैं और एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें, फीलिंग रिफ्रेश्ड, कंप्लीट, होल। जब भी आप तैयार हो, आप बहुत जेंटली अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ।
थैंक यू एवरीवन। अगर आप ध्यान से वापस आ गए हैं तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो हम बाद में उसका जवाब दे सकते हैं। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी स्टोरी से मैं एंड करना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। तो एक लड़की होती है, एक 10-11 साल की लड़की होती है और उसकी मदर होती है, और उसकी मदर घर का काम करती होती है। पैसा कमाने के लिए वो घरों में सफाई वगैरह करती होती है। तो वो अपनी बेटी को पालन करती होती है। तो वो बेटी रोज अपनी माँ को देखती है कि वो रोज जाती है उसकी मदर हर दूसरों के घर में और सफाई करती है। बट जैसे जैसे होता है तो वो थोड़े टाइम बाद उसकी माँ जो होती है वो एक दिन बीमार पड़ जाती है और उनको बुखार आ जाता है, तो वो नहीं काम पे जा पाती। तो उसकी बेटी कहती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं काम पे चली जाऊंगी, 2 दिन की बात है और फिर मैं आप चले जाना। तो उसकी माँ कहती है ठीक है कि तुम चले जाओ 3 दिन काम करने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है कि वाह मैं सफाई करूंगी। तो वो जाती है तो उसकी माँ की और सहेलियां होती हैं उसके साथ जो उसको लेके जा रही होती है। तो वो बहुत एक्साइटेड होती है, तो सबसे पूछती होती है कि सफाई कैसे करते हैं, आप मुझे बताओ क्या क्या करना होता है, कोई चीज डालनी होती है। तो ये सब उसके सवाल रहते होते हैं। तो एक दिन निकल जाता है। तो एक जो औरत होती है, एक और उसकी औरत, वो रोज इसको देखती होती है कि ये रोज क्वेश्चन पूछती है कि कैसे सफाई करनी है, कहाँ सफाई करनी चाहिए, क्या चीज यूज करनी चाहिए। तो दूसरा जब दिन आता है तब वो फिर से वही सवाल लोगों से पूछ रही होती है। तो वो जो लेडी उसको देख रही होती है तो वो लेडी उसको खींचती है और उसको बोलती है कि तुम ना लाइट साफ किया करो। तो वो कहती है कि क्या? वो कहती है आज तुम लाइट को साफ किया करो, क्योंकि कोई लाइट नहीं साफ करता, सिर्फ झाड़ू कटका करते हैं। लाइट को कोई भी साफ नहीं करता है। जो झूमर होते हैं, जो लाइट्स होती है, तो तुम उनको साफ करके देखना। वो कहती ठीक है करूंगी। तो वो जाती है काम के लिए और वो वही करती है, लाइट साफ करती है, झूमर साफ करती है। तो जो उस घर की मालकिन होती है तो वो बोलती है वाह, मतलब घर एकदम ही चेंज हो गया लगता है, मतलब इतना रोशनी घर में दिखती है। तो वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि वाह कितना साफ घर, तुमने क्या किया ऐसा कि घर इतना सुंदर तुमने बना दिया। तो वो बहुत खुश होती है और उसका पति भी आता है शाम को और वो कहते हैं कि वाह घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इस लड़की को तुम रोज बुलाना और इसी से ही काम कराना और इसको एक्स्ट्रा पैसे भी देना कि इसने कितनी अच्छी सफाई करी है। तो वो बड़ी खुश होती है और वो चली जाती है फ्रेंड्स। और ये ऐसी कहानी है, बट इसमें एक डीप मीनिंग छुपा है दोस्तों, कि क्या हम अपने भीतर की रोशनी को कभी साफ करते हैं, जो हमेशा हमारे अंदर है। हम उस रोशनी को साफ करना भूल जाते हैं और वो रोशनी को साफ करना ही हमारा मकसद है। अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, जो ये लाइट है, जो ये प्रकृति तत्व हमारे अंदर है, हमें इसे जगाए रखना है। और कैसे जगाए रखते हैं? ध्यान से, वेजिटेरियनिज्म से, ये सारे जो स्वाध्याय से, संगत सज्जन सांगति से, ये सारी, इस लाइट को आप डिम मत होने दीजिए। इस लाइट को हमेशा क्लीन करते रहिए, साफ करते रहिए। अगर आप इस लाइट को शाइन करेंगे तो आप दूसरों को भी मदद कर पाएंगे उनकी लाइट को शाइन करने में। तो स्प्रेड दिस लाइट and let this light shine in whatever way। उसको शाइन करने दीजिए और इस रोशनी को हमेशा स्प्रेड करते रहिए। तो यही मेरा आज, मैं इसी पे ही आप सबका धन्यवाद करूंगी कि आप सेशन को, मैंने बहुत एंजॉय किया, और पत्री सर, सब लोग टीम का, कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू व्यूअर्स। Thank you, Baba. Thank you, sir. Shubhangi. Thank you, sir. Thank you. It's Thank you. it's always a wonderful thing to hear you. Thank you, sir. Sir, same here. Every day we are listening you, and the concept that you are sharing is amazing, sir. Absolutely amazing. आपका वो हस्बैंड किधर है क्या उधर? हाँ जी सर, हितेश यही है सर। एक मिनट। हेलो सर, क्या हो रहा है बाबा? गुड सर,
बहुत अच्छा सर, सब कुछ। हाँ, सब बहुत बढ़िया सर। अरे वाह। पूरा लॉकडाउन में है? लॉकडाउन में है सर, एंजॉय हो रहा है लॉकडाउन में। लॉकडाउन ही नहीं लग रहा सर, लॉक को खोल रहे हैं हम। लॉकडाउन जो है अपने भीतर के लॉक को खोल रहे हैं, घेर रहे हैं। लॉक ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है, अनलॉकिंग हो रहा है। अनलॉकिंग हो रहा है। वेरी गुड। अब आपका बुक कैसा चल रहा है सुंदरम? बुक बहुत अच्छा चल रहा है सर। बुक का सुंदरम ने अभी मैसेजेस भी दिए हैं कोरोना वायरस पे, तो हमने वो मैसेजेस भी शेयर करे हैं। तो बुक भी बहुत अच्छी चली। कल हमारा स्वाध्याय क्या है मैसेज कोरोना के ऊपर? सर सुंदरम के 3 मैसेजेस हैं बेसिकली कोरोना वायरस पे। उन्होंने पहले ये चीज समझाई है कि अगर आप सी फॉर कोरोना देखते हैं तो सी फॉर कंपैशन है, सी फॉर को एग्जिस्टेंस है, सी फॉर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो आप इन 3 चीजों पे काम करेंगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली उस पे काम होता है। अच्छा। और दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि ये जो कलेक्टिव समय है हमारे लिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारी कॉन्शियसनेस को ठीक करने का समय है। कि आपको देखना है कि आप किन लोगों के साथ इस समय बंधित हैं, विद whom आर यू लॉकडाउन, और किस सिचुएशन में लॉकडाउन है, क्या काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको इस समय दे दिया गया है। तो इस चीज को हमें अपने लिए यूटिलाइज करना है, अपनी कामिक लर्निंग्स को जीने के लिए और उनसे सीखने के लिए, रादर देन कि हम फिर से ब्लेम और गिल्ट के जोन में जाएं। और तीसरा उनका कहना है कि दैट यस, दिस इज द टाइम व्हेन द डिवाइन फेमिनाइन इज राइजिंग, बिकॉज समवेयर वी मूव्ड अवे फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी हैव लॉस्ट आवर हार्ट। सो कोरोना वायरस से उनका कहना है कि हैव हार्ट फॉर दिस, बिकॉज एग्जिस्टेंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सुंदर नहीं है। सो इफ समथिंग एग्जिस्ट दैट इज ब्यूटीफुल फॉर श्योर। So you need to learn to see the meaning behind this corona, because this time in the centuries it would never come. So it is the most creative and the beneficial time for the whole entire planet. And so we are moving to a new earth with this, and the vibrations are quite visible. So यही उनका मैसेज है सर। Right हो बाबा, yes. And because of this corona, we are happily sitting at home, Baba. Yes, sir. Yes, sir. And talking to each other. Absolutely. Absolutely. From Hyderabad to Delhi. देखो, Yes, sir. जो पहले हम नहीं किए थे। जी जी True, sir. जी। अब सब लोग सड़क के ऊपर थे पहला, अब तो घरों में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। And you have got any other book in your offering? Sir, right now I'm working on these messages, but yes, there is one more book that I'm working on. So, so that is what I mean. अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर yes, I'm working on it. समय लगना चाहिए बाबा, नहीं तो ठीक प्रोडक्ट नहीं आएगी। जी जी सर, बिल्कुल। और शुभांगी जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। Thank you, sir. आप इतना समय निकाल कर दिए नहीं सभी लोगों के लिए। Privilege, sir. And divine feminine is the most important thing. We have entered the divine feminine age. Yes, sir. Absolutely. From the stupid masculine से निकल कर। All males are stupid, Shubhangi, excepting your husband. No. Every man who is meditator and who is following vegetarianism, they are the wiser men. Yes. And the ones who have embraced their own feminine self. Absolutely. अच्छा बाबा। जी सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Shubhangi, for this wonderful session. मैडम जी, आपके बारे में आप नहीं बोले, हम आपका सुनना चाहते हैं। आप कैसे आए ध्यान में? सर, हम एक तो इमोशनल रैक थे 2010-11 में, और उसी टाइम में मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे को लेके गई मदर इंडिया के घर पे। हमारा घर और मदर इंडिया का घर एकदम जुड़ के है। अच्छा। तो वहाँ मेरे को लेके गई कि बोली कि भाभी यू जॉइन, अब वहाँ जाओ, मेडिटेशन करो, पता नहीं आपको कुछ अच्छा लगेगा। तब तक सर
इतना बुरा हालत था मेरा कि मैं नशा करने लग गई थी. आई वॉज हैविंग टोबैको. मैं नींद का गोली खाती थी. मेरे बॉडी में इतने बीमारी थे और घर का माहौल एकदम भी अच्छा नहीं था. तो 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया सर, लेकिन कहीं पे भी मेरे को शांति नहीं मिला. तो जब से मैं मदर इंडिया के घर जाने लग गई, वहाँ पे हरीश भाई ने हम लोग को, मदर इंडिया ने हम लोग को मेडिटेशन करना सिखाया और तब से रेगुलरली मेडिटेशन कर रही हूँ. धीरे धीरे करके मेरे अंदर हिम्मत आई. मैंने अपने आप को संभाला. मैंने मतलब परिस्थिति का सामना किया. एंड सर, द टर्निंग पॉइंट वाज 5 years बैक, जब मेरा सारा एडिक्शन विद इन अ स्पैन ऑफ 15 days मैंने सब कुछ छोड़ दिया. मैं पान मसाला और जर्दा खाती थी सर, जो कि 22-23 बरस खाया मैंने. एक दिन में छोड़ दिया. नींद की गोली खाती थी सर. एक दिन यदि नींद की गोली नहीं खाती थी तो मेरे को नींद नहीं आता था. उसको छोड़ा. रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जिसके लिए मेरे को हर 21 days में इंजेक्शन लेना पड़ता था और बहुत पेनफुल था सर वो. एक दिन जस्ट मैंने डिसाइड किया और मैं ये पेन अब सहूंगी नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और मैंने उसको भी छोड़ दिया. एंड सर 5 साल हो गया है, मैंने आई हैव नॉट लुक बैक. मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा है. बहुत अंदर में गुस्सा था सर, वो भी बहुत काम डाउन हो गया. आई विल नॉट से कि 100% निकल गया है, लेकिन हाँ 90% तक अपने आप को कंट्रोल किया है मैंने. और जो प्रॉब्लम्स को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उन सबको मैंने एक्सेप्ट किया है. एंड नाउ लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल. आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ. एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिनसे मेरे को प्रॉब्लम था उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है और वो भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं मेरा मेडिटेशन में, मेरा जर्नी में. ही सपोर्ट्स मी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर. और आपसे मिलके तो इट इज जस्ट ब्लिस सर. अभी हम लोग का जो हुआ था प्रोग्राम शहीद भवन में, उस टाइम में मेरे को फर्स्ट टाइम मौका मिला था सर आपको एक अच्छा वाला हग देने का. एंड I really cherish those moments, sir. Thank you, sir, for being there in my life. That's great, Baba. तो सर बहुत 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 धन्यवाद, और भी सब मास्टर्स लोग का, जिन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया, मेरे को रास्ता दिखाया, इंफॉर्मेशन दिया सर. इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला, so I could choose the right path. Thank you so much, sir. Love you, sir. Righto, Baba. So now I call upon Sahil to take over. Sahil, please come. We'll take the question. Okay, we have one little question for Shubhangi before we close. So I would like to invite Shipra. Okay. Yes, we have one little question from Shipra Bhabi. So we'll invite Shipra Bhabi on the stage so that she can ask one question. And this is the only question we are taking before we close. So to Shubhangi on the Divine Feminine. So Shipra Bhabi, please. Is Shubhangi there online? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Are you here? I am audible? Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, Shipra. Yeah, your session was amazing, and I have learned so many things from your session. One thing I have कि आपने जो पोल्ट्री फार्म का स्टोरी बताया एंड हैन का जो पेन बता रहे थे, ऐसे ही हम लोग दिन रात कुछ ना कुछ देखते हैं, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो, चाहे हम लोग जब केज में देखते हैं कि वो एक बर्ड्स इतने सारे अंदर में है, एंड वी फील सो मच पेन फॉर देम बट वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग फॉर देम, एंड फिर हम लोग लेटर ऑन उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उस पेन को रख करके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे.
So how we can heal the pain of the animal or birds when we see them or when we feel their pain? How can we heal them? Right. जैसे मैंने बोला था शिप्रा कि एम्पैथी ये सिंपैथी है. अगर हम उस पेन में अगर खुद ही पेन के साथ जुड़ जाएंगे तो वो सिंपैथी हो जाएगी कि मैं अपने उस पेन में ही चली गई. बट हमें एम्पैथी दिखाना है. एम्पैथी क्या है? हमें उसकी प्यार में अपने पीस में उसको खींचना है. तो हम कैसे कर सकते हैं वो? एक तो हम सबसे बड़ा है कि ध्यान, कि हम ध्यान में वो ऊर्जा भेजें और कॉन्शियस रहें कि हम ना नॉनवेज खाएं. पहली बात वो है कि हम अपने से शुरू करें, कि हम साथ में अपने घर वालों को अगर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी ना खाएं, बट वो उनकी चॉइस है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं. बट हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शन को लेके और एम्पैथी रखें और प्रेयर कर सकते हैं हम उसके पेन को लेके, जो भी पेन है, और एजुकेट करें हम पीपल को. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेशन लीजिए कि क्यों नहीं खाना चाहिए हमें. सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एजुकेट कीजिए लोगों को कि ये देखिए कितने पेन से वो जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं. तो जो हम खाते हैं वही वैसा तन बन जाता है, मन बन जाता है. तो सोचिए कि वो कितने पेन में है वो जानवर, और उससे वो जो सामान हम खा रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं वही बन रहे हैं. तो सबसे बेस्ट पार्ट होगा आप एजुकेट करिए लोगों को इस बारे में, समझाइए इसके पीछे का रीजन. और दूसरा एम्पैथी रखिए, सिंपैथी नहीं. हमें पेन में नहीं जाना, हमें उसके प्यार में, उस पीस में उसको खींचना है, बाहर निकलना है. तो आप एजुकेट करेंगी तो वो बहुत बड़ी बात है. इसको स्प्रेड करिए वेजिटेरियनिज्म को. ओके, दैट वी आर डूइंग. यस, ग्रेट. तो और उसको ग्रो करिए और क्रिएटिव आइडिया लेकर आइए कि कैसे हम इसको और ग्रो कर सकते हैं. एक साइंटिफिक रीजन दिखाइए उनको, एक बायोलॉजिकल माइंड से समझाइए कि हमारे टीथ देखिए वैसे नहीं है. उनको एक रीजन बताइए कि क्यों नहीं हमें ये खाना हमारे लिए जरूरी है. तो जब हम ये रीजन उनके सामने लाएंगे, प्रैक्टिकल रीजन लाएंगे, लोग और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को. ओके, थैंक यू मैम. Thank you Shipra, thank you for asking me. क्या हो रहा है शिप्रा जी? नमस्ते सर. प्रणाम सर. क्या हो रहा है बाबा? सर आज तो पूरा दिन ध्यान में सुन रहे हैं. You are doing very well. सर आपको बहुत बहुत प्रणाम. Odisha people are doing very well बाबा. I'm very happy. सर आपका ब्लेसिंग्स है. स्वामी जी है क्या उधर? नहीं सर, अभी तो नहीं है. अभी नहीं है. अच्छा. एक्चुअली कटक में थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हो गया है तो वो बाहर गए हैं. अच्छा ठीक है. सर आप कैसे हैं? मैं बस ऐसा हूँ, बस आइसक्रीम खा रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, पका रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ. खंडाला नहीं जा रहा, बस उतना ही. बिना खंडाला ऐश हो रहा है. सर सबका ही ऐश हो रहा है. लॉकडाउन में हम लोग को खुद को ग्रो करने का मौका मिल रहा है, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं. थैंक यू बाबा. थैंक यू सर. स्वामी जी को प्रणाम बोलना. So thank you everybody. Thank you very much for such a beautiful session. And with this amazing session of the Divine Feminine, हमारी Divine Feminine आ गई time पे. So we are very grateful and thank you. Everybody who's and before we go, Patri, 1 minute. Before we go, I would like to call Neelam Bhabhi so that we call Patri ji in and we share. Hello, namaste sir. Thank you, Baba. Namaste sir. Thank you. Thank you sir for giving Team Odisha such an opportunity to do Dhyaan Yagna 3 sir. And sir, I am really thankful to all the masters for their blissful wisdom sir. And
I'm also thankful to the technical team, sir, who are working backstage and handling the most important thing, sir. Now, sir, your wisdom, sir. म्यूजिक कम करो, बस सब कुछ हो गया ना, और क्या। कैसे बदलेगी हमसे हमसे ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे। बाय 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 सर। पत्नी आपको कैसा लगा सर? क्या योर We want to hear from you, sir. Your experience, how did you feel? And आपको कैसा लगा सर? Please, your last statement से हम लोग close करेंगे सर. आपका last statement. सुबह से मैं बैठा हूँ, शायद 1 घंटे के लिए बाहर गया हूँ, नहीं तो बैठा हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी with all the masters. See, everybody has to listen to everybody else. That is the yoga by itself. Everything can be turned into yoga. Listening is a great yoga. When you listen, your mind is silent. When you're talking, your mind is active. What to talk? But when you are listening, you are not there. You don't know what to listen, but you are listening. There is no expectation. So you live in a lot of non-expectation when you are listening. The more you listen, the more enlightened you automatically become. Even if you listen very carefully to a stupid fellow, you will become more enlightened. And over and above that, if you are listening to a great master, और क्या चाहिए? Pyramid spiritual social movement, listening is very important. I have been listening to all the masters for the past 40 years. And I want to hear every master's experience for the next 70 years. I got a big plan of listening and listening and listening and listening and listening. That's the best way to train one's own soul. Listening, you are the divine feminine. If you want only to talk, that is the stupid masculine. When you want to listen, it's the divine feminine. Thank you, Baba. Sahil Saab, you have done a great work. Thank you so much. Sir. Message, sir. Thank you. We were glad that we got this. Thank you, everybody. And it was great to have all of you. Everybody was important. All the masters, Dhyaan Odisha team, Huge team, PMC team, Sensei team, all of you were significant. So thank you so much. Patriji, thank you so much. And you were there throughout the session for us. It was I want to know her opinion. Give her. Shweta's opinion. Yes. कैसा हुआ? वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा इवेंट था. हम कंप्लीट पूरा नहीं देखा, बट देन जितना भी देखा वो बहुत ही अच्छा लगा. आपका संदेशा दीजिए ना. संदेशा देने के लिए थोड़ा टाइम है सर. Whatever you feel you want to share about meditation. You have meditated. How did you feel meditating? Meditation was new for you. How was your meditation experience? New in your life. How was it? Like I'm growing through it. I'm learning कि हाँ बहुत कुछ अपने में जो problem था, I'm trying to rectify it and bringing that change in me. Very good. अरे you are with Sahil, और क्या चाहिए आपको? You are a very lucky person. और वो आदमी जेकोस्लोवाकिया तो कौन था वो? कौन स्वामी जी? वो जेकोस्लोवाकिया. Czechoslovakia. Oh, Peter from Czech Republic. Yeah. Yes, so he's that person whom we met in Zermatt on the mountains together, and the meditation of the activation of mountains happened. वही बंदा है सर. वही बंदा है. अच्छा. हाँ सर, वही बंदा है. वही हम लोग साथ में ध्यान में बैठे थे, and that's when everything happened, and it was all random. So now he's part of our community. He comes to share. He's participating. अब जुड़ गया सर. हो गया सर. Very good. It was all nice, Baba. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much, everybody. And thank you, Patriji. So let us celebrate. Let us have some music. Neelam Bhabhi, you want to share something?
Thank you, sir. Thank you for this beautiful thing which you've given us, sir. And sir, I just want to convey you one thing. Yeah, I have written half of the book which you have given me. Which book? Sir, the Tales of Seven Golden Pyramids, sir. कैसा है वो book? Sir, it is a lovely book, sir. I am writing notes because you told me to write notes on that book. So, sir, I am writing. You have to conduct workshops on that, Baba. It's a very great sir, book. I am talking to this author also, sir, through mail. Okay. And whatever doubts I have, I am talking to her, Neha Swami Saraswati, sir. And sir, amazed ki she is not knowing about the powers of pyramids, and she's writing each and every page. She's writing pyramids. Yeah. So when I told her ki I am a member of PSSM and I have got a pyramid in my house, then she told ki pyramid energy is going to come after 3,000 years. So, sir, it is really amazing, sir. I'm talking to her through mail, sir. Very good, Baba. Very good, excellent. It's a very great book on chakras. Yeah, sir. I'm just writing, sir. You get a clear knowledge about chakras, sir. I have 1, 2, 3 questions about it. I will talk to you later about that question, sir. I want that clarity also, because if I have to conduct workshop, I should be clear first myself, sir. Yes. Okay, Baba, take rest now. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Let's celebrate. Let us have the music. So have some nice music, and with that we close DDY 3 from Odisha. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, sir. सांस को अपना